know I said just. You know I said just. Just
You know I said just. Just. Oh man, you need some headphones, bro. You know I said just. Hello. You know I said just. You know I said just. Oh man, you need some headphones, bro. You know I said just. You know I said just. करूँ स्टार्ट? करूँ? बता तो दो. हेलो. हेलो. मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है. मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है. आगे. डेफेस्ट की टिकट मिले ना मिले, डेफेस्ट की टिकट मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन आप अटेंड करने ना आए ये तो गलत बात है. गुड मॉर्निंग. But wait, we are not just from Indore. We have people from all over India. So let's have it. Good morning.
After 3 years of pandemic, this is the first in-person event that we are holding over here. We are so excited. It's the technology that has kept us connected so far. And we have seen an overwhelming response from the audience. This was the first time in Indore that the tickets got sold out in just 40 seconds. And a great round of applause for that. Can you guys imagine 40 seconds? And even we were surprised a lot. So let's make Indore the new tech city of India along with the cleanest city of India. Woo! Okay, so let's have some audience poll type of things. So how many folks are from Indore? Okay, good number. Now, how many are not from Indore? How come we are having so many people not from Indore? There are some Where's folks who the are audience raising... coming from? Yeah. I can see some are raising in both sides. Okay, so from where you are actually? Are you confused? Let's clear it. Acha, audience may over there, where are you from? I saw you raising your hand that you are not from Indore. Anybody? Just stand up and answer. They are from India. Okay, anyone from Bhopal? Oh, lot of Bhopal. Okay, Here we is a have got Bhopal many group. people. Okay. Anyone from Nagpur and all? Okay, we have. Okay, anyone from Delhi? Devesh sir. Okay, we have that too. Great. Okay, so we have our speaker also from Delhi. So just wait for his turn and yeah. So the wait is finally over. Get ready for the post-pandemic biggest tech event of the year. Over the years, DevFest now feels like a festival to me. A fest that gathers up all the developers, professionals and potential techies from all over India. So finally, we are here. Okay, so now some of you must be thinking that what is GDG, okay, and from where it got initiated and what is the purpose of GDG. Okay, so I'll just brief, okay, in short that GDG is an initiative by Google and also it is powered by Google. It is a community of Google who empower us, who empower folks to learn, connect and grow and to meet like-minded people, okay, and to grow, evolve and uplift themselves. But Anurag, why are we actually here for? So how many of you know what DevFest is? Anybody would like to answer? Who is attending it for the first time? Who all are attending? Oh, we have a lot many new audience. Okay. So who would like to answer what DevFest is? See, this is the chance for you to win the goodies. So keep answering and make it an interactive event. So who would like to answer what is DevFest? Anyone? You are sitting in DevFest, you should know the answer. Yeah. Yes, volunteer, please give a mic over there. Okay, so tell me one thing. How many of you have gone through the website of DevFest? How many of you know the agenda? सबके हाथ नीचे. Who was answering what is DevFest? It's not working? Take this one. Take it. Audible? Ma'am? हाँ वही तो मैं सोचा अरे वो इसीलिए डिस्टर्ब हो गया. Hello. So DevFest is basically a kind of technical event that is initiated by GDG. What we are going to do is, there is a bunch of curated events and technologies. So it's not only limited to web development, full stack, ML, AI or something like that. It's a kind of mixture actually. जिसमें हम काफी सारे tech events हैं, answering things, resume guides है, career guides है, and that's a kind of two-way interaction event. इसमें
it's not all like कि मैं सिर्फ सीख रहा हूँ. Like we have speakers, we have like the cabin crew, was not cabin crew actually, technical crew, and like It's this okay. audience. Yeah. Thank you so much. What is your name? What? Chance to meet our speakers, meet them and so we are your hosts for today. My name is Shachita Jain. I am currently working as a senior software developer at Everts Microsystems. I am Indore's Women Tech Makers Ambassador and GDG Cloud Organizer of Indore. And in case you want to join the community, you want to be a part of any event and you are not getting the tickets, you can reach out to me. I cannot commit anything, but we can always try. So yeah, this is all about me. Yeah, and I'm Anurag Mishra, and I'll just brief myself related to the things which I'm involved with Google. So I was a GDSC lead, former GDSC lead of last tenure, and also I am GDG Indore co-member. So that's it about me. So today we are telling you that I can assure you today it's going to rain intellects and smiles. So let's not wait anymore and begin with the season of DevFest. Yeah, so what is this? Any guesses? What Yeti, you is can this? guess. I'm not able to understand what it is. Can anyone explain what it is going on? Just see the image and whatever comes, the first thought that is coming into your mind, just tell me. Volunteer, we need a mic over there. Volunteers, Please a mic mic. at the last. At the last. Let's see who can guess this. At the last. Achha. Hello. So the person is shouting just because his finger stuck between the door. Okay. I guess so. Anybody else? Any better explanation? Actually, he's not shouting, he's screaming. Yeah. He's close. His answer is close. Can anybody of you answer? We want a proper answer. There's someone over there, volunteer over there, in the first row. So first and all, hello everyone. Hello. So it's a shout out about DevFest. It's a big shout out for DevFest. I wish it was that, but it is not. Sorry. It can be that. But it's good idea, you Yeah. know? I would prefer to go with that answer. Yeah. It's a good answer. I think it's logical. Yeah, very logical. Okay. It- Give it. Not me.
Okay, तो first thing जो होती है जब हमारा हाथ आता है बहुत सा reflex. We do it like that, right? Yeah, we scream and we do like that. Okay, so oh, nice, nice. Nice, nice. Okay, so now what you all need to do is you need to jerk it off like this. बदला नहीं लेना है पुरानी दुश्मनी का अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ और उसको ऐसे ऐसे करते पीट नहीं देना है, ठीक है? सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. Okay, 1, 2, 3, start. Start. Up that. Once more, मजा नहीं Okay, आया. once more, once more. Once more, once more. 1, 2, 3, Three, go. start. Nice, nice. This was Now I think everybody is energized. Now you can have a seat. one more thing, Sachita, Yeah. that I was thinking that audience is more active when they are standing. So why Right. don't keep the session while standing? I think we can do that if they are comfortable. Are you with it. agree? Was expecting Now, the same. now they have the energy. Yeah, yeah. Now Yeah. they can at least protest. Okay, good. Okay, so I know many of you, I've seen many of you clicking pictures. There's a photo booth out there. So I request all of you to keep posting as many pictures as you can. You can use this hashtags, hashtag GDG Indore, hashtag DevFest, hashtag DevFest Indore 2022, hashtag DevFest 2K22 Indore, hashtag GDG Cloud Indore, and hashtag WTM Indore. You can tag us. Our social media handles are @GDG Cloud Indore, @GDG Indore, and @WTM Indore. And as you all know, at the end, we have prizes for the ones who get the maximum retweets, likes, and subscribers if you are posting a video on YouTube. Yeah. So get this opportunity and just be active. Okay. Just show the power of social media and be the good use. Okay. Do the good use of it. Okay. We have an amazing lineup of speakers waiting just for all of you. We have Bhavik Makwana, Pavan Kumar, Sayak Paul. First speaker. Okay. So tell me one thing. That how many of you are student? Don't we have professionals? Okay. How many are professionals? Okay. We have professionals. Nice, nice. But we have some less ratio, not an issue. Okay. So we have our next speaker, Dhananjay Kumar. He's a teacher, creator of NG India. Dhananjay Kumar is the founder of Geek 97 and creator of India's largest Angular conference, NG India. He's a published author, 12 times winner of Microsoft Most Valuable Professional and Google Developer Expert in Angular. So give a huge round of applause for Mr. Dhananjay Kumar. He is very much connected with Indore and he'll tell you how it is. Yeah, actually he's also very much connected with DevFest. Okay, so over to you, sir. Thank you. Once again, give a huge round of applause for Dhananjay, sir. Woo! Hello, am I audible? Thank you.
तो आया तो था. Check system preferences again. Samira. इसमें चलता गया था. हाँ. मैं अपना पीपीटी फटाफट भेज देता हूँ. ये वाला माइक ऑन कर दो. माइक ऑन कर दो. ये ऑफ है. हाँ ठीक है. Okay, so you can expect the label of the session. Setup होने में टाइम लग रहा है. Okay, so don't worry. It'll have live coding, तो Yeah. थोड़ा वेट करना पड़ेगा. Yeah, you'll just get demo of that. So for that reason. Till then, let's do something. Anyone of you want to share something or regarding DevFest? Okay, so you can come here and it is a good opportunity for you. Okay. Anyone want to share your experience? Any of our previous attendees who would like to tell us anything regarding DevFest, how it would have helped you, how GDG might have helped you? Anybody of you interested? Come on, man. Anyone? Also women. Anyone raise hand? Okay, please come. Yeah, give a huge round of applause for him. At least he take an initiative. Good. Yeah. Your good name? Hi everyone, my name is Saqib Qureshi. I am currently working as a software engineer in the company called Protons Hub. This is my actually first DevFest. I was from Acropolis 2020 batch, but in my entire college life I never went to DevFest. But yesterday was my first day. The entire experience was crazy. The amount of knowledge I got on the various subjects which comes under the umbrella of Google, including Flutter, Firebase, it was insane. As the event is powered by Google, so what we get is the local connect developers who are there from the city or from central India. We get to meet developers, we get to meet students as I am among you. I'm not that old, just 24 years old guy. So it feels great to see you. Like during my college days, I was not that aware of technology and what the changes the technology can do. But it feels great and I'm hoping to learn new things today. Thank you so much. Thank you, Saqib. We are happy to help you. Okay, anyone got motivated from him and want to do the next? Anyone? It was quite motivational. कोई Yeah. भी motivate नहीं हुआ है. Okay, please Okay, come. we have our speaker who wants to say something. Okay, we have one attendee also. Okay. Please come. Yeah, you. Tech groups, how they affected me is basically, currently I'm working as a research analyst at Sci-Pharma Private Limited. Previously I was working for Government of India. Hopefully you guys know about CID department. So I was working for that.
But right now I switched to corporate. I was working as a research analyst, and how GDG or DSC kind of communities affected me. So when I started my college from BC Cybersecurity, Jaipur, Rajasthan, I was a part of GDG, DSC, and Facebook developer groups, Jaipur. But after that, I eventually grew into cybersecurity. My main domain is into security, investigations, and intelligence. But right now, I was working in attack surface monitoring and these kind of things. But abhi ke liye, how they helped me is, when I started in 2017 or 2018, there are two parts actually. So at that time, I was as a attendee or as a wahan baitha hua tha. That was the time. But right now or till now, I have delivered more than 46 plus talks nationally and internationally representing cybersecurity in government based conferences, corporate conferences, and not only limited to India or something like that. We are working from a normal cyber cell to Prime Minister office. So that was the level, and yes, that was. So that's how they helped me. Thank you. Great. You shout out for him. Okay, so we are done with setup and we are good to go. So once again, give a huge round of applause for Dhananjay sir. Thank you. Woo! Hi, good morning everyone. How many of you are Web3 influencer? I'll start my talk. My name is Dhananjay Kumar. I'll start my talk with Mexican clap. If you don't know what is Mexican clap, it is a kind of clap where we start from this side. So this person will clap, next person, you keep clapping. Who has started, okay? So start from this side, please. Clap. Thank you. And this clap was for the amazing organizing team. You have no idea how much work go behind that. It's not like one day Sachita and Mr. Mishra is standing here and kind of cracking joke to you. It's a lot of effort, a lot of work, a lot of emotion. They don't get paid for that. And they make sure that amazing speakers, Google Developer experts come here and teach you. No one can teach you in 30 minutes. People can only inspire you in 30 minutes. You agree with that? And so this round of applause was for them. Now let's start with JavaScript. Why you should learn JavaScript? Anyone? Why you should learn JavaScript? Yes, sir. Yeah, next is the person in the back. Yeah, two boys and girls. We are coming to you. Be prepared. Yes. Hello, sir. Yeah. JavaScript has lots of libraries and frameworks. And wrong answer. Multi-paradigm. Next question. Next in the last. Give them who are just talking there. Yes. Why we should learn JavaScript? Yeah, give to any random person. Yes, give to any random person. Why we should learn JavaScript? Come on, girls, speak up. यार इतना टाइम लोगी तो बारात लौट जाएगा. बोलो जल्दी बोलो. Actually, I don't have a valid answer right now. You don't have any valid answer? Yeah. Good, you should be politician. Alright, because itna time lene ke baad, I don't have a valid answer. Okay, I'll give you answer of that. Why we should learn JavaScript, and the reason behind that is because it is the most popular programming language. Does not matter what your teacher tells you, doesn't matter what your senior tells you, doesn't matter what you read in a blog written by someone who have never done coding in their life.
that which language you should learn. It's as simple as that. Why you should learn JavaScript? Because JavaScript is most popular language. And why it is most popular language is very important. Now things are getting serious in the back. JavaScript is most popular language because JavaScript is only language which can run everywhere. JavaScript can run on a data server, on a data center, it can run on a data server, it can run in your browsers, it can run on your phone, it can run on your devices. Washing machine, fridge, and those are smart devices. And it doesn't stop here. It runs on your mind too. And this is not a joke. So the Elon Musk who is coming up with some chip which he can inject in your mind, the language they are using for that is JavaScript. So that was a serious answer. And non-serious answer is that it is so complex that once you start learning it, it will always be on your mind. So that's what JavaScript is. Now someone here, your answer was partially correct, that JavaScript we should learn because it has a lot of libraries, like React. It has many libraries like React and one framework called Angular. Okay, I understand you don't get the joke. You pay price of being super intelligent. All right, no problem. Now I ask you one question. You are from Indore. Rahat Indori is one of the popular poets from your town. Give a round of applause for Rahat Indori, please. Now, if you want to be a poet, and this question is very serious, if you want to be a poet, like Hindi poet, can you become Hindi poet if you do not know Hindi grammar? No. If you want to be an author in English, can you become an author in English if you do not know English grammar? You cannot. In the same way, ask yourself this question, that can you become expert of Angular, React, Vue, whatever, without having a basic decent understanding of JavaScript? Because all they are made in JavaScript. Understand this, your browser does not care about Angular, React, Vue. Because your browser does not understand what is Angular, React, Vue. Your browser only understands JavaScript, CSS, and HTML. It's as simple as that. Gita ka saar gyan yahi hai. Does not matter how much two-way data binding and reactive forms and virtual DOM, shadow DOM, whatever you do, that has to be converted to something JavaScript or HTML or CSS. Because your browser only understands that. So if you really want to be a good framework developer, doesn't matter which framework you choose, React, Angular, you got to know JavaScript. And today, in next 30 minutes, I try my level best to make you understand JavaScript. All right, so my name is Dhananjay Kumar, and my slide is not there. Yeah. So JavaScript for everyone. Okay, whoever answered this question, you see those console.log? I'll give you a free ticket of NG India. 5,000 rupees ticket. Try that. मेरे को नहीं देखना है, स्क्रीन को देखना है. Ask yourself, do you know answer of that question? Yes. इसमें कंसोल पे आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज होता है ये? नहीं, वो तो होता ही है. दिस आउटपुट क्या होगा वो क्वेश्चन है. इसका आउटपुट क्या होगा? हाँ. जस्ट गिव मी 5 minutes. Okay. All right. चलो ये थोड़ा टफ था. On the purpose I put it. इसका तो बता दो. रामधारी सिंह दिनकर का एक लाइन है, जब तक सस्ते कीमत पर बिकती रही कुर्बानी, तब तक हमको घर घर मिलते रहे बलिदान. Until popularity is cheap, everyone is popular. You should give a round of applause for that. Until success is cheap, everyone is success. And we live in a world where no one wants to be successful, everyone wants to be popular. And that's why you spend a lot of time on social media. If social media was a parameter of success, no social media influencer would have committed suicide for lack of money. It's as simple as that.
The society we belong to, money is one parameter of success. Unless and until you are not Mahatma Buddha or Mahavir Jain. Right? So anyone knows output of this? Ask yourself, you don't have to answer me. In the back. दिखाई दे रहा है? Okay. अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने उसका आंसर नहीं बताया, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू माई टॉक. दैट मीन्स दिस क्राउड इज टू बेसिक. And that's then waste of my time. All right? So please push your level hard to tell me answer of next slide. And everyone has to shout the answer. You don't have to raise if you know the answer. You know this answer? You know this answer? Anyone who doesn't know? Anyone who doesn't know? तुम्हारी जिंदगी बेकार है भाई. क्योंकि तुमको पिछले बारे भी स्लाइड का आंसर नहीं पता था, इसका भी नहीं पता. कर क्या रहे हो जिंदगी में? दोनों में से. Now this song is very popular song. All of us right now currently this is थोड़ा तेरी आंखों पे मर गया, बातों पे मर गया and all that. So what I did, I tried to bring the whole JavaScript in this song, and I hope I am able to convey that message to you. So replace that. So we have that song here. Replace that with JavaScript, and just जो भी आपके स्क्रीन पे आएगा. Can you do that for me? The whole JavaScript almost lies in these four concepts. Hoisting, closures, promises, because in React and everywhere you have to do asynchronous call, and prototypes. If you understand these four concepts, JavaScript is very, very easy for you. Now I see there are many young students here, so I'm going to give you a path that how you should start learning JavaScript. You can start learning JavaScript like this. So these are the concepts which you need to learn in JavaScript: hoisting, functions, objects, promises, array methods, and DOM manipulation. So you can divide whole JavaScript into these 6 categories: functions, objects, hoisting, promises, array methods, and DOM manipulation. Now when you go inside function, every programming language has function, right? So when you go inside JavaScript function, these are the subtopics you have to learn. You need to learn the types of functions. You have to learn what is this inside a function, closures, higher order functions, arrow functions, and REST arguments and default parameters inside that function. And trust me, even if you give like 4 hours to these six box, 24 hours and your function you are ready with the function. Okay? Same goes with objects. I'll just go it fast. Same goes with async promises, iterator, generator, async await. Same goes with array methods. Then something with an object, something with a function. And now here it is getting boring, right? You might be thinking that, hey, आके बड़ी बड़ी बातें तो कर गया, गाने पे हमें हंसवा भी दिया, ताली भी बजवा लिया. But in reality, my friend, talking is cheap, show me the code. So what I'm going to do, I have around 20 minutes here. I'm going to take some of the topics of JavaScript. I'll take some of the topics of JavaScript and try to explain that to you. Few things which you need to keep in mind, that I'm not going to pick any easy topic. The topic which I'm going to teach you,
doesn't matter whether they have 10 years of experience or 15 years of experience, they are still confused with that topic. So I'm going to pick that, and my job here is to make sure that you understand it, and you understand it very well. Okay? So here what I'm going to do, I have written here. So this is my JavaScript running on server, which is Node.js. And just to, और मैं आप लोगों में से किसी को भी randomly पूछ सकता हूं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं. So you got to raise your hand and ask me. I am not a speaker, I am a teacher. So you have to be very attentive. I want you to go and buy your own t-shirt of Diesel and Tommy. You should not be here for a t-shirt. जिसमें गूगल की ब्रांडिंग करते घूम रहे हो. सॉरी, रिकॉर्ड मत करना. Okay? So please be attentive. As I told you, I'm not going to teach you anything basic thinking that you are a student. I'm going to teach you things which I teach to professionals, not here only in India, everywhere. And my job is that it is a testing for you too, कि आपका mind उसको react कर रहा है या नहीं. ठीक है? तो अपने आप को push करो. अपने बगल में जो आपके बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बैठे हैं, उनसे तुम 2 घंटे बाद भी बात कर सकते हो. है ना? एक मेरे को गुस्से पे देख रहा है. Sorry. We are on the same boat, bro. Don't worry. Okay? So here, आप लोगों में से कितने लोगों ने C++ किया है? एक बार हाथ उठाइएगा. Almost आप लोग सबने किया है C++. C++ में एक वर्ड होता है THIS, this object. और C++ में this object किसको बोलते हैं? Current object को बोलते हैं. So if you go for interview of C++, they ask you what is this object. Your answer is that this represents the current object, right? Everyone agree with that? JavaScript में this object कैसे काम करता है, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं in next 10 minutes. Everyone be attentive. So JavaScript does not have class, and that is something that should be a news to you. Now we have a class starting year 6, but for this discussion, let us keep that JavaScript does not have a class. अब आपके पास, I can speak little bit of Hindi, right? क्योंकि मैं उतना इंग्लिश बोलता हूं जितना से मुझे पैसे मिले, उससे ज्यादा नहीं बोलता मैं. वो मेरा पूरा फेस ना दुख जाता है बोलते बोलते. हिंदी में is okay. So Hindi is fine, everyone, right? Okay. So you learned in C++, in engineering, in MCA that this represents current object. And to create an object, you need a class. And I am telling you that JavaScript does not have class. Then how this works in JavaScript? Very important. If you are able to learn it, you would able to pass many interviews of JavaScript. They are going to ask you. So here, learning number 1, in JavaScript, every function has this object. Class does not have, object doesn't have this. Every function has a this object. So let's say here I created a function called product. And this function takes title and price. And I said this dot title equal to title. And this dot price equal to price. JavaScript में function इस तरह से बनता है. 2 parameters मैंने किए हैं. And let's say that if I'm taking your interview, I'm saying that, hey, console.log this. This is an interview of very popular company. Very popular. I would not like to take their name because I take interview for them. Now this code which is in front of you, if I give you this code and ask you कि भैया उसका आउटपुट क्या होगा लाइन नंबर 8 का, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लाइन नंबर 8 का आउटपुट क्या होगा, जैसे ही आपने उसका आंसर करना मुझे स्टार्ट कर दिया, कुछ भी आंसर, you are out. Because in this world, no one can say what would be the output of line number 8, because if you want, note it down. Because in JavaScript, value of this inside a function does not depend on how that function is created. It depends on how you are calling that function.
I repeat, in JavaScript, value of this does not depend on how that function is created. It depends on how you are calling that function. And right now on screen, in the back focus, like right now on the screen, you can see, I have not shown you code to call that function. I have not shown you code, sir, thoda sir. I have not shown you the code to call that function. Making sense? Okay. अभी दूसरा आप लिख लो कि जावास्क्रिप्ट में हम एक फंक्शन को 4 तरीके से कॉल कर सकते हैं. एक फंक्शन को हम 4 तरीके से कॉल कर सकते हैं. मैं लिंक्डइन पे जब पोस्ट देखता हूं कि जावास्क्रिप्ट इज कूल, अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन 4 ways. You choose in which way you want to call a function. अब मैं जब उस तरह के पोस्ट देखता हूं तो मुझे दुख नहीं होता. मुझे तब दुख होता है जब उस पोस्ट के 1000 लाइक्स होते हैं. It is the way, like, धीरे धीरे कैसे रिलीजन को एकदम नैरो कर दिया गया. Now people have a very wrong notion of religion in their mind. In the same way, those people are making this my JavaScript, your JavaScript wrong. It's not the 4 way of calling a function your choice. All 4 ways of calling a function has a purpose. आपके चॉइस पे नहीं है, आपके पापा ने नहीं बनाया उसको. डगलस क्रॉफर्ड ने बनाया है. आप जब 4 तरीके से एक तरीका चूज करोगे फंक्शन को कॉल करने का, उस पे दिस की वैल्यू डिपेंड करेगी. Am I making sense here? So it's not your choice. It's you have to find out कि this की वैल्यू, you have to find out कि this की वैल्यू आपको क्या चाहिए. तो अभी आप देखना, मैं फंक्शन को लिया हूं और मैं यहां फंक्शन को कॉल करता हूं. लेट्स से var a equal to product, and note it down, okay, if you are really serious. Pain in 20. So अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास और अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. मैंने क्या बोला कि प्रोडक्ट क्या है, एक फंक्शन है. अभी मैं नेक्स्ट लाइन आपको बोलूंगा कि मैं लाइन नंबर 11 में एक फंक्शन को एज ए फंक्शन कॉल कर रहा हूं. तो आप बोलेंगे भैया प्रोडक्ट फंक्शन है तो उसको एज ए फंक्शन ही कॉल करोगे ना, उसको किसी अलग तरीके से कैसे कॉल करोगे. But this is where beauty of JavaScript lies. So when I call a function as a function, can you see? I'm calling that product function as a function. That is called function invocation pattern, FIP. When I'm calling a function as a function, that is called function invocation pattern, FIP. And in that, value of this is global object. देखो उसने प्राइस और उसकी वैल्यू किस में ऐड कर दी है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट में. सो इन FIP वैल्यू ऑफ दिस इज global object. Now what is global object? Right now I am running in Node.js. Then global object is the global object of Node.js. If I take this to browser, और अगर मैं ब्राउजर में इसको रन करके आपको दिखाऊं, then you see that global object is window. Yeah, that global object is window. So in browser, that global object is window. In Node.js, that global object is the global object of Node.js. So whenever you call a function as a function, that is called function invocation pattern, and value of this is global object. That is rule number 1. Rule number 2 is I can take this, let me comment, and then I can call this using new. Now you may have a question that in C++ and other programming languages we call that class with new to create an object. But if you go a step back, there also you recall that actually even if you do var p equal to new class name, actually the constructor of that class is getting executed, which constructs object for you. If you don't have a constructor, then every class has a default constructor. Otherwise, if you have put a constructor, then that constructor you have to pass. So here when you call a function using new, you are actually calling that function as a constructor. And that is called constructor invocation pattern. So when you call a function using new, JavaScript creates an object for you, and that newly created object is value of this. So here,
If I run that again, you see? So second way of calling a function, when you apply new to that, that is called constructor invocation pattern. And in constructor invocation pattern, value of this is always newly created object. Clear? अभी अगर आप C++ बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपने इस तरह का कोड देखा होगा. Let us say I have this var foo, and inside that I have one name. Let's say name is foo, and then it has a function called display. And in this function, I'm saying console.log this. So in C++ also, the function which is part of a class, you call that method. You call that method. So here I have created a function display which is part of an object. Since we don't have class here, so we'll call this display as a method. We'll call this display as a method. And now if I need to call that, if I need to call that display, what I'll do, I'll say var a equal to foo.display. So when I say foo.display, you see it is showing me that foo object. So when you call a function like this, which is part of an object, that function becomes method, and this is called MIP, method invocation pattern. And always value of this is the object before dot. So what is the object before dot? Foo. So that foo becomes value of this. Function invocation pattern, global object. Constructor invocation pattern, newly created object. Method invocation pattern, the object which is before dot. Pretty simple. ये बहुत ही बड़े बड़े वर्ड हैं. FIP, CIP, MIP. इंडस्ट्री घूम रही है इस पे. Alright? Now, अगर आप एक step back जाओगे, समझोगे, and I give benefit of doubt to each one of you that you are smart people and you are understanding everything. कि FIP, MIP और CIP में एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यह है कि मैं एज अ डेवलपर दिस की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं. जावास्क्रिप्ट मुझे दिस की वैल्यू दे रहा है. अगर मैं FIP कर रहा हूं तो बोल रहा है ग्लोबल ऑब्जेक्ट. अगर मैं CIP कर रहा हूं तो बोल रहा है न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट. और अगर मैं MIP कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट बिफोर डॉट. Because let's say that if I have a dog, I have one object here called var dog, and this object has name dog and age 10. Now let's say that I want to pass this dog object as the value of this in display. So if I do this dog.display, of course JavaScript complains about that. It tells me that, hey, it doesn't know, like dog doesn't have display method. Making sense? So here, let's say that we have a requirement. Requirement is that in this product function, we want to pass this dog object as value of this manually. So what we'll do, we'll say var a equal to product dot. You have three options, A, B, C. Which you pass becomes value of this inside that function. So here I can say here dog. So what I'm doing, I'm just calling this product using call. And here you see that dog has become a value of, dog has become the value of this inside that. And if I pass extra parameters, which are title and price, so I can say, let's say title is Dhananjay and price is 200. So you see that this is to the dog object. You can use apply as well. In that case, you have to pass the extra parameter in an array. Everything would be same, that extra parameter should be in array. So A for apply, A for array, C for call, C for comma. So when you call a function like this is called IIP, indirect invocation pattern. And in indirect invocation pattern, you are allowed to pass value of this manually. Okay? So, let me do one thing. I guess my internet is, if I connect to my internet and show you something. And be with me. So here,
So I'm connected to internet. Here I'm saying you do not know JavaScript. I hope my internet works. Images. And if in this image I can show you, if you see this image, and if you can read that, can you see यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, this and object prototypes? THIS, can you see that here? This and object prototypes? Now why I am showing you that photo? What I taught you in next 15 minutes, in last 15 minutes, there is a book on that. और उस book का नाम है You Do Not Know JavaScript. And that is the most popular JavaScript book in the world for serious JavaScript people, not the one who goes and learn on YouTube. Sometimes what happens that and can I do a little bit of my self-praise? With your permission, sir and ma'am? Okay. Sometimes your teacher is so good that he or she explains your complex topic in such a way that you feel कि अरे यार ये तो बड़ा आसान था. Agree? तभी हम अपने कॉलेज में ही बोलते हैं कि ये टीचर अच्छा है, ये टीचर अच्छा नहीं है. Because a teacher makes a subject complex or not complex. Now, what I taught you in last few minutes, this is one of the most popular topic of JavaScript. Ask any senior, like any of your friend, brother, sister who are working on JavaScript world, they would be confused to give you value of this. Now, you only need to remember 4 things. Let me go to my slide again. And ये slide साथ में करेंगे, ठीक है? So here, यहाँ से start करते हैं फिर से. यार, मेरे client का नाम तुम लोगों ने पढ़ा तो नहीं ना? Okay? So in JavaScript, every function has its own this object. Agree? अच्छा, अभी मैं क्या करने वाला हूँ? I'll not speak anything. I'll just move through slide. If you have question, you'll ask me. अगर हमने वो डेमो सही से किया होगा, आपके पास क्वेश्चन नहीं होना चाहिए स्लाइड के ऊपर. And once slide is ready, I'll ask you question. In JavaScript, the value of this is determined by how the function is called, not the how the function is created. Agree? And ये बड़ी fancy slide है, क्योंकि जब आप बहुत हाई-फाई जगह जाओगे, they'll tell you, hey, yeah, can you tell me what are the invocation patterns in JavaScript? Can you tell me what are the invocation patterns in JavaScript? मेरे जैसा बिहारी आदमी वही फेल हो जाता है. Actually, that person is asking you that what are the ways to call a function in JavaScript? And what are the invocation patterns? Function invocation pattern, constructor invocation pattern, method invocation pattern, and indirect invocation pattern. So here, these are the 4 invocation patterns. There are 4 invocation patterns. There are 4 ways a function can be called. There are 4 ways a function can be called, and there are 4 ways. The 4 ways value of this can be calculated inside a function. All of you agree with that? You just learned that? Okay. So in function invocation pattern, function is called as a function and value of this is global object. Agree? I'll go fast क्योंकि मुझे दूसरा टॉपिक भी करना है. Agree? Sorry, constructor invocation pattern using new, so you know all this. So एक बार मैं क्या करने जा रहा हूं कि ये आप लोगों को इस स्लाइड में दे दूंगा. Can we together speak out such that it's always in our memory? मैं जो बोलूंगा आपको पीछे से वो बोलना है. ठीक है? Function invocation pattern equal to global object. Constructor invocation pattern equal to newly created object. Method invocation pattern equal to object before dot. And last should be louder.
Indirect invocation pattern equal to manually passing the object. Great. But there's a catch. Drishyam 2. मैं नहीं चाहता हूं कि कल आप किसी इंटरव्यू में जाएं और आप बोले, और मैं यहां से चला जाऊं और आप बोले यार वो टकला है, क्या क्या गलत पढ़ा के चला गया यार, स्टेज पे हीरो तो बहुत बन रहा था, मैंने तो वही आंसर दिया MIP CIP, उसने मुझे फेल कर दिया या। और फिर लिंक्डइन में कोई गुस्सा में मेरे को मैसेज लिखेगा, ज्यादा हीरो मत बन, देख लूंगा तुमको। तो दैट कैच बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके हम शुरू से बात कर रहे हैं कि दिस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, कि फंक्शन किस तरह से कॉल हो रहा है। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि फंक्शन कैसे क्रिएट हुआ है। वी हैव बीन टॉकिंग दैट सिंस बिगिनिंग। हाउएवर देयर इज वन कैच, दैट इफ यू क्रिएट अ फंक्शन, सो इन जावास्क्रिप्ट अ फंक्शन कैन बी क्रिएटेड इन 4 ways। जैसे एक फंक्शन को आप 4 तरीके से कॉल करते हो, एक फंक्शन को आप 4 तरीके से क्रिएट भी कर सकते हो। उसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है एरो फंक्शन, जो थर्ड ऑप्शन है एरो फंक्शन, उसमें दिस की वैल्यू नहीं होती है। तो जब भी अगर आपने एरो फंक्शन बनाया है तो मैंने जितना ज्ञान आपको दिया है वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। लेट्स सी दैट इन डेमो। So let's change same this product to an arrow function. So I'll say that, hey, where that red book. So you understand trade and process, right? And multi-threading also you understand. So Java, your browser is single threaded, means JavaScript जो है वो हमेशा एक ही थ्रेड पे रन करता है। क्लियर? अब मान लो आपने एक फंक्शन लिखा, ये जो मेरा प्रोडक्ट फंक्शन था, उस प्रोडक्ट फंक्शन में मान लो मैं एक एपीआई को कॉल कर रहा हूं। अब वो जो एपीआई है वो 5 मिनट ले रहा है मुझे वैल्यू को रिटर्न करने में। तो चूंकि ये सिंगल थ्रेड पे कम करता है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो 5 मिनट वेट करेगा और जब वो वैल्यू आएगी तो आगे बढ़ेगा। बट दैट इज नॉट गुड बिकॉज इट मे टेक 5 minutes 50 minutes, यू डोंट नो। देन हाउ टू सॉल्व इट। अब आप पिज्जा दुकान का, आप जब पिज्जा ऑर्डर करने जाते हो उसका एग्जांपल लो। व्हेन यू गो टू बाय पिज्जा, व्हाट यू डू, यू गो ऑन द काउंटर, यू ऑर्डर योर पिज्जा एंड दे गिव यू अ टोकन एंड यू टेक दैट टोकन एंड यू गो बैक टू योर टेबल एंड यू कीप वेटिंग, यू डोंट गो। अगर आप वेट करते रहते हो। अब क्या होता है कि जो पिज्जा वाले हैं वो आपको 3 तरह का रिस्पॉन्स दे सकते हैं। एक, वो बोलेंगे भैया आ जाओ, तुम्हारा रेडी है फूड, टेक इट, you are happy, he is happy, she is happy. Second is that, hey, I may take more time. और थर्ड कि आपने कोक बोला था, कोक अभी ओवर हो गया, आपको स्प्राइट लेना पड़ेगा। लेट्स कॉल इट फेलियर ऑफ डिलीवरी। इसको आप एक फंक्शन पे मैप करो। फंक्शन में जब मैं एपीआई कॉल करूंगा तो जो प्रॉमिस है वो पिज्जा वाला बंदा है। ये मेरे को बोलेगा कि अच्छा आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो भी वैल्यू है वो मैं बताऊंगा आपको, यू कैरी ऑन। अब ये फ्यूचर में क्या करेगा, मुझे 2-3 तरह की वैल्यू बताएगा, एक्चुअली 2 तरह की वैल्यू बताएगा कि आपका डेटा आ गया या फेलियर हो गया। सो दिस इज व्हाट प्रॉमिस इज। सो प्रॉमिस इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट, लाइक THIS इज एन ऑब्जेक्ट। फंक्शन होते हैं, एक सक्सेस फंक्शन जिसको रिजॉल्व बोलते हैं, एक रिजेक्ट फंक्शन जिसको फेलियर बोलते हैं। सो प्रॉमिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन प्रोटोटाइप्स, आई विश आई हैड टाइम, पर आज नहीं तो फिर कभी, बिकॉज people invite me to teach prototype and this मैंने आपको पढ़ाया है, and prototype is little bit confusing topic in JavaScript, so maybe in the future, and we have already talked about these learning paths and everything. All right, so we started here. Now how you can learn JavaScript? I recommend these books. You do not know JavaScript, ये 6 book का series है, and I don't know how I sound it, and I'm very serious here. You don't learn JavaScript on computer. You learn JavaScript as you learn mathematics on Notepad. If you really want to master this language, this is a reason why this is most popular language, and there is a reason. कभी आप लोगों ने सोचा है ये बात कि Angular और React क्यों पॉपुलर है इतना, या कोई भी JavaScript लाइब्रेरी इतना क्यों पॉपुलर है? सोचो, क्योंकि हम लोगों को JavaScript लिखने नहीं आता है।
तो किसी ने क्या किया है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, प्रॉमिस को, दिस को, और आपको उसने बना के दे दिया है. अगर आप एप्पल के इंटरव्यू में जाओगे, मैं कंपनी का नाम ले रहा हूं, आप एप्पल के इंटरव्यू में जाओगे, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, हिज नेम इज राहत खन्ना, ही टोल्ड मी, ही वर्क्स फॉर एप्पल, कि उसने इंटरव्यू में पूछा कि आप किस फ्रेमवर्क पे काम करते हो, तो उसने बोला एंगुलर पे काम करता हूं. बोला वेरी गुड. एंगुलर में आपके फेवरेट फीचर्स क्या हैं? तो उसने बोला राउटिंग इज माय फेवरेट फीचर. बोला वेरी गुड. Now you have 4 hours. Can you implement routing in JavaScript? उसने कर दिया, एप्पल में है अभी, अब तो एप्पल के मेन क्वार्टर भी शिफ्ट कर गया. So someone is writing JavaScript for you because JavaScript is complex. So अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 10 में JavaScript कितना आता है, कभी भी 2 से ज्यादा मत बोलो, क्योंकि मैं भी अपने आप को 2.5 ही बोलूंगा मैक्सिमम. It's a huge language, and read that book called JavaScript Good Parts. This book is written by a person called Douglas Crockford, who is known as father of JavaScript. उसका एक वीडियो है उस पे YouTube पे, जस्ट डालना Douglas Crockford JavaScript. वो Facebook के इंजीनियर्स को JavaScript की ट्रेनिंग दे रहा है. So it's not those editing video जहां यहां से एक आ गया, यहां से ये आ गया. No. If I have to watch a stand-up comedy, I'll go and watch जाकिर खान. आपके लर्निंग वीडियो में मुझे कॉमेडी नहीं चाहिए, और अगर मैं कॉमेडी से लर्निंग कर रहा हूं तो मैं भी अपने लर्निंग के लिए सीरियस नहीं हूं. मुझे सीरियस चीज चाहिए यार. मुझे BMW पे घूमना है, मुझे अमेरिका घूमना है, मुझे यूरोप घूमना है, उसके लिए मुझे पैसे कमाने हैं. पैसे कमाने के लिए मुझे स्किल जनरेट करनी है, और स्किल जनरेट फन से नहीं होता है. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. अगर अभी मेरा टमी आउट है, अगर मेरे को 6 पैक बनाना है, तो उसके लिए मुझे काम करना होगा. यूट्यूब पे एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के वो नहीं होगा कम. जो कल मैं 56 दुकान गया था, वहां नहीं जाना होगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो दीज आर द सीरियस बुक्स. लर्न जावास्क्रिप्ट फॉर इम्प्रेस. तो जब आप उसकी वीडियो देखोगे डगलस क्रॉफर्ड का, देखना, पॉज करना, लाइक 5 मिनट देखा, पॉज किया, वापस आके वन ऑफ दिस बुक उस टॉपिक को पढ़ा. So that 2 hours of video will go for like 20 days for you. And then you will see the fun. Anyway, now you may have a question that, okay, why we should trust this guy? Never trust your speaker. Why? So, मैं टॉम क्रूज जैसा दिख रहा हूं, ये परसेप्शन है. आप लोगों में से कोई बोलेगा, अरे सर टॉम क्रूज नहीं, आप तो ब्रैड पिट जैसे दिख रहे हो. और कोई बोलेगा, अरे नहीं, ये अनुपम खेर जैसा दिख रहा है बंदा. It is when it's your perception. Everyone could have different perception about me. I'm standing here, but I'm 5 feet 10 inch tall. That's data. Even if you hate me, you cannot say that guy was 5 feet 5 inch. You agree? Agree or not? So I'll give you some data point about myself, that why you should trust me, and those are data point, not perception point. So my name is Dhananjay Kumar. I was an engineer. Now I'm doing teaching. I'm a winner of, like, there's a Microsoft MVP award. I have got that 12 times. It doesn't mean I'm very old. It means I got it when I was very young, first time. It was a joke. Then I'm a Google Developer expert in Angular, and I do this NG India, which is an Angular conference, Angular specific conference. So if you are into Angular, you can talk to me regarding that. And this last slide is very, very important. And why I have brought this slide, आप उस दूसरे वाले फोटो को देखो, वहां जेस पोलैंड लिखा आ रहा है. So I was there 3 weeks back in the largest JavaScript conference of Europe called JS Poland. And I'm not making it up. Thank you for that. Thank you for that. पर ताली मारने वाली बात अब आएगी. I'm not, the message is very clear. मैंने जो आपको दिस वाला पढ़ाया है, वो कोई सिंपल चीज नहीं पढ़ाया है. Same topic I taught there in front of 1,000 European JavaScript developers. Same example, same slides. So here you have learned something serious of JavaScript. It's not कह रहे हो तो हो गया, अभी JavaScript में बहुत कुछ होगा, Python कर लेते हैं, and all. नहीं, Python भी अच्छा है, nothing wrong. So do then Python completely. Do then C++ completely. Whatever you are doing, do it completely. But yes, JavaScript is the most popular language, and due to my work, they gave me one award also, which you can see here, Hero of Community Award.
So that was really good. My name is Dhananjay Kumar. You can search me on LinkedIn if you want to get connected, or Twitter debug mode, DHANANJY, Dhananjay Kumar. And this last slide is very important, and then I'll leave. And best of luck to all of you. JavaScript is like a religion. People use it or misuse it the way they understand it. May God bless you. Thank you so much. Can I take a selfie with you? First, I'll take one. It's a big job, but excuse me, Bhaiya. Sajida, can you take our photo? Sure. See. Thank you. Just, if you want, you can stand. Everybody stand up. Please stand up. Thank you. Stand up, please. मैं बैठ जाता हूँ. Thank you. Thank you. I'll take a video. Give a hoot. Yeah, please. Thank you. Thank you. God bless you. Best of luck. Thank you so much, Dhananjay, for such an insightful session. As a token of appreciation, I request Mr. Tushar Pal, our GDG lead, to give ahead a memento to Mr. Dhananjay Kumar. Kindly come in the middle. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Tushar, for inviting. Thank you, Tushar. Thank you. Give it up for Mr. Dhananjay Kumar. Young team of DevFest 2022 to get connected young tech people around the city. We also want to expand our business in local developer group and expand that community as much as we can. If you want to join us, let's connect our team at Career Booth. Hello young people, I am Tushar. I request everybody of you to settle down fast. We need to start again. Okay, so I guess it was a great session. Now moving ahead, we have next speaker Sayak Paul. Sayak Paul is a developer advocate at Hugging Face, focusing on democratizing understandable ML tooling. Previously at Carted, an e-commerce startup, he designed the ML infrastructure from the data acquisition to model deployment. Of the work, he liked to be a Netflix nerd. So, first of all, I would like everybody of you to please settle down. Volunteers, kindly assist them. So we have Mr. Sayak Paul right from Kolkata. So let's welcome him in its own style. Shagatum, Mr. Sayak Paul. I hope I was correct. So guys, give a huge round of applause for Sayak Paul. You won't follow me? I need the changer. Okay. No, I don't need Yeah, the I'll just give it. I don't have live coding, so simmer it down.
Can you cover this space? अच्छा ठीक है यहाँ से करना है. Can you cover this space? अच्छा ठीक है यहाँ से करना. Has moved back to Kolkata. Now this is me coming to Indore after 20 long years. So I really need to know how many of you are into ML in the first place. Yeah, that seemed like a low number, but don't let the and I'm still actively doing that. And off the work, I like being a Netflix nerd, and currently I'm binging Khaki. I think it's a really good one. I think I'm in the 4th episode. So yeah, without any further ado, let's actually get started. How many of you agree with this statement? ML is fascinating. बाकी सारों को क्या हो गया? नहीं लगता ML is fascinating. If that's the case, I'll try to convince you that ML is indeed fascinating. Let me take one example. So here on the screen, the blue text that you are seeing, it was actually predicted by an ML system. So what I did was, I gave it a context, and I then asked the ML system a question, and it kind of correctly predicted the answer. So in order to get to the text in the blue, it had to reason about the context, it had to sort of understand the question, and then it had to come up with a plausible answer. So this is one example as to why I think ML is fascinating. And then I'm going to have to ask you for a short exercise. So read this caption on the right-hand side. A 3D render of an astronaut walking in a green desert. Now take 5-10 seconds and imagine an image closely matching this caption. First of all, green desert does not exist. So you will have to be a bit more creative than usual. But yeah, take your time. I'll give you 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And believe it or not, it's an image generated by an ML system. Real enough? The image looks real enough? Looks fun enough? Looks creative enough? Yeah? Take a look at the level of reality. Take a look at the level of compositionality it has. Right? It has got a certain feel of mastery to it. So believe it or not, this image was actually generated by an ML system, and I only prompted it with this caption. A 3D render of an astronaut walking in a green desert. First of all, again, green desert does not exist, but it still sort of thought it, came up with a plausible looking image. So yeah, I hope with these 2 examples, I was able to convince you that ML is indeed fascinating. Now here are a couple of more bold statements for you. ML is an enabling technology. The reason why I say that is,
imagine, Google Photos without all the intelligent factor incorporated inside of it, right? Imagine Google search without the intelligent search results. Imagine Facebook without intelligent suggestions, if you know what I mean. So I think ML is an enabling technology. It has enabled many amazing, applications across multiple different verticals. And no wonder why it's taking a huge market share as far as the talent market is concerned. I'm sorry, Angular folks. ML is indeed going to be one of the most important technologies in the company. All right. So ML is an interdisciplinary gig. And by what I mean by that, because ML is not just about programming. Even if you are a Dennis Ritchie of programming, it might be the case that you are unable to debug a simple machine learning model. But that's not going to work. As a machine learning practitioner, you need to have a combined understanding of programming and also the science part of it. And by science, I mean things like probability, statistics, all the usual plus two science stuff. So you see, it's not just about programming. You need to also have a fair grasp of science. And also, you need to be able to communicate your results. Because after you're done coding a particular machine learning project, you should be able to communicate what you did in the project in the first place. And things in ML are usually more non-trivial than the other software engineering projects. And I'm going to explain why that is in a moment. So you see, ML is an interconnected discipline. It's not just about programming. It's not about a particular one thing. Like, you have understood JavaScript, okay, now what? So you also need to incorporate the science element inside of it. And also, ML evaluation happens at a pretty rapid pace, right? Let's say you have a set, design pattern when it comes to software engineering. And in the ML world, that design pattern, that may get out of date very quickly. I'm going to give you another example. So batch normalization, this thing called batch normalization, think of it as a design pattern like you do in software engineering. So in 2022, this specific component from machine learning called batch normalization, it used to be really popular up until 2020. Like in our textbooks during our undergrad machine learning courses, we all were taught about batch normalization. Now in 2022, it's almost no longer used. So the thing that we were taught in our textbooks in, let's say, 2017 or even 2020, it's no longer even used. Being passionate about something involves all of it, the good, the bad, the ugly. It's not like machine learning is all about flowers and butterflies. It's not like that. You need to prepare yourself for the worst of the worst cases where you need to really, deep into a particular model architecture to be able to debug it in the first place. So be prepared for those days. Now, as the popular saying goes, what can't be measured can't be improved. So maybe you would want to ask yourself, the last project that you did, what impact it had? Did it help, help a business drive its business revenue? Did it, did it lead to more user engagements and so on? Here are a couple of example questions that I would have asked to myself. So just some examples. And you don't need to click pictures. I'm going to share my slides with you anyway at the end of my talk. So yeah. So these are some questions that I usually start off with. So long story cut short, I like to see improvement as a function of impact. The kind of impact, the improvements that you are making along the way, the kind of impacts that you are making. So that's why I like to see improvement as a function of impact. Now, if still you are thinking, I'm not really here for a pep talk, it's not one. It's not a pep talk. Now we are studying why.
Now let's take that scenario where we all are ML professionals, meaning I have an ML specific job, I'm already employed. Now, why would I want to improve? I have already got the job, right? What's possibly there to improve? So you probably want to just raise a bar, and probably your next job includes a broader set of skills. Probably that's why you want to improve. These are some questions you might again want to ask. These questions can vary from person to person, but these are questions that I often ask myself. You know, before taking on a project, before working on an open source project, and so on. Now what are the things that we as ML machine learning practitioners could focus on? Like often we focus on model training, often we focus on writing a very niche model architecture. Okay, all done, model training done, all in good. Now what about the next step? What about deploying that model in the first place to serve the next 1,000 users? Let's not go to billions. Let's say what about serving that model to 1,000 users and then slowly scaling it up? What about scaling that model from, often we code models inside a notebook. How about taking that model out of your notebook and deploy it in a scalable manner, right? And what about reproducibility? Can you ensure your model runs the way it's? That's why I'm trying to sort of improve my skills, hone my skills, learn new chops and stuff. Now what? The first part is really important. I can't emphasize on it, more. Open source, open source, and open source, and open source. Because with open, I'm going to explain why open source is really important, but here's the sneak peek. With open source, you get to interact with a lot of interesting folks, and you also get to make an impact directly. Imagine contributing to your favorite open source library. That way, you are directly contributing to its large user base. Because if you know the change that you introduced in one of your pull requests, if you know that that change is getting used by thousands and thousands of developers across the globe, that's a very wholesome feeling. And then document the things that you are currently working on, document the things that you are finding to be challenging in the first place, and how you are approaching the solutions to those challenges. So document all of that stuff. And in machine learning, you might already be knowing this. Reading papers comes as a part and parcel of the job. So if you're reading a new paper, maybe try to implement some parts of the paper. That way you will know the nitty-gritty of the paper even better. So just don't stick to the reading part. Also try to take a stab at implementing some parts of the paper. And also learn about stuff that integrate really well with ML. And these includes, in my opinion, Docker, Kubernetes, Elasticsearch, all of these things integrate pretty well with machine learning. So when you will be asked to scale any machine learning system, Docker, Kubernetes, these things will come in handy. So if you are just starting your journey, if you know that you are good with fundamentals, it's now time for you to start learning about these things, because these things will come in handy if you land up a machine learning job anyway. Now, all right. So there are also some common grounds in between the practitioners and also the students, and these pointers basically apply to the students as well as the machine learning professionals. Now, again, as I was mentioning during the beginning of my talk, ML is an interdisciplinary gig. Where do I exactly focus on? Do I focus only on ML ops? Do I implement some parts of the paper? Do I pick on something of my own? Do I try to mix and match in between different ideas? Or what happens if I do not know about some stuff needed to start a particular project, right? And here's my take. I say all of it, bit of all. Maybe, work on some ML ops related bit. Maybe, spend reading a paper and implement some parts of the paper in the first place. Spend some time with all of these points that I have mentioned, because in my opinion, they are all pretty useful skill, especially if you are a machine learning practitioner. Now, picking something interesting to work on, this can be again very challenging.
what possibly could I, start working on that's interesting enough in the eyes of recruiters? Because when a recruiter will take a look at your resume, they will need to find objective evidence that you can apply machine learning to challenging real world problems. So now, how do I build that portfolio? How do I, have a portfolio of interesting projects? For that, I really need to pick up something interesting in the first place, right? So here's what I like to do. I try to take a look at what others have done, and I try to draw inspiration from them, because the more you do this, the more developed your vocabulary will be. It's more like the more enriched your vocabulary is, you will probably in a better position to write better essays and so on. So if you have got a vocabulary of good and well-polished projects in machine learning, you will probably have a better idea of what possibly you could work on next, and draw some ideas from the existing projects that you have already studied. And here are two examples that I wanted to give you. First one is PDF to audio, and it's available for free on YouTube. So in this project, using existing APIs, Dell, the creator of this project, her name is Dell. So using existing machine learning APIs from Google Cloud, she basically turned, PDF machine learning papers into audio books. So that's an interesting thing where she, incorporated machine learning APIs to generate, text from speech. So again, speech to text is text to speech is just a fancy keyword. She actually turned a great application from that fancy keyword. Now here's another one where she made a video archive where she is basically allowing her users to enter a search query, and then from an internal database, she will fetch all the videos that is matching with that particular search query. So this way, again, using existing APIs, she was able to build a video archive that takes just natural language search queries and retrieves all the videos that are matching the search query as closely as possible. So here are some takeaways. Being able to minimally reproduce something, it's still a useful skill. Imagine being able to reproduce Google search minimally, not entirely, but minimally, because that way you are immediately exposed to different technologies that are behind Google search, at least some part of it, 1% of it, but you still learn something new, and you also learn the engineering process along the way. Now, if you are looking for something new, if you are looking for fresh problem statements and you are unable to ideate on fresh problem statements, Kaggle and Papers with Code, these two platforms could be really helpful for you. And if you're thinking about regional problems, let's say agricultural problems or environmental problems or Indic languages, because language technologies around Latin script languages like English, Spanish, they are pretty common, but what about Indic languages? Like what about app localization and stuff like that? There we have real opportunities, because language technologies around Indic languages, they are pretty rare. I mean, good. When it comes to good language technologies around Indic languages, they are pretty rare. So, think about the opportunities that you could get by working on regional challenges. Like, you might be able to come up with a good data set that will allow other researchers to also, participate in the problem that you're trying to solve. Then there will be lots of collaborations. And of course, at the end of the day, you will be able to contribute to a good cause, a national cause maybe. And especially for non-ML practitioners who want to, venture into the world of machine learning, I have written a blog post, which might be, again, helpful for you. I have heard from many of my non-ML friends that this blog post was helpful for them. That's why I thought of popping it off. And some notes about open source, because I keep talking about open source, but I wanted to share some extended notes about it. If you want to build your own open source library to solve specific machine learning tasks, please go ahead and do it. You have an amazing example right in front of you, segmentation models PyTorch. Okay, yeah. So it's an incredibly impactful library. It started off as an individual open source project, and then the entire machine learning community sort of joined the efforts. And again, solid code base with complete test cases and solid documentation. So if you want to work on your own standalone machine learning library, please do consider these points. Like what's the kind of impact
the library will have, what about the code base, what about the code coverage, and what about the documentation? Because as they say, without documentation, there is no MVP. There is no minimal viable product. And if you want to contribute to a great open source library that's already existing, again, that's again a valid cause, because that way you get to interact with awesome folks that are already accomplished in the field, and you also get to improve and validate the skills you have. Because that way you get to, apply the skills you have learned over the years and, use that to contribute to something greater. And here's some of my bits around communication, because as I was mentioning, it's a good practice to, document about what you are learning, what kind of challenges you are facing while doing a particular project, and how you are approaching the solutions. So, yeah, you need to sort of communicate what you have worked on in a clear and concise manner. Because if you have documented that thing, that will go a long way, and you don't have to take it from me, take it from the good folks, like Jeremy Howard, David Robinson, and so on. These are already pretty accomplished folks in the field, so take it from them. And here are some takeaways for you. So it's like keeping an open mind for, wanting to improve, and also it's also about enjoying the challenges along the way and keep at it. Like, it's not like I have contributed to an open source library and for the next 1 year I do not do anything. It's not like that. Consistency is the key. No matter, how small your contributions are, they will slowly start adding up. And if you want to, take a look at my slides later for your own references, you can scan this QR. If you want to take a photograph, I'll allow 5-6 seconds. And yeah, that's about it. If you have any questions, feel free to ask. Looks like I have some questions. Any questions? You can ask me anything pertaining to machine learning, open source, anything. I'll be around, so if you think of any questions, just feel free to grab me and we can discuss. No questions? All right. Thank you, folks. Thank you. Pleasure talking. We have a question? We have a question? We have a question? There? Where? Hello. Hi, Sayak. My name is Shyam. Okay, so my name is, my question is that why are we not using batch norm these days? Because batch norm seems to be very popular back in the time. Yeah, sure. Good question. So, batch norm is one of the most formidable components where? Convolutional neural networks. Do we use convolutional neural networks in 2022? We use transformers. So you have your answer. Okay. So, anyone else? Go ahead. Sir, if I want to go into machine learning, should I start with projects right now, or should I just learn about Kubernetes or Docker first? Fundamentals first. First fundamentals. Okay. Fundamentals. Thank you. Without fundamentals, you won't be able to make any sense out of anything. So. That lady has a question. Hello. So this is Zafar. Sorry. We know how to deal with ML in a structural or non-structural data. So how can we deal, and how can we say that is the best algorithm to deal with unstructured and structural data? So who is the best algorithm? There are a lot of algorithms. So who is the best algorithm to deal with the data? Before I answer your question, can we have some silence? I mean, yeah. Please be helpful to yourselves in the first place. So see, in machine learning, there's a popular saying called, there's no free lunch theorem. There's no one particular best algorithm for any given data. So what I'll recommend you doing is,
you take any unstructured database like images or natural form of text and so on, you pick up 5 different models that might be suitable for your data, and then you start experimenting, and then you start recording the matrix you wanted to optimize in the first place, and then pick the model that satisfies your matrix and also the business matrix. Be in touch with all the business stakeholders to sort of decide on that metric you would want to optimize, and pick that model from that set of 5 models that is giving you the best results. So I'll follow this for also structured data too. And long story cut short, there's no one single model that I can say with confidence will be the best one for you. I'll probably give you 5 models to try out, and then I'll let you pick something that optimizes your performance. So yeah. Sorry? Structural data is a paid now, so how can we optimize? Structured data is paid, sorry? Somewhere the structural data type is paid from, you can buy. I see. Yeah, there are lots of services where if you want to buy data sets, like if you have a business domain for which you want to buy a particular data set, you can buy. There are lots of vendors, but I mean, I probably do not get your answer. Are you looking for portals that provide data sets for fees? Structural data. Structured data? What kind of structured data? Any type of. We wanted to know the ski. As a beginner, we wanted to learn kind of. If you are looking for data to just practice, then probably look at Kaggle. Kaggle will give you n number of structured data. Like there are lots of free structured data available at your disposal. Yes. So the platform's name is Kaggle. 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 I know. Yeah. Start right there. And if you are looking for something more specific, then I'll probably have to get more context to be able to suggest better. Like what kind of domain you are looking the data for. Go ahead. Jain sir, my name is Harsh, and my question is, how can I grab a job in ML field? Because whenever there is a requirement of a company, even experienced people apply for that job. Yeah. And freshers won't get any opportunity. So as a fresher, what should I do to grab? I'll go back to my first point. Open source, open source, and open source. I'm gonna explain why. Because if you are already contributing to a particular open source library, let's say TensorFlow. TensorFlow is a very popular open source library that's primarily maintained at Google. If you have already contributed something non-trivial to TensorFlow, that tells me what? You have read the TensorFlow code base up to some extent. You have an understanding of the underlying concepts that were required to make the PRs in the first place, and your code has been already reviewed by Googlers. So what other answers am I looking for? But as a beginner, what can I do? Means that understanding. So if you are looking to build those chops in the first place, I'll suggest start with the fundamentals. Like start with Python programming. If you do not know Python programming, be comfortable programming in Python, because Python is the most popular language when it comes to machine learning. Sorry, Angular folks. So start right there. Start learning about Python if you haven't already. Then also, if may I ask you, did you have science in your +2? No, I have commerce. So no, it's not a problem. It's not a problem. There are plenty of great resources. Like you could take the ML specialization. It's available on Coursera for free. So it will teach you the basic stuff that's required to get started, to be comfortable with any machine learning project. So start the fundamentals, but at the same time also start learning about Python, because it's important to apply what you are learning. And without knowing a language, you won't be able to do that. So Python and that ML specialization course, if you can strike that right balance, things will be easier for you. And if you still have questions, feel free to email me. I'm always available. Thank you very much, sir. Anyone else? All right, I'll take this one. I have 7 minutes of time, so I'll take lots of questions. Hello. Go ahead. I was asking, what can be a pathway to implement ML models for quantum computing? And is it even beneficial at this point? Right. So my domain is not quantum computing. I mostly work in the domain of computer vision, natural language processing, and speech. So quantum computing I have never worked with, so I'm not gonna pretend to give you a good suggestion. So I'm sorry. And about cryptography? Again, cybersecurity is not my domain. I have never worked with something that marries cybersecurity and machine learning, so I'm sorry.
Hello. Hello. So, do you recommend something, some resources for beginners to start in machine learning? Sure. If you are more comfortable with video-based courses, then ML specialization on Coursera, it's taught by Andrew Young, one of the OGs of the field. It's available for you for free. You can audit the course for free. The specialization is called ML specialization. It's from Stanford. It's taught by Andrew Young. It's there on Coursera. And if you're more like me, if you're more like a reader, then Grokking Machine Learning. It's from Manning Publishers. It's, again, you can read the book online for free. Okay, Grokking Machine Learning. So these are all beginner friendly? All beginners. Okay. It does not assume any prerequisites. Okay, thank you. Hello. Sir, take that one. Hello, sir. This is me, Peswani. Hi. Sir, as we build our models, the basic difficult part comes in the model deployment or the ML ops. So any tips regarding it? Sorry? About the model deployment and ML ops. So you want to get started in the field of ML ops. I'll suggest one book, Machine Learning Design Patterns from Google Cloud Platform. Okay. Start right there. I mean, I could have suggested more, but in the interest of time, I can only provide suggestions that might be helpful for you. Okay. So the book's name is Machine Learning Design Patterns. It's written by folks that work at Google Cloud Platform. Okay. So, thank you, sir. Cool. Hello, sir. I'm Anurag. So my question is, how do you keep up with your schedule? So you have got a job at Hugging Face. You probably would also be reading lots of research paper and open source. So you might not know me, but I was contributing at KeraCV like 1 month. So my question is about consistency. So how do you keep up with all of these things? First of all, kudos for your efforts for KeraCV. Really great to see that. Consistency is something that comes with practice. So when I was starting my career, I was more like, okay, read as many papers as possible, do not focus on the implementation part. And then later I realized, okay, I'm reading a lot, it's time to implement something. Because if you are implementing something that boosts your confidence in the first place. So now it's like, now it has come with habit. I start my day by taking a look at the usual stuff, what I need to do to generate more revenue for Hugging Face, and then I also separate some time for reading some papers and also contributing to the pending open source PRs that I'm working on. I'll say it comes with experience and practice. So if you are liking something, keep at it, and if you want to transition into the next thing, also try to take baby steps and try slowly scaling it up from there. Do not immediately jump to taking a big initiative and then do not contributing to it. So start taking slow steps and keep at it, and then scale them to something bigger. One more question. So how did you start with contributing to open source? What was the first point? When and where? I'm gonna be brutally honest. So back in my undergrad days, I was bullied for not knowing open source and GitHub enough. So I made it to a point where, I knew about all the open source related technology. So that started as a booster, moral booster for me. And then it became like a hobby. I really started, developing a niche for the open source community, given the transparency and the kind of opportunities it provides for you. So, yeah. Thank you. I might not have introduced myself. I'm Anurag Dharse. So thank you. Oh, we have interacted, right? Through no, KeraCV? like on LinkedIn and KeraCV. Yeah. Thank you. Thank you. First, all right, we need to cut. I'll be around, folks, so feel free to grab me and ask your questions. So I'll be around. They are saying my the time last is... question I want to ask, sir, last. One question, one more. Who's the lucky guy? Okay, go ahead. Sir, first of all, hello, sir. Sir, my question is that how cloud computing is beneficial in machine learning? Oh, yeah. Great question. So can you buy a GPU? Okay, sir. Can you buy a high-end GPU, graphics processing unit? Can you buy it? No, sir. Being a student, can you buy it? No, sir. You can't, right? No, sir. That's why cloud computing is important, because the cloud platform service providers, they provide you with managed GPU compute for a cheaper price. And of course, that's more of a jocular answer.
cloud computing is required because most of the cloud service providers provide you with managed services, serverless platforms on which you can practice machine learning to be the great practitioner you always wanted to be. And that set of tools include GPU compute in the first place. And without GPU compute, it's kind of difficult to survive in the ML world because you want to train your models faster, you want to be on the top of your game, and for that you need GPUs. So one of the reasons why cloud computing is sort of tightly integrated with machine learning is GPUs, cheap GPUs. Okay, sir. Thank you, sir. Done? All right. Thank you, folks. Thank you. Thank you, sir. As a token of appreciation, I request Manas and Akshat to hand over the memento to Mr. Sayak Paul. Give a huge round of applause, guys. Give it up for Mr. Sayak Paul. Woo! Thank you, sir. Check. Hi budding professionals, I'm sure you are all enjoying DevFest 2022. Softweb is premier sponsor of this event. Softweb is the company by Systematics Infotech, and we have been in the business for 17 years, and we are working with leading brands in India, which is companies like Aisha CV, Royal Enfield. They all are leveraging our services. And outside India, we are also present at USA, Australia, UK and Middle East, and we are known for digital transformation solutions. We are expert in low-code, RPA, IPA, aside core technologies such as Microsoft.NET. And so far we have the opportunity to work with more than 1500 clients globally. Softweb is a CMMI level 5 company and ISO 27000 certified. In fact, in India there are hardly 84 such companies who are appraised at CMMI level 5, and that is why our clients believe that we work as a relationship beyond contracts and we deliver the best. Building an organization is not possible without a great team, and we are here to look out for young and fresh talent in DevFest 2022. We are also sharing our thoughts on what's happening around on artificial intelligence and machine learning over here. So explore those sessions and meet us at our booth to explore opportunities. Talent and sharing knowledge. We are glad to partner with Google Developer Group for this initiative. It's a great platform for entire tech community in this region. You have a lot of opportunity here to learn and grow and explore the opportunities within the city itself. Be in city itself and start your career from Indore. I request everybody of you to please settle down. Kindly close the gates over there. Volunteers, please help them to settle down. You all can click the pictures afterwards. There'll be a break in between and you can click your pictures at that time. Right now, let's attend the session. Okay, so moving ahead, we have our next speaker, Vivek Yadav. He's Google Developer Expert for Flutter and Dart, also mobile team lead at Just Money. He has more than 5 years of experience with mobile development and related tech. He is also community organizer of Flutter India, Flutter Conference, Mumbai, and PRO community coach. He loves to share things and help with the community, write blogs, and produce video content to help the community.
Also support the community in all possible ways. Twitter, LinkedIn, YouTube, and Discord are some platforms where he's always available to help. And one more thing I would like to tell you all that Vivek is from Amchi, Mumbai. So अक्खा मुंबई विवेक यादव को जानता है, अब अक्खा इंदौर विवेक यादव को जानेगा. So give it up for Mr. Vivek Yadav. Give a huge round of applause for Vivek Yadav. हेलो इंदौर. मैं एक्चुअली जाकिर खान बन के आने वाला था, फिर मेरी वाइफ ने मुझे रोक लिया. बोला बेटा आपका अभी ब्रेकअप वगैरह ओके हो गया है, शादी हो गई आपकी, तो आप जाकिर खान तो मत बनो. तो इसीलिए बस नॉर्मल अटायर में आ गया मैं. कूल. जब तक ये स्टार्ट होता है सब लोग पहले बैठ जाओ, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, आप लोग को मुझे मेरी आवाज आ रही लास्ट में, ठीक है. और यहाँ पर ऐसा कोई है जिसको हिंदी नहीं समझ में आती है? अच्छा ठीक है, तो देन फिर मैं मेरा टॉक हिंदी में लेने वाला हूँ, ठीक है. सो यस, वेलकम टू द टॉक माइग्रेट टू फ्लटर. मुझे पहले ये बताओ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने फ्लटर यूज किया है? मुझे जितने हाथ दिखेंगे उसके हिसाब से ये जो कंटेंट है वो चेंज होगा, ठीक है. क्योंकि ये कंटेंट इंटरमीडिएट वालों के लिए भी है, बेसिक वालों के लिए भी, एडवांस वालों के लिए भी है. तो जो हाथ दिखेगा जितना उसके हिसाब से कंटेंट अच्छा होगा, ठीक है. सो यस, तो और ठीक है. तो और कितने लोग यहाँ पर है जो खुद को बोलते हैं कि मैं एक इंटरमीडिएट फ्लटर डेवलपर हूँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ. अच्छा ठीक है, ठीक है, मतलब आप ये भी शुरू कर रहे हो, ठीक है. तो इसको हम लोग फिर थोड़ा सा बेसिक में रखते ताकि सब लोग समझ में आए. कूल. सब लोग मेरे साथ में एक बार शाउट आउट मिल जाएगा मुझे? अरे वाह, ठीक है. सो ये हमारा एजेंडा है, सिंपल एजेंडा. पहले हम लोग बात करेंगे ये माइग्रेशन अप्रोच क्या है, ठीक है. बीच में बात करेंगे माइग्रेशन होता भी क्या है, ठीक है. एंड फिर बात करेंगे माइग्रेशन प्लानिंग की. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप लोग बाकी टाइम जितना मस्ती करना कर लेना, माइग्रेशन प्लानिंग के टाइम पे ध्यान रखना, ठीक है. 5 मिनट रहेगा उसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट. उसके बाद एक और चीज है वाई माइग्रेशन. हमने सब समझ लिया क्यों, मतलब कैसे करना है. फिर हम बात करेंगे क्यों करना है, ठीक है. एंड फिर एंड में Q&A, ठीक है. तो अरे ये कहाँ पहुंच गया? थोड़ा आगे पीछे हो रहा है क्या? इसको दिखाना है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, कूल. सो फ्लटर सबको पता है, राइट? कल आयुष ने सबको बता दिया कि फ्लटर क्या है, ठीक है. टेक में भी बता दिया और शहरी में बता दिया. मुझे बताओ यहाँ पर कल कौन कौन था? आज सब नए लोग आए क्या? कल वाले कहाँ गए? कूल कूल. सो यस, दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट फ्लटर. एंड यही रीजन था कि मैंने खुद को भी स्विच किया फ्लटर में. मैं पहले फ्लटर डेवलपर नहीं था, मैं एंड्रॉइड डेवलपर था. मैं एंड्रॉइड पे कोड करता था, ठीक है. फिर जब मैंने फ्लटर यूज किया उसके बाद अब मेरा ये सोचना है कि फ्लटर राइट नाउ बेस्ट फ्रेमवर्क है या बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको मोबाइल एप्स बनाने, एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉइड फोन्स एंड आईफोन्स, ठीक है. एंड ये जो टॉक है ये आपको एक लेवल और आगे लेके जाएगा, ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंपनीज लाइक स्विगी में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो, ठीक है. स्विगी, ओला, वहां पर आपको ये बहुत काम आएगा, ठीक है. कूल. सो लेट्स मूव अहेड. सो दिस इज मी. आई एम मोबाइल टीम लीड एट जेस्ट मनी. आई होप यू हैव हर्ड ऑफ जेस्ट मनी. सो जेस्ट मनी इज बाय नाउ पे लेटर कंपनी. वी गिव आउट लोन्स, ठीक है. तो आपको EMI चाहिए तो आ जाना मेरे पास, मतलब कंपनी के पास, ठीक है. एंड इसका जो मोबाइल ऐप है वो पूरा मैंने बनाया है. मैंने और मेरी टीम ने इसका इनिशिएटिव मैंने लिया था, ठीक है. एंड करेंटली मेरे ऐप पे 10 लाख डाउनलोड्स है. एंड मैं सिर्फ आईफोन की बात कर रहा हूँ. कूल. तो
मेरा जो फ्लटर ऐप है अभी वो सिर्फ ऐप स्टोर पे है। ये जो टॉक बताने जा रहा हूँ ना मैं, ये करंटली मेरे कंपनी में खत्म कर चुका हूँ मैं, ठीक है। एंड अभी अभी हम लोग हमारा जो एंड्रॉइड ऐप है उसको रिप्लेस करने वाले फ्लटर ऐप से। एंड उसके बाद मेरे ऐप पे ट्रैफिक हो जाएगी कम से कम 30 लाख लोगों की, कम से कम, ठीक है। तो आई होप एवरीवन आर एक्साइटेड फॉर दिस टॉक, ठीक है। सो या अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गूगल डेवलपर एक्सपर्ट फॉर फ्लटर एंड डार्ट। जैसे आयुष आप लोगों से बात करता हूँ वैसे मैं बात करूंगा, ठीक है, बट शायरी नहीं कर पाऊंगा अभी। कुल फिर बाकी चीजें तो आपको सब लोगों ने बता दिया कि कम्युनिटी लीडर एट फ्लटर मुंबई एंड इंडिया फ्लटर। बाकी आई ट्राई टू हेल्प यू गाइस इन ऑल पॉसिबल वे, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। सो जब मुझे मालूम पड़ा कि ठीक है, पहले तो मैंने मेरा एप्लीकेशन बना लिया, ऐप स्टोर पे लाइव है, ठीक है, 5-6 लाख तब यूजर थे। फिर जब कंपनी ने देखा यार अच्छा खासा चल रहा है फ्लटर, क्यों ना हमारा एंड्रॉइड ऐप भी माइग्रेट कर लेते, तब मैं ऐसा भाग रहा था। अब तो मैंने सब कर लिया है, मेरे को तो कुछ नहीं करना है, मेरा जो ऐप एप्पल वाला है उसको एंड्रॉइड पे डाल देना है, राइट। तो मैं इस तरह मस्त भाग रहा हूँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली यही करना था, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं कर रहा था, चल नहीं रहा है, ठीक है। कूल। सो इस तरह कुछ मेरा मैनेजर मेरे पास आया, ठीक है, यहाँ पर आई है लेकिन मेरे पास आया है, ठीक है। तो वो आया मेरे पास, बोला भाई हमको ऐसा करना है और हम डेवलपर लोग ऐसे बैठे, ठीक है, कि चलो मस्त से मजा आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारी हालत कुछ इस तरह होती है, ठीक है। ये काम नहीं कर रहा है या फिर मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो इसके बाद फिर हमारी हालत ऐसी हो गई कि हम तो हमारा सब कुछ खुद से बनाएंगे, ठीक है। मेरा तो सब कुछ रेडी है। अब समझ लो मैंने ऑलरेडी 6 महीने काम किया सेम ऐप पे, मुझे उसको सिर्फ ऐप प्ले स्टोर पे डालना है, वो ऑलरेडी ऐप स्टोर पे है, प्ले स्टोर पे डालना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, राइट, है ना। ऐसा मुझे भी लग रहा था, ठीक है। अगर इतना ही इजी होता तो बैंगलोर से यहाँ पे नहीं आया होता आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते फिर। कूल। सो एक डिस्क्लेमर देता हूं, ठीक है। आपको शायद अभी कुछ कुछ बाउंसर जा सकता है क्योंकि आप बिगिनर हो, ठीक है। आप बोलेगे अरे ये क्या है, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, बट सब्र रखना, बस ट्राई करो कि ये जो समझा रहा हूं उसको समझ लो, बेसिक क्लियर हो जाएगा, बाकी सब इजी है। कूल। तो पहली चीज कि हमारे एप्लीकेशंस में क्या क्या होता है, नेविगेशन होता है ना, हम एक पेज से दूसरे पेज में आते हैं। दूसरा नेटवर्क एपीआई कॉल्स होते हैं, एपीआई कॉल्स करते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा डेटाबेसेस होता है, लोकल डेटाबेस, राइट। चौथा नोटिफिकेशंस होता है ना, नोटिफिकेशन आता है आपको, जोमेटो बोलता है कि आप हंग्री हो। फिर यूटिलिटीज एंड हेल्पर्स, ठीक है, ऐसे भी कुछ बहुत सारे क्लासेस होते हैं, ठीक है। एंड कॉन्फ़िगरेशन, जैसे थीम कॉन्फ़िगरेशन है कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला रखना है या फिर लाइट थीम रखना है, ऐसा, ठीक है। अब जब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे सब कुछ करना है, ठीक है, पहले टाइम जब मुझे मालूम पड़ा तो बहुत खुश हुआ मैं, ठीक है। अब मैं लेके बैठा मेरा पेन एंड पेपर, ठीक है। और हाँ, मेरी एक आदत है, जब भी मेरे पास कोई भी काम आता है ना, मैं बुक और पेन लेके बैठता हूँ पहले। आप लोग क्या करते हो, कुछ काम है सीधा लैपटॉप खोलो और काम चालू, राइट, वैसे मैं करता था, फिर मालूम पड़ा ये गलत है। तो मैं लिया बुक और पेपर, सॉरी पेन एंड पेपर, एंड फिर मेरी हालत कुछ ऐसी थी, बहुत सोचा मैंने, बहुत। अब यकीन करोगे मैंने 1 हफ्ते डाले सिर्फ सोचने में कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि पिछले साइड पे देखा हमने कितना सारा चीज है ना, तो वो सारी चीजें तो आगे भी होगी, अब उसको रिप्लेस कैसे करूं मैं। तो मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया, मेरा प्लान बनाया अच्छे से, मैंने प्लान सबमिट किया सबको और सब खुश हो गए, यार सही है विवेक, हम तो 1 महीने में सब काम खत्म कर देंगे। और आप यकीन मारोगे, आज उसको 6 महीने हो गए एंड अगले महीने हम उसको रिलीज करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम लोग वही सीखने वाले कि मैंने कौन सी गलती की मेरी प्लानिंग में, ठीक है। अब ये जो माइग्रेशन है, इसको आप इस तरह समझो कि अगर आपके पास एक वेब ऐप है, ठीक है, वेबसाइट है, आपको अगर उसका एंड्रॉइड ऐप बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसका आपको कुछ और बनाना है, कुछ भी और, आपका कोई भी एक ऐप है उसको आपको किसी और चीज में बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, ये पूरा उसके लिए है, ठीक है। मेन सेंटर में फ्लटर होगा, लेकिन आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो,
ठीक है, कूल। तो अभी जब मैंने प्लान बनाया तो मेरे पास 3 चीज रेडी हुई, ठीक है, कि जब मैं मेरा ऐप कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, माइग्रेशन कन्वर्शन इस टाइम पर एक ही है, तो जब भी मैं ऐप कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन होगा फुल्ली कन्वर्जन। फुल्ली कन्वर्जन मतलब अभी जो ऐप का डेवलपमेंट हो रहा है उसको रोक दो और नया चालू करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, अभी ये डेवलपमेंट वगैरह से क्या फर्क पड़ रहा है, चालू करते ना, आप सब लोग ये सोच रहे हो, हाँ तो गलत है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस चल रहा है ऐप के ऊपर, इसको कैसे रोक सकती है वो, राइट। तो आपको बिजनेस के साथ में आपका टेक वाला काम करना है, तो ये चीज तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि उस ऐप पे ऑलरेडी 20 लाख लोग हैं, तो उसका डेवलपमेंट तो हम नहीं रोक सकते, ठीक है। तो फुल्ली कन्वर्जन मेरे लिए नहीं था, बट अगर आपके पास कोई ऐप है जिसके अंदर 3 से 4 फीचर है तो आप इसके लिए जा सकते हो। करंट डेवलपमेंट छोड़ दो, जो भी है एंड्रॉइड आईओएस ले लो, रिएक्ट ले लो, अगर कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसको रोक दो और आपका जो नया टेक्नोलॉजी है यहाँ पर फ्लटर, उससे स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड कन्वर्जन, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरा करंट ऐप तो है ही, अब मेरा नया चीज मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ दिख रहा है आपको 2 बड़े बड़े आइकन दिख रहे हैं एंड्रॉइड और एप्पल के, और उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लटर के आइकन दिख रहे हैं, है ना। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आपका जो करंट ऐप जो इस टाइम पर एंड्रॉइड में है या आईओएस में, वो वैसा का वैसा रहेगा, बट जो नई चीजें हैं वो सब फ्लटर बन के आपके ऐप में घुसेंगे, ठीक है ना। ये अमेजिंग चीज कि आपने जो करंट चीज है उसको बिना हैम्पर किए, बिना प्रॉब्लम में डाले, आपने उसमें नई चीज डाल दी, राइट। एंड ये एक बेस्ट फीचर था जिसके लिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं करूंगा फ्लटर, ठीक है। इसका मतलब जो मैं कर रहा था वो तो मैं कर ही रहा हूं, मैं नया चीज में कर सकता हूं। तो इसके फायदे क्या हुए, मेरा बिजनेस, जो कंपनी का बिजनेस है वो चल रहा है, नया फीचर, नया यूजर एक्सपीरियंस, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। एंड धीरे धीरे जैसे मैंने 1 फीचर कर दिया, 2 फीचर कर दिया, तो धीरे धीरे मैं माइग्रेशन की तरफ बढ़ रहा हूं, राइट। 10%, 20%, 30%, कूल। तो ये था अपना जब मैंने एंड्रॉइड आईओएस के अंदर फ्लटर डाला, ठीक है। एक दूसरा चीज भी है कि आप फ्लटर के अंदर में एंड्रॉइड आईओएस डाल सकते हो, ठीक है। ये किसके लिए जरूरी है, जिनके पास 7 या 8 फीचर है, ठीक है, जिनका फॉर एग्जांपल लेट्स से पेपर फ्राई, ठीक है, पेपर फ्राई का मेन बिजनेस मतलब मेरे हिसाब से AR VR पे, एंड लेट्स से कि पेपर फ्राई डिसाइड करता है कि हम यूज करेंगे फ्लटर, तो वो क्या कर सकता है, फ्लटर पे ऐप बना सकता है, बट उसका मेन बिजनेस जो था जहां से आ रहा है एक्चुअल जो काम है AR VR, वो नेटिव में रख के फ्लटर में डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे देख रहा फ्लटर के छोटे बड़े आइकन्स, मतलब ये ऐप फ्लटर का है, और एंड्रॉइड है इसके छोटे छोटे आइकन, मतलब हमने अब एंड्रॉइड प्रोजेक्ट को हमारे फ्लटर ऐप में डाला है, मतलब ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप माइग्रेशन के लिए जाओगे या जब भी आप ये सोचो कि क्या मैं फ्लटर यूज कर सकता हूं मेरे बिजनेस के लिए, तो उसका जवाब है यस। और अगर दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या करंट बिजनेस रोकना पड़ेगा, उसका आंसर है नो। इतना क्लियर है, अप्रोच समझ में आ गया, ठीक है। अभी ये बेसिक चीज है, ठीक है, ये अगर ये समझ में आ गया बाकी चीजें आसान हो जाएंगी आप लोग के लिए। अब माइग्रेशन प्लानिंग पे बात करते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये मैं हूं है ना, 1 हफ्ते मैंने यही किया, पूरा प्लान रेडी किया, सब कुछ रेडी, हाँ भाई ये ऐसे 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 करेंगे, मेरा टाइमलाइन 1 महीने का है, हाँ सब लोग कर लेंगे, ठीक है। जब मैं प्लान करा था मेरे पास कुछ चीजें आई, फॉर एग्जाम्पल ये 4 मेन चीजें, कि ये 4 चीजों पे अगर मैंने फोकस किया तो मेरा माइग्रेशन बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। एंड जो हुआ भी, टाइमलाइन आगे गया क्योंकि मेरा एस्टिमेशन रॉन्ग था, ठीक है, बट यही 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक आध चीज ऊपर नीचे हो सकती है, बट ये 4 चीज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, फर्स्ट थिंग इज बिल्ड कोर फंक्शनलिटीज, ठीक है। अगर आप एक ऐप बना रहे हो तो क्या आपको ये कोर फंक्शनलिटीज नहीं चाहिए, नेटवर्क एपीआई कॉल सब कुछ चाहिए, राइट। तो जब आप फ्लटर में माइग्रेट करोगे तो आपको ये सारी चीजें फ्लटर में भी चाहिए, राइट। तो अगर आप फुल्ली कन्वर्जन के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये करनी है, ठीक है। फीचर वीचर बाद में बना लेंगे, सबसे पहले ये करनी है हमको, ताकि मेरा बेस रेडी हो जाए जिसके ऊपर हम फीचर बना पाए, राइट। अगर आप हाइब्रिड कन्वर्जन के लिए जा रहे हो जहां पे आपका मेन एंड्रॉइड है, इसका मतलब आपका ये चीज पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो वहां पे आप इसको स्किप कर सकते हो अभी के लिए, बाद में यूज कर लेना। समझ में आया आपको, बेस समझ में आ रहा, राइट। बहुत ही सिंपल है, कुछ हार्ड चीज नहीं है। हो सकता है आपको ये चीज मालूम भी हो, ठीक है, आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज मालूम होगा, तो मैं सिर्फ उसको उठा के बाहर ला रहा हूं, ठीक है। तो हाँ,
पहला हो गया कि कोर बना लिया हमने, अब उसके बाद हम बनेंगे प्रोडक्ट फीचर्स। ठीक है, प्रोडक्ट फीचर्स क्या हो सकते हैं? आपका होम पेज हो सकता है, लॉगिन हो सकता है, स्टोरीज हो सकती है जैसे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, प्रोफाइल हो सकता है, आपके ऐप में पेमेंट का सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स। एक बार कोर रेडी हो गया तो आप फीचर्स पे जा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग फिर से अप्रोच के बारे में बात करते हैं। अगर फुल्ली कन्वर्जन है तो आपने कोर बना लिया ऑलरेडी, इसके ऊपर काम कर लो, राइट। अगर आपका हाइब्रिड है, इसका मतलब आप सबसे पहले ये कर लोगे। तो लेट्स से कि जेस्ट मनी का जो ऐप है उसके अंदर हम पेमेंट करके कुछ नई चीज ऐड कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, एंड्रॉइड ऐप ऐसे रखूंगा, मैं पेमेंट वाला जो चीज है वो फ्लटर ऐप बनाऊंगा और उसमें डाल दूंगा, है ना। मेरा दोनों काम हो रहा है, बिजनेस भी चल रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, कन्वर्जन भी हो रहा है। तो ये वो पार्ट है। ठीक है, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला ना मेरा 1 महीने से 7 महीना हो गया, यही है, वही है। बाकी चीज मेरे लिए हार्ड नहीं थी, बाकी चीजें सही थी, बाकी चीजें मेरे हाथ में थी, ये मेरे हाथ में नहीं था। ठीक है, अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कैमरा प्लगइन। अच्छा, प्लगइन मालूम है सबको? ठीक है, प्लग इन सिंपल। ठीक है, जैसे स्पेसशिप में होता है, ठीक है, कि आपने रॉकेट थ्रस्टर ऐड किया, निकाल दिया, आपको दूसरा थ्रस्टर ऐड करना, आप कर दो। तो बेसिकली आपके ऐप के अंदर आप कुछ भी डालो, निकालो, आपके यूज केस के हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेजर पे सबको मालूम है, ठीक है, तो रेजर पे एक पेमेंट गेटवे कंपनी है। अगर आपको अपने ऐप में पेमेंट गेटवे डालना है तो आप रेजर पे का प्लगइन डालोगे अपने ऐप, ठीक है, और फिर उसको कॉल करके, हाँ भाई ये 10 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, 100 रुपए का पेमेंट कर ले, राइट। तो मेरे केस में क्या था, मैं ऐसे कम से कम 12 प्लगइन यूज कर रहा था, एंड आउट ऑफ 12 प्लगइन मेरे पास सिर्फ 3 प्लगइन फ्लटर में रेडी थे। और मैंने क्या सोचा, बाकी भी तो बन जाएंगे ना, कौन सी बड़ी चीज है, बट ये गलत था। ठीक है, वही जो बाकी के 9 प्लगइन थे ना, उन्होंने मेरा माइग्रेशन खींच लिया 6 और महीने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास प्लगइन नहीं है तो क्या आपको मालूम है आप फ्लटर में प्लगइन बना सकते हो? यस, नो? अगर आपको नहीं मालूम था तो उसका आंसर यस है, आप फ्लटर में कोई भी प्लगइन बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेमेंट की प्लगइन मेरी कंपनी मैंने बनाई हुई है। ठीक है, एक और प्लगइन है जो ओपन सोर्स नहीं, वो भी मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब आप रुके नहीं हो, बट अगर आपने प्रॉपरली प्लान नहीं किया है तो टाइम ज्यादा लग सकता है। ठीक है, तो फिर से एक बार बोलता हूं कि आपके एप्लीकेशन में आप मल्टीपल प्लगइन्स यूज कर रहे होगे। ठीक है, एग्जांपल कैमरा प्लगइन, मैप प्लगइन, पेमेंट प्लगइन, फिटनेस ऐप है तो फिटनेस प्लगइन, और अगर वीडियो वाला ऐप है फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग है, उसमें वीडियो प्लगइन, कोई यूट्यूब जैसा ऐप है उसके अंदर भी कोई वीडियो प्लगइन होगा। ठीक है, तो जब भी आप माइग्रेशन कर रहे हो मेक श्योर कि आपके पास वो प्लगइन रेडी हो। ठीक है, अगर रेडी नहीं है तो आपके माइग्रेशन प्लान में उसको बिल्ड करने का टाइम ऐड होना चाहिए। ठीक है, हम लोग प्लानिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कूल, एंड में समझ में आ रहा है? कुछ हार्ड नहीं है ना ये चीज, फिर भी ध्यान दो थोड़ा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और इसी पर मैंने बहुत सारा काम किया है। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग क्यों आपको बताता हूं मैं। ठीक है, सो गूगल पे यूज किया सबने? क्या आपको पता है ये फ्लटर में बना है? किसको पता था फ्लटर में बना हुआ है? ठीक है, जिस लोगों ने हाथ नहीं उठाया, गूगल पे फ्लटर में बना हुआ है। अगर आपको चेक करना ना कौन सी ऐप फ्लटर में बनी है, तो ऐप ओपन करने का एक बार स्लाइड करो 1 उंगली से, ठीक है, फिर स्लाइड करो 2 उंगली से। अगर आपको स्क्रॉल में डिफरेंस दिख रहा है स्पीड का, मतलब ऐप फ्लटर पे बना हुआ है। ठीक है, चाहिए तो गूगल पे चेक कर लेना आप। ठीक है, एंड ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले वाला जो गूगल पे का ऐप था वो था एंड्रॉइड में, और iOS में था स्विफ्ट में। ठीक है, अगर आपने फ्लटर ऐप जब गूगल पे ने बनाया और उसको रिलीज किया और आपने डाउनलोड किया तो आपका पुराना ऐप रिप्लेस हो गया, राइट? क्या आप उस टाइम पे अगर लॉग आउट हो जाते तो आपको अच्छा लगता? नहीं ना। तो ये कॉम्पेटिबिलिटी उसी के लिए कि आपका पुराने ऐप से नया वाला ऐप तो कॉम्पेटिबल होना चाहिए ना, नहीं तो यूजर बोले क्या बेकार बनाया यार, वो ऐप स्टोर पे जाएगा बोलेगा बैड डेवलपर्स। अच्छा, किसने किया ऐसा? बैड डेवलपर्स जाके लिखा प्ले स्टोर पे। देखो कुछ हाथ दे। कूल, एक मुझे भी आया था। उसका रीजन था कि उसको पता ही नहीं कि वो फीचर है कहां पे। अब मेरी गलती थोड़ी ना, वो तो प्रोडक्ट मैनेजर की गलती है ना, वहां नहीं रखा उसने। तो कूल, तो कुछ एग्जांपल है कॉम्पेटिबिलिटी के। पहला ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन,
कि अगर यूजर लॉग्ड इन है तो नया ऐप के बाद भी वो लॉग्ड इन होना चाहिए, ठीक है, ये मेक श्योर करना है अपने को। उसके बाद लोकल डीबी डेटा, अगर आपके ऐप में ऑलरेडी कुछ डेटा है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, लेट्स से कल को व्हाट्सएप फ्लटर में आता है, तो आप चाहते हो कि आपके चैट क्लियर हो जाए, चाहिए ना, तो वो लोकल डीबी है। फिर यूजर इंटरफेस, गूगल पे, आपको पता भी नहीं था कि गूगल पे कब रिप्लेस हो गया, है ना, वो यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस है। अगर अच्छा हो रहा है तो ठीक है, गंदा नहीं होना चाहिए, राइट, समझ रहे सबको? हाँ ठीक है, कूल। तो अब अच्छा ठीक है, अभी तक अपने को समझ गया कि प्लान क्या है। कोई डाउट है प्लान में? तो वो जो पहले वाला स्लाइड था ना, हाँ, इसी सब चीजों में मैंने एक हफ्ता वेस्ट किया था, ठीक है। उसके बाद अगर ओवरऑल मेरा प्लानिंग पे कितना टाइम गया अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो मोर देन 3 वीक्स है, ठीक है। फिर इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर टॉक दूंगा, ठीक है, वीडियो बनाने वाला हूँ, आर्टिकल लिखने वाला हूँ, ठीक है, एक प्रॉपर माइग्रेशन फ्रेमवर्क रेडी करने वाला हूँ जहाँ पे आप ऐड करो कि मेरे ये फीचर्स है, ये प्लगइन्स मेरे पास है, ये प्लगइन्स मेरे पास नहीं है, इसका ये कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, ठीक है। फिर वो आपको एक एस्टिमेटेड टाइम देगा, ठीक है, फ्रेमवर्क, कि हाँ ठीक है भाई तेरे को लगेगा 6 महीने या 5 महीने 4 महीने, ठीक है। तो उसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा कि हाउ टू फाइंड अ अप्रोच, जो मैंने बताया आपको, सिंपल 3-4 है तो ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ठीक है। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन के साथ वो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरा 3 हफ्ता वेस्ट हुआ है इसलिए मैंने चाहता कि आपका वेस्ट हो, ठीक है, कूल। और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो तुम लोग ये सोच रहे हो यार मेरी जरूरत ही नहीं इसकी, है ना, ये सोच रहे हो ना, एक गलत है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक हैकाथॉन में गए हो, अच्छा आप लोगों में से कौन हैकाथॉन करता है? जो नहीं कर रहे हो करो प्लीज, ठीक है। तो आप लोग हैकाथॉन में गए हो, आपने एक प्रोजेक्ट बनाई है, लेट्स से स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब आपने वहां पे बनाया और आप जीत गए, अब आप दूसरे हैकाथॉन में जा रहे हो, ठीक है। अब वहां पे उन्होंने बोल दिया कि यार पहले तो तुमने फ्लटर में बनाया था, यहां पर मुझे नेटिव पे ही चाहिए, तब आपके ये काम आएगी कि मैंने तो ऑलरेडी काम किया हुआ है तो क्यों ना उसको माइग्रेट कर दो, है ना, नहीं तो फिर से नया बनाओ, सब लिखो, क्यों ना इसको यूज कर लो। तो इन सब चीजों में काम आएगा। और अगर आपकी खुद की कंपनी है तो आपके लिए तो ये बेस्ट है, ठीक है। इसके पहले एक मैम ने अपना इंटरव्यू दिया था, ठीक है, तो अगर उन्होंने उसके अंदर अपना कोई ऐप माइग्रेट करने का सोचा तो ये उनके लिए है। और अगर आप उनके लिए काम कर रहे हो या उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वैसे किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कूल, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, तो मेरे पास कुछ लिस्ट है, ठीक है, जो आपको पता है कि अच्छा सॉरी, हाँ ये आपको पता है कि आपको माइग्रेशन क्यों चाहिए होगा। और अगर आप लोगों में से जो लोग फ्लटर में नए हैं, उनके बहुत सारे काम आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, किसी को पता है प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है? यहां पर कितने लोग इनको प्रोडक्ट मैनेजर बनना है? तो आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है, क्योंकि मेरी कंपनी में मैं नहीं पीस रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट मैनेजर पीस रहा है। बोल रहा है साले तूने 6 महीने ले लिया है, नो आउटपुट, क्या बिजनेस ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए कि आपको फ्लटर क्यों चूज करना चाहिए, ठीक है। पहला चीज बेटर यूआई यूएक्स, ये हमको पता है, फ्लटर का ऐप बनाओगे आपको यूआई यूएक्स अच्छा आने वाला ही है, नो डाउट। अगर आपको पता करना है तो जेस्ट मनी का एंड्रॉइड ऐप और iOS ऐप कंपेयर कर लेना, ठीक है। दूसरा फास्टर एप्स, क्योंकि फ्लटर आपके नेटिव पे चलता है, इसका मतलब परफॉर्मेंस के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, ठीक है। आपका एप्लीकेशन हमेशा फास्टर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। जो भी यहाँ पे जो सोच रहे कि फ्लटर क्यों यूज करूं मैं या फ्लटर ही पे क्यों सीखूं मैं, तो आप लोगों के लिए ये भी है, आप ये भी समझ सकते हो क्यों, ठीक है। उसके बाद तीसरी, आप कोई भी स्क्रीन ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐप बना रहे हो खुद की, ठीक है, यहाँ पे कौन है जिसको खुद का स्टार्टअप खोलना है? वाह, आप लोग पहले खुद के लिए तालियां बजा लो, सब लोग प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आप खुद का ऐप बना रहे हो, स्टार्टअप है तो खुद का ऐप बनाओगे, तो आप ये भी चाहोगे ना मेरा ऐप हर जगह हो, आईपैड पे हो, टैबलेट्स पे हो, मोबाइल पे हो, छोटे फोन पे हो, सैमसंग के फोल्डेबल पे हो, राइट। तो उस टाइम पे फ्लटर आपके काम आएगा। तो ये फ्लटर बोलता है, एंड ये ट्रू भी है, कि अगर आप फ्लटर से ऐप बनाते हो, आपका फ्लटर ऐप हर स्क्रीन पे अच्छा दिखेगा, गिवन दैट आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। उसके बाद इजी एंड फास्ट रिलीजेस, ये जिन लोगों ने हाथ उठाया अभी, आप लोगों के लिए फिर से ही है,
ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर्स प्लस स्टार्टअप्स प्लस कंपनीज। आप ये नहीं चाहते हो कि आपका एप्लीकेशन आज आप बनाओ फिर कभी और रिलीज हो, है ना, आप चाहते हो कि फटाफट बनाओ फटाफट रिलीज हो। तो फ्लटर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे जहाँ पे आप डेवलपमेंट फास्ट कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें ऑटोमेट कर सकते हो, इसकी वजह से आपका डेवलपमेंट तो हो जाता है फटाफट एंड रिलीज भी फटाफट हो जाता है। ठीक है, कूल। सेव मनी, जिन लोगों ने हाथ उठाया ना, ठीक है, अगर आपको पैसा बचाना तो आप फ्लटर पे ही करोगे। ठीक है, अब मैं आपको रीजन बता देता हूँ क्यों। तो रीजन ये है कि फ्लटर के जो डेवलपर्स है आपको एक ही चाहिए, लेकिन अगर आप नेटिव पे करो तो आपको दो चाहिए, है ना, ये पता है सबको, राइट। तो 2 जन का पैसा बच गया, प्लस रिलीज फास्ट हो रही है, आप मार्केट में जल्दी जा रहे हो, आप प्रोडक्ट फटाफट रीट्रेड कर पा रहे हो, तो आप अपना मार्केट में पैसा बचा रहे हो। ठीक है, तो यस, आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो गिवन दैट आप अच्छे से इंप्लीमेंट करो। ठीक है, एंड में समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप सब लोग के लिए ये चीज, आप सब लोगों के लिए, कि अगर आप कभी ये सोचो, ठीक है, कि मैं फ्लटर क्यों सीखूं या मेरा जो पुराना ऐप है वो फ्लटर पे क्यों बनाऊं, तो ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, एक और डिस्क्लेमर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, अगर आप इस क्वेश्चन में हो कि मैं फ्लटर क्यों सीखूं, आप 3rd ईयर में हो, 2nd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, आपके सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो आप सीख सकते हो, जो आप कर सकते हो, जिसमें आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो इसके अंदर वो भी क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज फास्टर डेवलपमेंट। जब मैंने फर्स्ट टाइम फ्लटर यूज किया था तो मैं हिल गया था, क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद मैंने सबसे पहले की एंड्रॉइड डेवलपमेंट। मैंने कॉलेज में कुछ नहीं उखाड़ा, बता देता हूं आपको। कॉलेज में कॉलेज में मैंने मिनी मिलिशिया खेला है, क्लैश ऑफ क्लैंस खेला है। मेरा क्लैश ऑफ क्लैन TH11 पे था, सोचो कितना खेलता था, वो भी 3 अकाउंट। तो मैंने कॉलेज में कुछ नहीं किया, एंड जब कॉलेज से बाहर निकला तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहा था मैं। ठीक है, तो एंड्रॉइड में कर रहा हूँ डेवलपमेंट, मतलब वो कुछ, और मेरे पास लैपटॉप था बहुत ही गंदा। ठीक है, मतलब मैं ऑफिस में गुस्सा था, बैग रखता था, लैपटॉप खोलता था, उसको चालू करता था और फिर मैं आता था फ्रेश होने के लिए, क्योंकि हमारे मुंबई में लोकल होता है जिसमें आप घिस के जा रहे हो। ठीक है, भले आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन के घर से निकले हो, उसकी तो वाट लग चुकी होगी। ठीक है, तो आप जाओगे फ्रेश होने। अब फ्रेश होके आऊंगा मैं, लोगों से बात करूंगा, आधा घंटा हो जाएगा, फिर मेरा लैपटॉप चालू करेगा एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, अब उसके बाद मैं करूंगा मेरा प्रोजेक्ट रन, कम से कम 5 मिनट लगता था रन होने में, कम से कम 5 मिनट। और गेस क्या करता था मैं उस टाइम पे? क्लैश ऑफ क्लैंस पे एक और वॉर कर लेता था मैं। तो ये सब थी कि ये सारे स्ट्रगल्स थे जब मैं एंड्रॉइड यूज करता था। जब मैंने फ्लटर किया तो सबसे पहला ये था कि मैंने यार फ्लटर रन किया मैंने, हाँ टाइम तो लगा उसमें, लेकिन उसके बाद मैं जब भी दूसरा कुछ रन कर रहा हूँ, है ना, हॉट रिस्टार्ट हॉट रिलोड मालूम है ना सबको, तो विद इन अ सेकेंड हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मतलब हंसू रो मैं क्या करूं, ये चीज कहाँ थी अभी तक। मतलब मैं 5-5 मिनट 10-10 मिनट इस चीज के लिए रुका था जो यहाँ पे 1-1 सेकंड में हो रही है। एंड उसका फायदा क्या हुआ कि उस टाइम में मेरा खुद का स्टार्टअप भी कर रहा था, जो मैंने अभी के लिए बंद कर दिया है। ठीक है, तो मैं उसके लिए ऐप बना रहा था, तो मैंने जो एंड्रॉइड में ऐप बनाई थी कॉटलिन में, उसके लिए मुझे लगा 21 डेज। सेम ऐप मैंने फ्लटर में बनाया 14 डेज में। तो ये रीजन था मेरा फ्लटर चूज करने का, और ये वही रीजन है। तो अगर आप फिर अभी भी सोच रहे हो कि आपको फ्लटर क्यों चूज करना चाहिए, आई गेस वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दूसरी चीज सिंगल कोड बेस, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ही हार्डकोर डेवलपर था, बट एक कंपनीज के लिए अगर आपके पास बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक ही कोड बेस हैंडल करो। ठीक है, कौन कौन यहाँ पे गिटहब यूज करता है? अच्छा, कौन नहीं यूज करता है? तो आपके लिए सिर्फ एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, जब मेरी पहली कंपनी में था मैं ICICI लोम्बार्ड में, मैंने वहां पर एक बंदे को रिजेक्ट कर दिया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो गिट यूज नहीं कर रहा था, वो ड्राइव यूज कर रहा था। यार मतलब ये क्या है, तू जिप करके भेज रहा है उसको ड्राइव पे, तो प्लीज यूज करो। और आपके पास अगर गिटहब है, इसका मतलब आपके पास एक प्रोजेक्ट के लिए 2 अलग अलग रेपो, एक प्रोजेक्ट के लिए 2 अलग अलग पाइपलाइन, एक प्रोजेक्ट के लिए आपको 2 अलग अलग कमिट्स देखने पड़ेंगे, हाँ भाई क्या हुआ था। लेकिन अगर सिंगल कोड बेस है तो आप वो एक साथ कर सकते हो। अगेन टाइम मनी सब बचता है, एफर्ट भी बहुत बचते हैं। ठीक है,
एंड यस, ऑलवेज ओपन सोर्स शायद आप सोचते होगे आपके काम का नहीं है, बट अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है तो आपको एक अच्छे डेवलपर का कोड पढ़ना होगा, राइट? जैसे सहायक ने बताया था, आपको रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ओपन सोर्स है, तो इसका फायदा ये होता है कि आप कभी भी जाके फ्लटर इंजीनियर्स जो गूगल में काम कर रहे हैं उनका कोड पढ़ सकते हो। और ये मुझे बहुत हेल्प किया, जब भी मुझे ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है उस पर्टिकुलर चीज पे, पहले मैं उनका कोड पढ़ता हूँ कि इन्होंने कैसे ऑप्टिमाइज किया, ठीक है, और फिर उसको मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ एंड फिर उस पर मैं टॉक देता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म योर वर्कफ्लो, ये कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना ऐप बना दिया है, ठीक है, आप एक वर्कफ्लो सेटअप कर दो कि मैं बना दिया, पुश करूंगा मैं, ऑटोमेटिक रिलीज होना चाहिए। तो ये सब चीज फ्लटर के साथ इजीली हो सकती है, और भी लोगों के साथ मतलब और भी प्लेटफॉर्म के साथ हो सकती है, ठीक है। तो ये एक और रीजन है फ्लटर चूज करने का, ठीक है। यप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आज हम लोग यहां पर क्यों बैठे? कम्युनिटी, राइट? तो एक बार जीडीजी इंडोर के लिए शाउट और तालियां जोर से हो जाए। ये वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है जहां पर मैं आया हूं, इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतने ज्यादा लोग, ठीक है, और इतनी डाइवर्स कम्युनिटी मैंने, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। तो और ये जो फोटो है इसमें आप आयुष को देख सकते हो कहीं पे। हाँ, तो ये हमारा फ्लट, इसके अंदर बहुत सारे लोग फ्लटर वाले, ठीक है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से फ्लटर में जॉब्स इंडिया में सबसे ज्यादा है, फ्लटर के डेवलपर्स इंडिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसका रीजन है ये फ्लटर कम्युनिटी। ये कंटेंट बनाते हैं, शेयर करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। कल आयुष ने इतना चिल्लाया, उसको कुछ मिला क्या? नहीं ना। तो ये है कि कम्युनिटी है, बेस्ट कम्युनिटी है, और डॉक्यूमेंटेशन भी बेस्ट है। आप जाके पढ़ोगे, आपको लगा यार आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक, हाउ टू इंस्टॉल फ्लटर लाइक दिस, हाउ टू यूज क्लास लाइक दिस, हाउ टू ऐड विजिट्स लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज में हो, आपको लगता है कि जावा का डॉक्यूमेंटेशन बहुत गंदा है या फिर बहुत अच्छा है, तो आप जाकर फ्लटर का पढ़ना, आपको समझेगा अच्छा क्या होता है, ठीक है, कूल। अब तक हमने ये समझा कि माइग्रेशन क्यों करना है, ठीक है, कैसे करना है, कैसे मतलब प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है। कोड हमने नहीं देखा है, कोड थोड़ा लंबा है, कभी और करेंगे हम लोग, ठीक है। या फिर मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, कभी तो बनाऊंगा वीडियो में, जनवरी फरवरी के आसपास, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अभी मैं थोड़े दिन पहले गूगल के डेवलपर से बात कर रहा था, वो हमारा प्रोडक्ट मैनेजर है, ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि विवेक, आपको माइग्रेशन रिक्वायरमेंट थोड़ा और अच्छे से समझानी पड़ेगी। तो मैंने बोला ठीक है, और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि आपको चाहिए होंगे डेवलपर्स, ठीक है। अगर आपके पास फ्लटर डेवलपर नहीं है तो आप माइग्रेशन कर सकते हो नहीं, लेकिन अगर माइग्रेशन करनी है तब क्या करोगे आप? तब आप ट्रेनिंग दोगे अपने डेवलपर्स को। फ्लटर इतना इजी है कि आप 2 हफ्तों में समझ जाओगे आपको करना क्या है, 2 हफ्तों में। तीसरे चौथे हफ्ते में आपको समझ जाएगा आपको कैसा कोड लिखना है, उसके 2 हफ्ते में आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छा कोड कैसा लिखना है, फिर उसके बाद आप अटकोगे तो आप कम्युनिटी के पास तो हो, राइट। तो अगर आपके पास डेवलपर्स नहीं है तो आपको ट्रेन करना है, ठीक है, क्योंकि हमको समझ में आ गया माइग्रेशन करना क्यों है, समझा। और स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए कि मार्केट में फ्लटर डेवलपर्स की बहुत ही ज्यादा कमी है। मैं कहीं भी जाता हूं, लोग मुझे ये बोलते हैं कि यार मुझे फ्लटर डेवलपर मिल नहीं रहे, अब मैं करूं क्या? तब वो स्विच हो जाते किसी और चीज में, लेकिन फिर 3-4 महीने बाद फिर से आते हैं फ्लटर पे, क्योंकि उनको फायदा मालूम है, ठीक है। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि आपको मोबाइल डेवलपमेंट में क्या चूज करनी है तो फ्लटर, ठीक है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट, ये आपको मालूम है ना, इसने मेरा कितना टाइम खराब किया है, 6 महीना, ठीक है। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट, अगर आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हो, अगर आपको नहीं बनाने आता है तो आप सीख सकते हो, या फिर भी लगता है कि आपको बहुत हार्ड है, आप कंपनी को रीच आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रेजर पे, ठीक है, उसको हमने रीच आउट किया कि आप क्या अपना फ्लटर प्लगइन बना सकते हो, हाँ, उन्होंने 4 महीने में हमको प्लगइन बना के दिया, मतलब दिया, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी एक्सटर्नल फ्लटर डेवलपर से बनवा सकते हो। इजी है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती है,
ठीक है, सिर्फ कम्युनिकेशन का काम है प्लगइन बनाने में, ठीक है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंपनी आपकी बड़ी है, रेस्ट मनी जैसे जहाँ पे आपके पास 600 से ज्यादा लोग हैं काम कर रहे हो, तब आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। तो मेरी कंपनी में मेरे अंडर अभी 13 फ्लटर डेवलपर है, 13। तो हमको प्रॉपर प्लान करनी थी कि हम कब क्या करने वाले, कौन क्या करने वाला है, कितने टाइम में क्या खत्म करेंगे, कितने टाइम में किसकी टेस्टिंग होगी, ठीक है। बट अगर ये सब एक बंदे को समझ में नहीं आ रहा है जिसका नाम प्रोडक्ट मैनेजर है, तो ये सब गंदा कर देगा। तो आप लोगों ने वो जोक देखा रहेगा ना कि डेवलपर काम कर रहा है और उसके बाहर एक बंदा ऐसा खड़ा है, वो प्रोडक्ट मैनेजर है। ठीक है, इसके बाद ये प्रोडक्ट मैनेजर लोगों के लिए कि अगर तुमको लगता है कि तुम माइग्रेशन करने वाले हो तो पहले ये रेडी करो। बार बार आके बोलने का नहीं, ये हुआ वो हुआ, अरे यार ये नहीं बताया वो नहीं बताया। ये काम आपका है क्या, मुझे बताओ कितना करना है, क्या करने का है, क्या नहीं करना है। अगर आपकी खुद की कंपनी है तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइग्रेट कर रहे हो या फिर आप खुद का ऐप बना रहे हो, आपके पास एक PRD रेडी होनी चाहिए, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जहां पे आप क्लियरली बोलो कि आपका फीचर क्या करने वाला है। अगर आपको एक्सटर्नल प्लगइन यूज कर रहे हो, पैकेज यूज कर रहे हो, तो वो कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कूल, बहुत थियरी है ना ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब ये अगर आपके कंपनी में कोई इंजीनियरिंग मैनेजर है, ठीक है, जैसे आयुष अपने कंपनी में इंजीनियरिंग मैनेजर है, तो ये उनको करना है। लेकिन अगर आपकी खुद की कंपनी है तो भाई आपको सब कुछ खुद ही करना है, ठीक है। तो ये वो है कि अगर आपके ऐप में 50 फीचर है, ठीक है, तो आपको भी लिस्ट बनानी है कि वो फीचर क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर वो कुछ एक्सटर्नल यूज कर रहा है तो वो कितना कॉम्प्लेक्स है, वो आपके पास है या नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही है क्यों जरूरी है? अभी तक ये वाला पार्ट क्यों जरूरी है, समझ में आ रहा है? पक्का? एक बार सब लोग हाथ दिखाओ जिसको समझ में नहीं आया। ठीक है, कूल। सो मेन काम यहां तक ही था मेरा, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते क्या है मेरे पास, क्वेश्चन आंसर। यस, मेरे पास 8 मिनट है, आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, मतलब अभी पूछा ही नहीं किसी ने। यस, आप बोलो, मेरे पास आ जाएगी आवाज। अच्छा, ओके, सो आवाज आ रही है मेरी? हाँ। सो मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा है एंड मुझे 2 साल हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करते हुए, कोटलिन यूज़ करके। एंड नाउ मैंने फ्लटर के बारे में थोड़ा पढ़ा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे स्विच कर लेना चाहिए। बट वही है कि मैं इसको ट्रायल एंड एरर करके सीखूं, जैसे मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो सीखा था कि रैंडमली कोई भी प्रोजेक्ट उठा लिया एंड उस पर सीख के एरर करके फिर मैंने कोडिंग सीखी। समझ गया मैं आपको क्वेश्चन। अब इसको इसी अप्रोच में लेते हैं जो मैंने बोला था कि ये बेस है आपके हर चीज में। तो आप माइग्रेट कर रहे हो एंड्रॉइड से फ्लटर सीखने में, ठीक है। तो पहली चीज आपको एंड्रॉइड रोकनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने एंड्रॉइड सीख लिया तो आपके लिए फ्लटर बहुत हार्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी एंड्रॉइड डेवलपर था ना, 5-5 मिनट तक वेट कर रहा था, तो मैं तो बहुत खुश हुआ। और मैं आपको बताऊं, मैंने सिर्फ 3 हफ्ते में फ्लटर सीख लिया था। और मैं बात कर रहा हूँ 2018 की, जब डॉक्यूमेंट्स मिलते नहीं थे। मैं आयुष को पिंग करता था व्हाट्सएप पे, भाई मैं यहाँ पे अटका, जरा हेल्प कर दे। तो ये उस टाइम की बात है, तब मुझे 3 हफ्ते लगे थे। आपको अभी भी नहीं लगना चाहिए वो टाइम। प्लस अब आप जब आपने ये क्वेश्चन पूछा ना कि क्या मैं कोई भी रैंडम प्रोजेक्ट बनाऊं, वो गलत है। मैं क्यों जल्दी सीख गया, क्योंकि मेरे सामने प्लान था, मेरी खुद की जो कंपनी थी, मुझे उसका प्रोडक्ट बनाना था जो ऑलरेडी कोटलिन में था, राइट। तो मेरे पास वो PRD वगैरह रेडी थे, मेरे बना के रखे थे मेरे पास। तो मुझे मालूम था कौन सी चीज कैसे कन्वर्ट करनी, किसका क्या सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नेविगेशन पता है एंड्रॉइड में कैसे करते हैं या फिर iOS में कैसे करते हैं, मैं गूगल करूंगा हाउ टू डू नेविगेशन इन फ्लटर, मैं उसको सीखूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा। अब मेरे दिमाग में चलेगा कि कंपैरिजन करूंगा मैं, ठीक है, मुझे ये आता था एंड्रॉइड में, ऐसा हो रहा है फ्लटर में। उस कंपैरिजन से अगर आपको कुछ आता है तो आप उस कंपैरिजन से आप इजीली सीख सकते हो, ठीक है। तो आप कोई रैंडम प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, आप वो प्रोजेक्ट बनाओगे जिसका आपने ऑलरेडी काम कर चुका है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। या तो यही एक बेसिक चीज है। अगर आपको कोई चीज पता है, फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदी आती है, राइट, अगर आप इंग्लिश आंख बंद करके सीखने जाओगे तो नहीं समझ में आएगा, आप ट्रांसलेट करके सीखते हो, राइट। और आपका ब्रेन भी उसी तरह काम करता है, तो आपको उसी तरह कोई भी नई चीज सीखनी है। यस। Hello, I'm Vijay. Hi, Vijay. I'm also a Flutter developer. Great. And oh,
एंड मैं भी आपकी तरह पहले एंड्रॉइड में काम करता था और फिर फ्लटर में स्विच हुआ. लास्ट 3 ईयर आई एम वर्किंग विद फ्लटर एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. एंड करेंटली हमारा प्रोजेक्ट एंड्रॉइड में था और हमने फ्लटर में बनाया एंड दे आर वर्किंग वेरी फाइन. वी आर वेरी हैप्पी विद दैट. बट वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि वी मेक इनटू अ डेस्कटॉप एंड वेबसाइट into a Flutter. So can we do that, and what the current condition for now? For website and desktop application. See, you can do that, right? WebSocket again is a concept. Website. अच्छा, website. Web application and desktop application. कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपका जो बिजनेस है वो वेबसाइट से ड्राइव हो रहा है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा. उसका रीजन आपको धनंजय भाई ने बता दिया है कि वेबसाइट के लिए जावास्क्रिप्ट बेस्ट है. ठीक, आप कोई भी दूसरे टूल से आप बना सकते हो. फ्लटर से आप वेबसाइट बना सकते हो, उसके अंदर आपका टाइम पैसा दोनों बचेगा. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस वहां से ड्राइव हो रहा है, तो मैं मना करूंगा. उसका रीजन ये है कि आप नहीं चाहते कि आपका कस्टमर किसी भी पॉइंट पे वहां पे अटका हो. मोबाइल ऐप से फ्लटर बेस्ट है, तो आप वहां पे जाओ, फ्लटर यूज करो. अभी फ्लटर स्टेबल है वेब पे, लेकिन मैं नहीं बोलता कि अगर आपका वहां पे बिजनेस ड्राइव हो रहा था आप उसको करो. आपका होम पेज है, नॉर्मल लैंडिंग पेज है, जहां से आप यूजर को अपने एप्लीकेशन पे ले जाओ, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे, तो ठीक है, तो आप यूज कर लो. ठीक है, लेकिन आपको लगता है आपका वहां से पैसा आ रहा है तो नहीं. Actually, it is a trading application, so we are converting into the website. मत करो. ट्रेडिंग है मतलब उसके अंदर बहुत सारा काम है और यूजर वहीं पे ट्रेड करने वाला, पैसा भरने वाला, निकालने वाला. मत करो. आप कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा नहीं. ठीक है, थैंक यू. वेलकम. अरे यहाँ पे मैं आ गया. अच्छा, वहाँ पे एक क्वेश्चन है. Hello, sir. I'm Tanu Jain. Hi. Sir, my question is that you mentioned that you needed to build many plugins for your app. So, can you suggest some resources which I can use to learn how to build plugins? I can suggest, but it's better that what I'll do, I'll curate a list. I have a list, but I will curate that and I will share that with the GDG organizers, and they can share that in Meetup group. Will that work for you? Yes, sir. Cool. Sir, one more question. As a developer, you know that the disadvantage of Flutter is that the app size is very large. Yeah. So as a developer, how do you deal with the large app size of the Flutter as compared to the native apps? Okay. So very simple thing and very basic thing जो हम लोग नेटिव में कर रहे थे वही चीज़ फ्लटर में भी करनी है. ठीक है, पहली चीज़, अगर आपके एसेट्स है, आपने PNG JPG यूज किया है जो 2-2 KB 4-4 KB 10-10 KB के, तो उसके जगह आप SVG यूज कर लो या फिर नेटवर्क से लोड कर लो. ठीक है, ये मेजर चंक है आपका जो फ्लटर में, सॉरी आपके ऐप में जो ऐप साइज बढ़ा रही है. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अपना एप्लीकेशन जो है उसको ऑब्सर्वेट करना पड़ेगा. इसका मतलब कि आपने प्रोगार्ड का नाम अगर सुना होगा एंड्रॉइड में, तो क्या करता है कि आपको, हाँ, मिनीफाई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो आपको मिनीफाई करना है ताकि आपका जो कोड साइज है वो कम हो जाए. ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक हर कोई इग्नोर करता है, आई गेस आपने नहीं किया होगा, कि रिडंडेंट प्लगइन्स, पैकेजेस या रिडंडेंट कोई भी चीज जो आपके ऐप में पड़ी है, इवन फीचर जो यूज नहीं हो रही है उसको भी निकालो. तो बहुत ही बेसिक है, जो काम करिए उसको निकाल दो और जो है उसको दबा दो. ठीक है, बस इतना ही है. हेलो सर, माय नेम इज मिर्त पवार. सर, आई वांटेड टू आस्क कि अगर आपको अभी आपकी पूरी एंड्रॉइड डेवलपर की जर्नी अगर स्क्रैच से चालू करनी होती, तो व्हाट आर सम इनसाइट्स फ्रॉम योर जर्नी दैट यू कैन सजेस्ट टू अस और रिसोर्सेस? यस, सो देखो, मेरा सबसे अच्छा फायदा क्या मालूम पूरे लाइफ में, कि मैं जहां पे भी गया मुझे कोई ना कोई सपोर्ट के लिए मिला. मेरे जब जर्नी स्टार्ट की तो मेरा मैनेजर बहुत अच्छा था, उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. तो मैं सिर्फ एंड्रॉइड नहीं सीख रहा था, मैं सीख रहा था कि एंड्रॉइड पे कोड कैसे करना है, एंड्रॉइड का इकोसिस्टम क्या है. एंड्रॉइड मैं साइकोलॉजिकली सीख रहा था. ठीक है, कि क्यों करना है, कैसे करना है, अगर ये है तो क्यों. अगर आपके पास हमेशा ये क्यों का आंसर है और आपके पास अगर एक क्वेश्चन है क्यों, तो आप इजीली सीख सकते हो. टाइम लगेगा लेकिन आप बेस्ट बनोगे. एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. रिसाइकलर व्यू अगर आप एंड्रॉइड वाले हो तो आपको मालूम होगा. ठीक है, रिसाइकलर व्यू मैंने 6 महीने तक सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. उसका रीजन था कि मैंने एक बार कर लिया था और मुझे इस पर टाइम नहीं देना था, जो गलत है. तो मैं डेली यूज करता, मुझे पता होना चाहिए ना क्यों. एंड आप यकीन करोगे, एक बार मेरे सीनियर ने मुझे बैठ के समझाया भाई क्यों, एंड बस उसके बाद से मुझे समझ गया. तो आपको क्यों मालूम होना चाहिए. ठीक है, फिर आपको कैसे मालूम पड़ जाएगा. और कोड याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ कोड याद नहीं करना है. अगर आपको इंटरव्यू में बंदा बोलता है कि आप गूगल यूज नहीं कर सकते आपके इंटरव्यू के लिए,
तो आप उधर इंटरव्यू मत दो, ठीक है? क्योंकि एज अ कोडर आपको ये नहीं याद करना कि कोड कैसे करना है, आपको ये समझ के रखना है कि प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है? इवन आप आज मैं, आयुष, पवन, भाविक सब लोग हैं यहाँ पे, पूछ लो कि आप गूगल यूज नहीं करते हो क्या? यस, हम करते हैं, बस हमको पता है कि कहां से क्या उठाना है, ठीक है? सो आई गेस टाइम तो हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चंस बाहर ले लेंगे, बस ये मुझे 30 सेकेंड और चाहिए, ठीक है? जो मैं ये बोल रहा था कि देखो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है? तो मेरा जर्नी कुछ ऐसा है, मैं बैंगलोर से पहले दिल्ली गया हूँ कल, फिर दिल्ली से इंदौर आया हूँ, और आज अब इंदौर से मुंबई जाऊंगा मैं। 3 दिन कंटिन्यू ट्रेवल करो, कंटिन्यू टॉक दे रहा हूँ, लेकिन मुझे मजा आ रहा है, मैं सोया नहीं हूँ रात भर, लेकिन मुझे मजा आ रहा है, ठीक है? यही एक चीज है जो आपको समझनी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आप वो करो जो आपको पसंद है। मैं कोडिंग करता हूं, ठीक है, मुझे वहां से सैलरी आ जा रही है, अब ये वो चीज है जहां से मुझे पैसा तो नहीं मिल रहा लेकिन मुझे मजा आ रहा है, और मैं अगर मेरे काम के साथ ये कर पा रहा हूं या फिर मेरे काम के अंदर ये कर पा रहा हूं, तब मैं खुद को बोलता हूं कि मैं सक्सेसफुल हूं। कूल? सॉरी ये माइक नहीं है। कूल, सो यस, दैट्स ऑल अबाउट मी। अगर आप लोग को मुझसे कनेक्ट करना है तो आप किसी भी लिंक पे जाके कनेक्ट कर सकते हो। मोस्टली मैं ट्विटर पे ज्यादा रहता हूँ, सो या कूल, थैंक यू गाइस। Thank you, Vivek. That was a really insightful session. Thank you so much. Thank you. Thank you. As a token of appreciation, I request Rohit and Tanushka to hand over the memento to our speaker. One thing to mention, यहाँ पर जो क्राउड है बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, Nice. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप रेस्पॉन्सिव नहीं होगे ना, इसका मतलब इनका मेहनत वेस्ट है। यहाँ पे जितने स्पॉन्सरशिप है, आपको क्या लग रहा है 1-2 लाख में खत्म हो गया? नहीं, बहुत सारा खर्चा हुआ है ताकि आप फ्री में आके बैठो, सीखो, ठीक है? तो ये चीज इन लोगों ने वेस्ट नहीं की है, तो आप लोग खुद के लिए भी एक बार जोर से ताली बजा दो। Thanks for being an interactive audience. Thank you so much. Thank you, Vivek. Give it up for Mr. Vivek Yadav. And one more shout out for his special dress. Woo! He has an entirely different attire. Okay, so I guess you are enjoying the sessions. Morning में बहुत energy थी. Okay, now let's check that. Are you still energized? Are you ready? Energized नहीं हो? हो कि नहीं हो? Mix. लंच होने वाला है जल्दी, Yeah. तो थोड़ी एनर्जी बढ़ा लेते हैं। Okay, so what you have to do, you are divided into 3 teams, okay? First row, second row and third row. Okay, team A, team B and team C. What do you have to do? Simple thing which you already do occasionally, okay? Almost You in have all to the shout events out. you do that. Yeah, you have to shout out DevFest Indore, okay? When I'll call the name of that team, okay? Let's say I call team A, so you all have to shout, okay? DevFest Indore. Got it? Everyone got it? Okay, great. Our speakers are very energized. Yeah. Okay, let's start. Okay, so start with all 3 teams, okay? DevFest Indore. DevFest Indore. Okay, now It let's... feels like only one row is saying. Again, 1, 2, 3, start. DevFest Indore. Okay, now we'll start with the teams. Team A. Team B. Team C. Team A. Team B. Team A. टीम ए मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और एनर्जी चाहिए। हर बार टीम ए में कम एनर्जी क्यों रहती है? Yeah. इस बार तो लेट्स डू इट। टीम ए। नाइस। टीम सी। टीम सी। टीम बी। नाइस, टक्कर की है। Okay. Now we can go ahead with our next session. Final round, okay? It's a final round and we'll announce the winner. Okay, so Team B. Team B. Team C. Team C.
वाकई में We clear. hard to Okay, decide. everybody did really well this time. Yeah. It's really hard to decide, but Team C is the winner. Yeah. Congratulations, Team C. बोल रही क्या? हाँ. Sir has got a lot of fan following here. फर्स्ट ऑफ ऑल उधर लगवा लीजिए. हाँ, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ. Okay, so next we have Sri Arunis Bhatnagar sir. He has overall glorious 47 years of work experience. He started as assistant professor in 1975, then joined Indian Revenue Service in 1983, superannuated in 2015. While in service, sir finished Executive General Management program conducted by IIM Bangalore, courses from Duke University and University of Maryland, USA. Sir went to Australia under UNDP scheme to study Australian taxation system. Hello. He was invited to join IST Group of Institution as Director General in 2017. Within a very short span of time, he has taken this group of institution to a new altitude. His hobbies are meditation, sports, poetry and music. His books, Sanchetna Ka Kshan, is about to release. So please give a huge round of applause for... Give it up for Mr. Arun sir. हेलो. लंच में जाने में भी 20 मिनट है, तो लेट अस हैव 20 मिनट्स one-to-one dialogue. Do you know what is the purpose of life? You want to know the purpose of life? No. अमेजन के हिसाब से 1,51,000 बुक्स हैं जिसमें पर्पस ऑफ लाइफ डिस्क्राइब किया हुआ है. तो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट. ब्यूटी ऑफ लाइफ, मैं केवल आपको यहां यह बताने आया हूं कि जो 47 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसको मैं आप तक कैसे शेयर करूं. कोई किताबी बातें नहीं. जो कुछ जीवन में घटा है या घट रहा है उसके बारे में बात करेंगे. उसमें कुछ टिप्स एज ए सीनियर आई वुड लाइक टू गिव यू. तो पहली बात, द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज नॉट इन नोइंग द थिंग्स दैट यू नो द थिंग्स. ब्यूटी ऑफ लाइफ इज इन अननोन, इन मिस्ट्री. क्योंकि जहां हम ये सोच लेते हैं कि हम जानते हैं, वहां हमारा इवोल्यूशन खत्म हो जाता है. कबीर साहब ने इसको ऐसे कहा है कि काहे की कुशलात कर दिए कुएं पड़े. किस बात की कुशलता है? अभी तक हम कुछ जानते नहीं, सितारों से आगे जहां और भी हैं. तो पहली बात, वी हैव टू बी लाइफ लॉन्ग लर्नर. हर दिन, पहले मैं कहता था एवरी डे इज अ न्यू लाइफ फॉर अ वाइज मैन. नाउ आई हैव रिवाइज्ड, एवरी मोमेंट इज अ न्यू लाइफ फॉर वाइज मैन. इसके लिए मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा आज के जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो ऑडियंस है. आई एम मस्ट बी इंस्पायर्ड बाय ऑल ऑफ यू. और मैं केवल आना चाहता था आपको देखने के लिए कि हमारा इंदौर का जो यूथ है वो किस तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है. एंड वी आर विद यू. 1975 में जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ज्वाइन की तो मेरी तनख्वाह आईएएस के बराबर थी यूनिवर्सिटी में, 1075. तो मैंने सोचा यार 1075 बहुत बड़ी रकम थी उस समय और खर्च होने में नहीं आती थी. तो मैंने सोचा कि जिस दिन 10 लाख रुपए हो जाएंगे उस दिन मैं रिजाइन कर दूंगा, क्योंकि मैं भी काफी आलसी आदमी हूं. और 10 लाख का ब्याज उस समय मिलता था 14%, तो 1,40,000, तो साल के 12,000 तो मिल ही जाएंगे लगभग. तो कौन काम करेगा? हुक्का गुड़गुड़ाएंगे चौपाल पर बैठ के. लेकिन आज जब मैं उस बेवकूफी को सोचता हूं तो मुझे लगता है कि क्या मैं ही मूर्ख था? तो मुझे कई सारे मूर्ख दिख गए.
और जब मैंने देखा कि चेयरमैन वाटसन भी मूर्ख है, वो 1943 में क्या फरमाते हैं, आई थिंक देयर इज अ वर्ल्ड मार्केट फॉर मे बी 5 कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर्स इन द फ्यूचर विल वे नॉट मोर देन 1.5 टन्स। ये किसने कहा? पॉपुलर मैकेनिक्स। आई हैव ट्रेवल्ड ऑफ the length and breadth of this country and talked with the best people, and I can assure you that data processing is a fad that won't last the year. अब इतने बेवकूफों को देख के मैं समझ गया कि मैं अकेला ही काफी नहीं हूं, और भी हैं और काफी बड़े बड़े लोग हैं। चलिए, इसका मकसद क्या है, आगे बढ़ाएं। ये भी और कई सारे हैं, तो अब उनके क्या जिक्र की जाए। माइक्रोचिप, what it is good for, तो आगे क्या इसका पर्पस क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि today's reality is subject to today's perception and attitude। जब तक हम अपने परसेप्शन को इनहेंस नहीं करेंगे, अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, अगर ये दोनों चीज चेंज हो जाएंगी तो रियलिटी भी चेंज होगी। हमें कुएं का मेंढक से अगर ये पूछा जाए कि दुनिया कितनी बड़ी है, तो वो बताएगा कि दुनिया गोल है, और वो सच बोल रहा है। वहां क्या चीज मिसिंग है? परसेप्शन। वही मेंढक जब नदी में जाता है तो उसका परसेप्शन बदल जाता है, और वही जब समुद्र में जाता है तो उसका परसेप्शन बदल जाता है। और आज आप उसी चीज के लिए आए हैं, अपने परसेप्शन को इनहेंस करने के लिए, अपने एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, और उन लोगों से मिलने के लिए जिन्होंने जीवन में बहुत सारी कामयाबी हासिल की है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वी आर स्टेइंग इन अ प्रिजनर। अगर मैं कहूं कि हम सब कैदी हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है। हम कैदी हैं किसके? अपने पुराने थॉट्स के, पुराने एनवायरमेंट्स के, सिस्टम ऑफ लर्निंग के। तो अगर आपको एक क्रिएटिव लाइफ लीड करनी है, कुछ नया सोचना है, तो इस प्रिजन से बाहर आना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज अवर परसेप्शन एंड एटीट्यूड, एंड we have to, I will say, you have to create higher version of yourself। अपना हायर वर्जन आप कैसे बनाएंगे? आप जो कुछ हैं उसको हमें हायर लेवल पे ले जाना है। यही मेरा टॉपिक है और यही मेरी आपको सलाह है, कैसे बनाएं। नेक्स्ट, लाइफ डज नॉट हैपन टू अस, इट हैपन्स फ्रॉम अस। तो उस पर हम लोग को गौर करना है। आज मेरा कोई बैकग्राउंड सीएस का नहीं है, ना ही मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स का है, पर मैं जो आज ढूंढ रहा था, एक बात बताइए, आपके पास में से कितने लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है? चलिए, सबके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है। मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसमें वायरस है, बहुत शक्तिशाली, और मैं उसको आपको भेजना चाहता हूं जिससे आपका पूरा डाटा समाप्त हो जाए। तो क्या आप अपने कंप्यूटर को खोलेंगे? ऑब्वियसली नहीं। पर आप ये काम रोजाना कर रहे हैं, डेली आप कर रहे हैं। आप अपने सुपर कंप्यूटर में जो आपका ब्रेन है उसमें वायरस भेज रहे हैं, और वो वायरस किसके हैं? नेगेटिव थॉट्स के। वो वायरस किसके हैं? सेल्फ डिफीटिंग सेंटेंस के। आई कैन नॉट डू इट। तो मैं बहुत, आप मेरे, यू आर लाइक माई सन और इवन माई ग्रैंडसन। नोबडी इज बॉर्न जीनियस। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि यू कैन डू इट। और एक काम आज जरूर करिएगा, जाते ही घर पे डिलीट का बटन दबाइएगा, जिसमें सारे नेगेटिव थॉट्स और सारे सेल्फ डिफीटिंग सेंटेंसेस खत्म हो जाएं। और ऐसे लोगों के साथ कभी मत रहिए जो आपसे एक कहें कि आप ये नहीं कर सकते। You have to set your boundary yourself. Nobody should set your boundaries. आपकी बाउंड्री आप खुद सेट करिए। तो ये एक जरूरी है कि आप अपनी सीमा, अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब मैं क्वांटम फिजिक्स की किताबें पढ़ रहा था तो उसमें एक बड़ी मजेदार बात आई कि जो हम थॉट्स बेचते हैं अपने, आज ये आ गया पावर ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ
vibration, law of vibration and law of attraction. Everything is vibrating. So everything is vibrating. Even we are vibrating. So our thoughts are energy as well as they are vibrating. तो वही थॉट्स जो शाहरुख खान का डायलॉग है वो बहुत सही है, कभी कभी फिल्मों में भी सही बात हो जाती है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं पूरी कायनात उसको आपको मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसको केवल कॉलेज तक मत रखिए, इसको थोड़ा और आगे ले जाइए। इसके लिए आपको थोड़ा अपने विचारों को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग, तो ये जो सुपर ब्रेन है इसमें हम नेगेटिव वायरस भेज रहे हैं, तो इसको बचना है। योर माइंड इज अ सुपर कंप्यूटर, तो इस नेगेटिविटी को रोकना है। नेक्स्ट, पावर ऑफ थॉट्स। एक डायग्राम है, तो व्हाट दे आर सेइंग, there are many notions that suggest our thoughts have power. Whether these thoughts are kept to ourselves, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड में हो या कॉन्शियस माइंड में हो, वो आप पर असर करते हैं। तो जहां कार्य करना है वो अपने थॉट्स पे काम करना है। बहुत पहली कहावत है, यद भवम तद भवति, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप होंगे। और आज ये क्वांटम फिजिक्स ये कह रही है कि बात सही है, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। क्वांटम थ्योरी फोकसेस ऑन द आइडियाज बिहाइंड क्वांटम फिजिक्स। वाइल द, उसको भूल जाइए, क्वांटम फिजिक्स के बारे में आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा ज्ञान जीरो है, ना हमें उसके बारे में जाना है। बस ये पता करना है कि जो एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें जो ज्ञानी लोग हैं बताएंगे, जिसमें ये सोचा गया कि जो लाइट है वो वेव है, पार्टिकल नहीं है, वेव है। तो ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसने कहा कि पार्टिकल्स विल बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे आर ऑब्जर्व्ड, सजेस्टिंग दैट इंटेंट ऑफ द ऑब्जर्वर कैन इफेक्ट द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो आप जब जो सोच रहे हैं वो निश्चित रूप से आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो रूट पे काम करेंगे, वी हैव टू डू रूट कॉज एनालिसिस, हमें रूट पे काम करना है। नेक्स्ट, the idea of attracting a better life is also associated with the idea of quantum entanglement. Quantum entanglement के ऊपर बहुत काम हुआ है, और इसमें भी ये कहा गया है कि पार्टिकल्स चाहे कितने ही दूर हों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए सेम फ्रीक्वेंसी के बच्चे सेम फ्रीक्वेंसी के लोगों के साथ मिल जाते हैं। जब मैं लेक्चरर था तब कुछ लोग जो बहुत ही स्मार्ट थे, चाहे वो हिस्ट्री में पढ़ते हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, चाहे वो मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, एक ही पेड़ के नीचे खड़े मिलते थे। तो मैं उनसे पूछता था, एक दूसरे को तुमने सूंघ करके पहचाना? बर्ड्स फ्रॉम द सेम फेदर। तो वही बात कि वाइब्रेशन अगर आपके जो हैं सही, तो उसी वाइब्रेशन के लोग आपको मिलेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने पिक्चर देखी, वो दिखाइए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये हर्ट्स वाइब्रेशन स्केल। तो जो आपके अंदर थॉट्स हैं उनमें वाइब्रेशन है। आप देखें, शेम 20, गिल्ट 30, अपैथी 50। तो ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो आपको इफेक्ट कर रहे हैं, आपके पूरे सक्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं। और जितने आप हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे, हाई वाइब्रेशंस को पे काम करेंगे, उतना आपको सक्सेस मिलेगी। तो अब रीजंस, एक्सेप्टेंस, लव, दैट इज अनमोटिवेटेड लव, नॉट मोटिवेटेड लव, जॉय, पीस, एनलाइटनमेंट, ये हायर फ्रीक्वेंसी के शब्द हैं। इफ वी आर हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड, तो फिर आप उस पर आ जाइए। जो बेसिक सेंटेंस है, today's reality is subject to today's perception and attitude. तो आप जितने अपने विचारों में उदात्त होंगे, जितने अपने विचारों को ठीक करेंगे, उतने आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे। ये प्रयोग सफल हो रहा है क्योंकि आज जब हम क्वांटम थ्योरी की बात कर रहे हैं और जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वहां से ये बात सिद्ध हो रही। नेक्स्ट, तो क्या करना है हमको? वी हैव टू रिप्लेस, तो अभी एक
टूल्स बता सकता हूं मैं आपको क्या करना है. फर्स्ट वी हैव टू रिप्लेस ऑल आवर नेगेटिव चॉइसेस विद मोर प्रोफाउंड पॉजिटिव चॉइसेस. अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है, व्हाट वी शुड डू. हमने कहा करते रहो, तुम खेलना शुरू कर दो और दौड़ना शुरू कर दो. किसी आदत को छोड़ना नहीं है, हमें एक अच्छी आदत को अपनाना है. और जब हम वही, एक मेरा बहुत खूबसूरत शेर है, मुझे बहुत पसंद है वो, कि इधर उधर की बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, इधर उधर की बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, या कुछ ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर हो. तो हमको क्या करना है, हमको नेगेटिव चॉइसेस को छोड़ दीजिए, आप पॉजिटिव काम करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी वो जो नेगेटिव चीज है वो खत्म हो जाएगी. देखिए इसको और आसानी से समझिए कि जो आप कॉमिक्स पहले पढ़ते हैं क्या वो आज पढ़ रहे हैं. आपकी चॉइसेस रिफाइंड जितनी होंगी, जो पैटी थिंग्स है लाइफ की वो आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगी. इसकी और खराब एग्जाम्पल है, जब कोई नहीं समझ में आता तो मैं उसको ये बोलता हूं कि ठर्रा पीते हो कंट्री लिकर, और कंट्री लिकर की जगह आपको पिलाया गया पीटर स्कॉट या रॉयल चैलेंज या कुछ और सजेस्ट करना चाहें तो वो भी. उसके बाद पिलाया गया ब्लैक लेवल, फिर उससे पूछा जाए कंट्री लिकर पियोगे, लेकिन क्या बात करते हो यार, ये क्या होता है. अच्छा ब्लू लेवल पिलाएं, 21 साल की रॉयल सैल्यूट पिलाएं, अब पियोगे भाई वो जो थर्रा मिलता है, क्या बात कर. तो हुआ क्या, नथिंग हैज चेंज्ड, योर चॉइसेस इज बिकमिंग रिफाइंड. आपने कुछ छोड़ा नहीं, वो छूट गया. तो रिप्लेस ऑल योर नेगेटिव चॉइसेस विद मोर प्रोफाउंड पॉजिटिव चॉइसेस. उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा. एक आप कंकड़ मारते हैं नदी में तो क्या होता है, लेयर्स पे लेयर्स बनती जाती हैं. तो वही मल्टीप्लायर आप इफेक्ट होगा अगर हम मल्टीपल नेगेटिव चॉइसेस की जगह पॉजिटिव काम करना शुरू कर दें, और वो से आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है. वी कैन गिव ईयर्स टू अवर लाइफ एंड लाइफ टू अवर ईयर्स. इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन एनहेंस बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अवर लाइफ. हमारी लाइफ में क्वालिटी भी आएगी और लाइफ स्पेन भी बढ़ेगा. आज हम लोगों के पास एक कोशेंट नहीं है. आईक्यू आप सबके पास है, ईक्यू है, एक कोशेंट मिसिंग है, और वो कोशेंट है हैप्पीनेस कोशेंट. आर वी रियली हैप्पी? आज जो लोग काम कर रहे हैं 10 साल से 8 साल से, तो उस हैप्पीनेस कोशेंट को हमें बढ़ाना है, और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज करें. नेक्स्ट, अब ये टूल्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, थॉट इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स इन द यूनिवर्स. इफ यू कैन चेंज द होल थिंग विल चेंज. तो बहुत सही कहा गया है कि द क्वालिटी ऑफ वंस लाइफ इज डिटरमाइंड क्वालिटी ऑफ वंस थॉट. और ये बात आज सिद्ध हो रही है कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस. आपको मैं एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं. एक ज्यू था रशिया में जिसको अरेस्ट कर लिया गया ये सोच के कि वो इजराइल का जासूस है, और उसको 400 दिन केवल 4 बाई 3 फीट के कमरे में रखा. 4 बाई 3, लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज ट्रू स्टोरी. और उसने क्या किया, फिजिकल एक्सरसाइज करता रहा वो, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज भी करनी है. 400 दिन 4 बाई 3 के कमरे में किसी को रखा जाए तो क्या वो बीतेगी उसके ऊपर. इंसिडेंटली वो चेस प्लेयर था. उसने उस 4 बाई 3 के कमरे में चेस खेलना शुरू किया मेंटली, और चेस बोर्ड नहीं था, केवल मेंटली 64 स्क्वायर्स. और किसके अगेंस्ट चेस खेलना शुरू किया, गैरी कास्परोव के अगेंस्ट. फिर उस 12 साल वो जेल में रहा, और 12 साल में हर दिन उसने चेस खेला गैरी कास्परोव के साथ मेंटली. जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट हुए तो उन्होंने उसको फ्री कराया, और फ्री कराने के बाद वो इजराइल गया और वहां का मंत्री बन गया, मिनिस्टर बन गया. तभी ऐसा कुछ हुआ वाकया कि गैरी कास्परोव ने इजराइल की विजिट करी, और जब ये चैंपियंस विजिट करते हैं तो डेमो खेलते हैं, डेमोस्ट्रेशन करते हैं, 5 लोगों के साथ एक साथ खेलते हैं. उसमें ये साहब भी थे,
इन्होंने वो 4 मैच जीता गैरी कास्परोव, 1 मैच हार गया, और हराने वाला कौन था? नेथन शेशंस्की, जो इजराइल का मिनिस्टर था। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो इफ यू कैन विजुअलाइज द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट यू, तो सारी कायनात आपको मिलाने के लिए तैयार रहेगी। पर आप शुरू करिए। इफ यू आर इंसर्टिंग वायरस इन योर सुपर ब्रेन, देन नथिंग कैन हैपन। तो आज हम लोग को ये सोचना है कि हाउ वी शुड यूज अवर ब्रेन, हाउ शुड वी यूज अवर थॉट पावर टू इंप्रूव अवर सेल्फ, टू क्रिएट हायर वर्जन ऑफ अवर पर्सनैलिटी। हर एक को हायर वर्जन तैयार करना चाहिए। हमको मालूम है कि हमारी कमी क्या है, उस कमियों को लिखिए, उनको पूरा करिए। कई हमारे स्टूडेंट्स ने पूछा, और वो सबकी समस्या है कि सर हम सुबह अलार्म लगा लेते हैं, आजकल अलार्म घड़ी का तो होता नहीं, मोबाइल पे होता है, और सोचते हैं कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे और या जॉगिंग करने जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो अलार्म आता है उसको बंद कर देते हैं और कभी नहीं जा पाते। क्या ये आपकी समस्या भी है? मैंने उनको एक रूल बताया, 5 सेकंड विंडो। योर ब्रेन, योर माइंड इज डिजाइन इन सच ए वे दैट इट प्रोटेक्ट्स यू ऑलवेज, और आपको कभी अनकंफर्टेबल जोन में नहीं जाने देता। तो इसके लिए एक ही तरीका है, 5 सेकंड विंडो। जैसे ही दिमाग में बात आए कि आपको सुबह उठना है, जंप करो, जूते पहनो और फील्ड में आ जाओ। तो 5 सेकंड विंडो का इस्तेमाल करिए। वैसे भी संस्कृत में कहते हैं ना, शुभ से शीघ्रम, अच्छा काम जल्दी कर जाओ, और हम अच्छा काम सबसे जल्दी करते हैं कि फिर दोबारा सो जाते हैं। तो वो भी अच्छा है, लेकिन ये भी जरूरी है। तो 5 सेकंड विंडो का एक यूज करिए, एंड पुट योर थॉट्स इनटू एक्शन एंड बी रेडी टू गो टू अनकंफर्टेबल जोन। बिना अनकंफर्टेबल जोन में जाए आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। तो यू हैव टू हिट हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू इंस्पायर दैट यू हैव बिकम दिस। तो 3 चीजें हैं। एक तो आपका गोल होना चाहिए डेफिनेट। देखिए, ड्रीम में और गोल में फर्क है। तो यू शुड हैव ए ड्रीम, गोल नॉट ड्रीम। और वो सपने ऐसे होने चाहिए जो आपके अपने हों, सपने उधार के नहीं होने चाहिए। अधिकतर हम क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पड़ोसी ने ऐसा कहा। हम IAS क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हमारी मौसी जी ने कहा। नो, सपने आपके अपने होने चाहिए, और सपने ऐसे हों जो आपको सोने ना दें। एक पैशन, 2 शब्द जरूरी हैं, पैशन और परसिवरेंस। जब तक, अभी पिछले स्पीकर साहब ने एक बात कही कि किसी काम में हमें क्यों नहीं थकते हैं, हम उसमें तब नहीं थकेंगे जब उस काम में हमें पूरा इंटरेस्ट आ रहा होगा, हम उस कार्य में हमें आनंद आ रहा होगा, उस कार्य को हम एंजॉय कर पा रहे होंगे, तब हम कभी नहीं थकेंगे। तो वही पैशन आपको रखना है, पैशन प्लस परसिवरेंस। दोनों को जब आप मिलाएंगे, देन यू कैन रीच टू योर गोल। वही बात ये टूल्स कह रहे हैं। दिखाइए, फर्स्ट टूल जो नेक्स्ट, आगे चले। फर्स्ट टूल ऑफ द, पहला टूल, यस पीछे इससे पीछे, यस। पहला, वी हैव टू वर्क ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड हायर वाइब्रेशन। कभी भी नेगेटिव थॉट्स के साथ हमको जीवन नहीं जीना है। यू शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव टू जनरेट हायर वाइब्रेशंस, एंड इट विल लीड टू हायर फ्रीक्वेंसी, एंड इट विल लीड टू, देन यू कैन अचीव योर गोल। सेकंड टूल, सेट ए पावरफुल इंटेंशन टू एनर्जाइज, टू बी विद द लव एंड अबव। लव का मतलब अनमोटिवेटेड लव, लव का मतलब रोमांटिक लव नहीं है। कंपैशन, एम्पैथी, उससे ऊपर आपको सोचना है, पॉजिटिव चीजें सोचनी है, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। थर्ड, शिफ्ट योर एनर्जी टू व्हाट एक्चुअली डिजायर, एकदम फोकस्ड अप्रोच। आज प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम कई तरफ भागना चाहते हैं। जब तक आपका फोकस नहीं होगा अपने ऑब्जेक्टिव पर कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं, तब तक सफलता, पार्ट टाइम कमिटमेंट will give part-time results. Part-time commitment will give part-time results. If you want to become outstanding, you have to do outstanding work. ऐसा नहीं हो सकता कि एवरेज वर्क करके आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिले. That is not possible.
Fourth, surround yourself with a pupil and ecosystem that elevates you. कभी भी हमें नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है. हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो आपसे कहें कि आप ऐसा नहीं करते. इसलिए जो आपकी कंपनी है, जो आपका ग्रुप है, that should be vibrant, that should be positive, that should be energetic. And last, never give up. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग जब सिविल सर्विस में बैठे पहली बार में नहीं सेलेक्ट हुए, एक बात बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के साथ कि उन्हें ब्रेक लग जाता है कभी कभी, या कोई ब्रेक आ जाता है. डज नॉट मैटर. ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपके यहां ब्रेक लग गया या आपने उस जो आप करना चाहते थे वो नहीं कर पाए. इट डज नॉट मैटर एट ऑल. आज लाइफ स्पैन ही 85 ईयर्स का है. तो नेवर गिव अप. और कभी भी ये पांचों चीजें आपको हमेशा जिंदगी में आएंगी, हर एक की जिंदगी में आएंगे. फ्रस्ट्रेशन, डिसएंचेंटमेंट, एंगर, फीलिंग ऑफ अनजस्टिस कि आपके साथ अनजस्टिस हुआ, ये सबके साथ हुआ है, सबके साथ होगा. आपको प्रॉब्लम्स अवॉइड नहीं कर सकते. यू शुड नो हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम्स. ये आपको आना चाहिए. तो इसलिए जहां भी कभी ब्रेक लगे, दोबारा से आप अपनी जर्नी को शुरू करिए. अब इसमें एक सवाल आता है कि सर जो हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं या हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, हाउ वी शुड कम बैक. इसका बहुत आसान तरीका है. आप अपनी किसी हॉबी को परस्यू करिए. मान लीजिए गेम, आप नाराज हैं तो फुटबॉल खेलना शुरू कर दीजिए. सारा गुस्सा उस फुटबॉल पर निकलना चाहिए. एक बढ़िया किक लगाइए. ऑल योर फ्रस्ट्रेशन विल बी मेल्ट. तो आप जो भी आपकी हॉबी है, अगर आप फिर अपने को री एनर्जाइज करिए. ये जो ट्विन साइकिल, एक बड़ा सुंदर शब्द रॉबिन शर्मा ने यूज किया, ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस. जितने भी जीनियसेस हैं, जितने भी जिन्होंने भी बहुत ऊपर पहुंचे हैं, हाई अचीवर्स हैं, अगर आप उनकी लाइफ को देखें तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी हॉबी को कल्टीवेट किया है. दे हैव अ वेरी डेफिनेट हॉबी और उस हॉबी को वो लगातार परस्यू करते रहते हैं. तो वो हमें क्या करता है, रिचार्ज करता है. तो जब भी हम अपने को डिप्रेस फील करें या फ्रस्ट्रेटेड फील करें, वी शुड परस्यू अवर हॉबीज एंड देन अगेन कम बैक टू द ट्रेल, अगेन कम बैक टू अचीव अवर गोल. तो दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं. कभी भी फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है. वी हैव टू एवरी टाइम वी हैव टू परस्यू अवर गोल विद पैशन, विद परसिवरेंस. टाइम कितना अभी आपके क्वेश्चंस का टाइम हो गया? कैन गई मोर? एनी क्वेश्चंस? आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चंस फर्स्ट. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछिए, क्योंकि बहुत कुछ अभी डिस्कस किया जा सकता है. बट इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस प्रैक्टिकल, देन यू आस्क. अदरवाइज विल सी गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. देखिए, एक और चीज समझ जाइए. एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं. 3 चीजें हैं: अवेयरनेस, माइंड एंड एनर्जी. एनर्जी हमारे पास वैसी ही है, लिमिटेड एनर्जी है. उस एनर्जी को आप अच्छे काम में यूज करें या बुरे काम में यूज करें, इससे एनर्जी को कोई मतलब नहीं. एनर्जी इज लाइक ए वाटर, एनर्जी इज लाइक ए मनी. वाटर को आप सिंचाई में यूज कर रहे हैं या फ्लश में यूज कर रहे हैं, वाटर को इससे कोई सरोकार नहीं है. ऐसी एनर्जी को इस बात से कोई सरोकार नहीं है. हाउ वुड यू लाइक टू यूज दैट एनर्जी? और आज आप जो कुछ भी हैं वो सम टोटल है. जितना आपने अपनी एनर्जी को जैसे अब तक यूज किया है, उसी का सम टोटल आप हैं. और आप जो होना चाहते हैं तो आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी पर जाना होगा. यू हैव टू नो हाउ टू यूज अवर एनर्जी. यस. Hello sir, my name is Ritik Tiwari. I wanted to ask you, according to the Hertz frequency scale, the vibration for peace is quite higher than the vibration for neutrality. So what is the difference between neutrality and peace? Peace, देखिए, peace का मतलब क्या है? Peace with yourself. Neutrality is a different concept. Peace means कि peace or bliss is a very, very wider in scope. What is the bliss or peace? Which cannot be destroyed and which cannot be eliminated. जो आपकी जो हमारी जो पीस है, that is depend, और जो bliss है या जो आनंद है या जिसको कुछ भी आप नाम दें, it is depending on various other factors.
तो जब आपके पास ऐसा कुछ आ जाए विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मुझे मालूम है कि आपको कैसे गुस्सा करवाना है, तो मैं यहां से बटन दबाऊंगा, वहां गुस्सा हो जाएंगे या क्रोध आ जाएगा. तो यू शुड बी पीस विद योर सेल्फ, नो बडी शुड डिस्टर्ब योर इंटरनल पीस, इटर्नल पीस. एनी अदर क्वेश्चन? So our mindset, it's basically created from our childhood, like in the surroundings where you grow up. And it's not that easy to change it. Like we say that we can change our energy and all, but it's not that easy to change the mindset. If we are introverted, like, okay, if we are attention seeker or if we have anxiety issues and all, so we seek attention in others. Like we want others to give us attention. That's not easy to tackle. So how, like, people say even motivational speakers and even you said, like, in a good way, that we should chase people with good energies, but that's not easy for everyone. So how to do that? Yes, you have to enhance your willpower and concentration. What is concentration? To focus to a continuous period of time on one goal. तो जब तक आप वो नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको अपनी विल पावर को एनहेंस करना पड़ेगा. The more we will enhance our willpower, the more we will concentrate on our goal. Sir, but a person is defined by its nature, matlab his or her nature. If we will be changing the nature of a person and if we will be changing everyone's nature to a certain point, we are like, won't everyone be like same? You are responsible for your own act. आपको केवल अपने बारे में, you are not required to change the others. You have to change only the behavior of yours. आपको अपने अंदर सुधार करना है, दूसरों में सुधार नहीं करना है. So sir, is there any state of idealization? Is there any ideal state we should achieve? Everyone has to decide his own boundary and realization. तो आपकी लिमिट अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है. There is no boundary. You can achieve anything, but there should be willing to evolve. Are you willing to evolve? If you are willing to evolve, then you should use both passion and लगातार कोशिश, perseverance to achieve your goal. Okay, thank you, sir. Hello. Yes, sir. My name is Diya Verma, and I wanted to ask you to explain us more about the enlightenment factor in the Hertz scale of frequency. Enlightenment is a beautiful question. Enlightenment is related with when you are realizing the whole identity of yourself, कि what you are and what is the whole thing about. जैसे मैंने bliss के लिए बोला कि are you in a state of bliss? Are you in a state where nobody can reduce or delete your bliss or your inner peace? तो वहां पे state आती है enlightenment. It is more complicated. That is my purpose of mine. Meditation is only one way, is the only effective way, not the only one way, is the most effective way to get to that stage, enlightenment. When you are realizing that all of us are having the same identity. आज देखिए, आज हमारी गैलेक्सी, इस मिल्की वे में कितने स्टार्स हैं, कितने स्टार्स हमारी मिल्की वे में हैं. There are billions of stars. And how many galaxies we are having? Galaxies are expanding. We are having billions of galaxies. So then we have to go for limited identity to unlimited identity. देखिए, हमें ससीम से असीम बनना है. हम बूंद बूंद होना खोती है, सागर होना पाती है. तो आप जो हम एक बूंद हैं, हमको सागर में विलय होना है. एक सागर बनना है, ना कि बूंद के रूप में रहना है. यही एनलाइटनमेंट है. We can see that all you are having the same divine spark as I am having. जब ये realization होता जाता है, तो there is no enmity, there is no jealousy at all. Next question. So what could be the right way to do self-discovery? What will be? What could be the right way to do self-discovery? Self-disagree. Discovery. Discovery. Yes. Self-discovery, yes. You have to, देखिए, all of us are in a high beta wave. आज एक आदमी को 60,000 से 80,000 थॉट एक दिन में आते हैं. और प्रॉब्लम है कि कुछ थॉट्स बार बार आते हैं और वो बार बार वही इमोशंस पैदा करते हैं और वही एक्शंस पैदा करते हैं जो आपको दुख देते हैं. तो हमको हाई बीटा वेव से पहले अल्फा स्टेट में आना है, अपने थॉट्स को रिड्यूस करना है. और जब हमारे थॉट्स रिड्यूस होंगे, जो वैक्यूम होगा,
तब आपको धीरे धीरे सेल्फ डिस्कवरी की तरफ आप बढ़ेंगे। तो पहले उसको खाली करिए। वी आर ओवरलोडेड विथ थॉट्स। 99% हमारे पास अनवांटेड थॉट्स हैं। मैंने एक जगह लिखा था कि ये बेचैनियां, ये बेचारगी का आलम, हम अपने आप को बहुत बेचैन मानते हैं, कभी कभी सोचते हैं वी आर बहुत बेचारे हैं। ये बेचैनियां, ये बेचारगी का आलम हमारे अपने ही मन के प्यारे और दुलारे सपने हैं, जिन्हें हमने अपने ही ख्यालों की खुराक से पाल पोस कर बड़ा किया है। हम अपने को अपने ही बनाए हुए अंधेरे कमरों में बंद किए जाते हैं। तो जरूरत है कि हम उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलें और एक नए तरीके से अपने को देखें और हायर वर्जन अपना अचीव करें। थैंक यू। हेलो। Hello. Kindly settle down, everybody. Volunteers, please close the gate. We'll be closing soon. I request Mr. Tushar Pal and Mr. Akash to give the memento to Arun sir. Please, sir. Thank you so much, sir. Energy down लग रही. Once again, give a huge round of applause for sir. Please. You know I said just. You know I said just. Designs into developer-friendly code for mobile and web apps, be it client-side or internal. There are many reasons why you love using DWise. All you need to do is sync your Figma designs with DWise. With our smart editor, you can customize your UI properties and manage components, all of this while you see real-time rendering simultaneously. Connect to multiple data sources using any REST APIs. You can also set up navigations, permissions, social authentication, and much more. DWise generates clean, reusable, and modular code, and the best part is that it has minimal code refactoring and doesn't have dependency hell. You can get full control over your code using Git sync. There's an extensive library of pre-designed screens and templates as well for you to instantly get started on your journey of app development. Welcome to the future of programming. DWise. DWise is a programming platform where developers can convert their design into developers-friendly code for mobile and web apps. DWise automates the application development lifecycle and instantly generates readable, modular, and reusable codes. So we have been having this feedback from all our speakers that we have got an amazing audience, very interactive audience. Thank you for being that. I have few lines for all of you. So, एक जैसे साथी सारे नहीं होते. वाह वाह. वाह 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 वाह. एक जैसे साथी सारे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते. आपसे मिलकर ये महसूस हुआ है कि कौन कहता है ज़मीं पर तारे नहीं होते, तारे नहीं होते. वाह वाह. Okay, so now we can proceed for our lunch and a big round of applause for our whole audience. But before that, just one special announcement is there. Just you can listen while standing. There is a career fair, okay, in right side. So please go through that side. And you can also visit career fair. There are a lot of companies
Okay, you can interact with them and. Okay, we would request everybody of you to go one by one. Just line by line go there. Let's not make a chaos over there. Please, team A and team B, sit down. Because you are not winner. There's a job fair out there, and there are many internship and job opportunities. You can go ahead on the booth and interact with the company people over there. There are also some swags, okay, so yeah, just go and grab it. शायद उधर अंदर I said just. Just.
suggest. You know I suggest. You know I suggest. You know I suggest.
know I said yes. Just Oh man, you need some headphones, bro. you know I said yes. You know I said yes. You know I said yes. Oh man, you need some headphones, bro. You know I said yes. You know I said yes. Baby, can you pray tonight? Baby, can you pray for? Oh, baby, can you pray? 'Cause every time you make time, it's only to the end. So pray tonight. So you won't know it. For everywhere around that we had messed around and I knew it. But I'll be ready every day. You know everything's alright. Are we gonna pray? Are you gonna pray tonight?
run in circles, running around. Break down, chase the light. We're rolling, but on the go. Running for my life. Feel the light. Running for my life. Running for my life. Running for my head high, we're alone. Are we taking all in front of us? Head high, how could we know it was all along on the side? We should read between the lines and we're on the right way to go. Head high, we're not alone. Oh, we are not out of luck. Running for my life. Feel the light. Running for my life. Running for my life. Running for my life. You know what's that, Jeff? Say it's time. You know what's that, Jeff? Just Oh man, you need some headphones, bro. you know what's that, Jess? You know what's that, Jess? You know what's that, Jess?
You know I suggest. You know I suggest. Baby, can you pray tonight? Baby, can you pray for us? Oh, baby, can you pray? 'Cause every time you make time, it's holy to the end. So pray tonight. So you won't it. For every round that we had, Mr. Right and I knew it. But I'll be ready every day. You know everything's alright. Are we gonna pray? Are you gonna pray tonight? Pray for me and fast. Baby, pray for me and fast. Baby, pray for me and fast. Gotta pray for me and fast. Baby, pray for me and fast. Baby, pray for me and fast. Break down, we're alive, are we running circles, running around? Break down, chase the light, we're rolling but on the go. Running for my life. Feel the light. Running for my life. Running for my life.
You know I said just. Just Oh man, you need some headphones, bro. you know I said just. You know I said just. You know I said just. Oh man, you need some headphones, bro. You know I said just. You know I said just. Baby, can you pray tonight? Baby, can you pray right? Oh, baby, can you pray? 'Cause every time you make time, it's holy to the end. So pray tonight. So you won't no, for everywhere that we had Mr. Right and I knew it. But I'll be ready every day. You know everything's alright. Are you gonna pray? Are you gonna pray tonight?
You know I said just. Say son. You know I said just. Just Oh man, you need some headphones, bro. you know I said just. 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 Oh man, you need some headphones, bro. You know I said just. You know I said just. Baby, can you pray, pray tonight? Baby, can you pray, pray for? Oh, baby, can you pray? 'Cause every time you make time, it's only to the end. So pray tonight. So you won't no, 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 it. For every round that we had, Mr. Right, and I knew it. But I've been ready every day. You know everything's alright. Are we gonna pray? Are you gonna pray tonight?
You know I said yes. Just Oh man, you need some headphones, bro. you know I said just you know I said just you know I said just Oh man, you need some headphones, bro. you know I said just you know I said just Baby, can you pray, pray tonight? Baby, can you pray, pray for us? Oh, baby, can you pray? It's every time you make time. It's only to the end, so pray tonight. So you won't for every round that we had, Mr. Right, and I knew it. But I've been ready every day. You know everything's alright.
every round that we had, faster running, I knew it. And I'll be ready every day. Know everything's alright. How you gonna pray? Break down, we're alive, are we running circles, running around? Break down, chase a light, we're rolling but on the go. Running for my life. Feel the light. Running for my life. Head high, we're alone, are we taking all in front of us? Head high, how could we know it was all along on the side? We should read between the lines and we're on the right way to go. Head high, we're not alone, no, we are not out of luck. Running for my life. Feel the light. Running for my life. Running for my life. Running for my life. You know I said just. Say it's time. You know I said just. Just. Oh man, you need some headphones, bro. You know I said just.
I suggest. You know I suggest. Oh man, you need some headphones, bro. You know I suggest. You know I suggest. Baby, can you pray, pray tonight? Baby, can you pray, pray for us? Oh, baby, can you pray? 'Cause every time you make things right, it's only to the end. So pray tonight. So you won't for every run that we had, Mr. Right, and I knew it. But I've been ready every day. You know everything's alright. Are you gonna pray? Are you gonna pray tonight? Pray, pray, pray for me and fast. Baby, pray, pray, pray for me and fast. Baby, pray, pray, pray for me and fast. Gotta pray, pray, pray for me and fast. Baby, pray, pray, pray for me and fast. Baby, pray, pray, pray for me and fast. For every run that we had, Mr. Right, and I knew it. And I'll be ready every day. You know everything's alright. Are you gonna pray? Are you gonna Break down, we're alive, are we running circles, running around? Break down, chase the light, we're rolling but on the go. Running for my life. Feel the light. Running for my life. Hello. Everyone, please settle down. We are beginning the sessions, so I request everyone to get onto their places. Everyone, please settle down quickly.
अरे जल्दी जल्दी आओ. Everyone, please grab your seats quickly. माइक के स्टैंड लग रहा है, ठीक है? तो पहले एक्टिव We request everyone to quickly grab their seats. You know I said just. You know I said just. Just. You know I said just. You know I said just. You know I said just. Oh man, you need some headphones, bro. You know I said just. Hey, hey. You know I said just.
एवरीवन जल्दी जल्दी से अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. Okay, and your friends are not coming, so कैसे बुला सकते हैं उनको? शोर होगा तो आएंगे, राइट? थोड़ा सा शोर मचा लेते हैं हम पहले. तो जितने यहाँ पे बैठे हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं. जो भी बाहर होंगे वो आवाज सुन के तो आ ही जाएंगे. सो एवरीबॉडी, हेलो इंदौर. अभी खाना Great खाया audience ना? here. Great audience this side. एक बार फिर से हेलो इंदौर. मजा नहीं आया? फिर से हेलो इंदौर. अब लग रहा है ना सबने खाना खाया है. ठीक है, तो हमारे पास ना सबके लिए एक सरप्राइज है. ठीक है, वी हैव अ रियली गुड सरप्राइज फॉर एवरीवन एंड वी वांट एवरीवन टू सेटल डाउन. And one more thing, after this surprise, there are some activities, okay? And we will call some of you, okay, to come on the stage. So आप सब आगे आ जाओ, ठीक है? आगे बैठ जाओ सब कोई. जो पहले आएगा उसको गुडीज मिलेंगे. अब जल्दी जल्दी आना. Okay, because जब आगे आएंगे, अभी आप आगे बैठोगे, so you will be the first, okay? So please आगे की सीट में बैठ जाओ सब. Except first and second row, I guess. तो हम लोग जल्दी जल्दी अपना सरप्राइज रिवील कर लेते हैं. बिफोर एवरीवन सेटल्स इन, वी आर गिविंग यू 5 seconds to settle down. Okay, so how many of you were yesterday also present here? Okay, so you must be knowing Kushagra, right? Okay, so surprise is revealed. तो हम लोग सरप्राइज रिवील करते हैं. So we are having our dear speaker, Mr. Kushagra Nagar, to perform a song for everyone present in the hall. So Yeah, please he'll play welcome. guitars. Give a huge round of applause for him, Kushagra. गिटार लेके आए हैं, अभी तो और शाउट बनता है ना. Once again, give a huge round of applause for Kushagra. Hi everyone. How many of you were there for my presentation yesterday? Nice. Few of you guys. Okay. So for those who don't know, I'm Kushagra. I'm a senior Unity developer. I'm a senior game developer at this company called Web3 Technologies Indore. All right. And of course, free promotion, bro. If you're looking for a job in, or an internship in game development, just come and talk to us. But thank you everyone who was there yesterday. And how many of you enjoyed my talk, or at least learned something from it? Cool. Thank you so much. So did I. So I'm not a singer, okay? I'm just a guitarist, and the thing that I have to deal with that is I can't sing. All right, so it's just my guitar and some chords. I want each and every one of you to just clap with me. All right, जो जिस rhythm में मैं चल रहा हूँगा ना, just clap with me and yeah, maybe enjoy. You can hear the sound, right? Enjoy.
once again. Woo! एक बार फिर से. Woo! So we thank Kushagra for his wonderful performance. Also, I'm so sorry. If for those asking for my LinkedIn and Instagram, you can just scan that QR code and connect with me there, all right? Or you can find me just roaming around anywhere around here. Okay, thank you, everyone. So we have been doing our great sessions and we had a wonderful surprise performance as well. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे की नोट ऑफ द इवेंट से. नेटवर्किंग भाई, कम्युनिटी में आए हैं, नेटवर्क नहीं किया तो क्या किया? So for that we are welcoming our WTM ambassadors, Savi, Priyal and Shachita. So please welcome them with a huge round of applause. हेलो एवरीबॉडी. कौन कितने नींद में है? फर्स्ट क्वेश्चन खाना खाने के बाद. हाउ आर यू ऑल? थोड़ा सा जो टॉपिक हम लोगों ने अभी लिया है इज रीफ्रेमिंग योर नैरेटिव. आई बिलीव कि टेक टॉक्स तो अपन सारे लेते हैं, सीख रहे हैं, फ्लटर सीख रहे हैं, वेब सीख रहे हैं, फायरबेस सब सीख रहे हैं. Sometimes it is also important to have that kind of sometimes it is also important to have that self confidence in you to present yourself. So the next 40 minutes we would be focusing a bit on reframing your own narrative, how to put yourself out there in the market, how to own your own narrative. Okay, so let's get started. Energy check. Show me your thumbs, everybody. Everybody alive, right? Okay. Today's goal, this workshop's goal today is to be comfortable by telling your own story, and you should be able to write your own bio. Bio is, say, 4, 5, 6 lines about yourself, maybe something that you tell to the market about yourself. And during this training, so I hope everybody has your notepad with you. Everybody has access to notepad? Okay. So feel free to ask any questions. Our volunteers here, GDG volunteers, would bring the mic to you. If you have any questions, just raise your hands. I would try to answer your question the best way I can. And you can take notes from the session if you want to. You can take pictures of the slides and everything will be available. So we are streaming this live on YouTube. So if you want, you can access to the slides later as well. And if you want me to rephrase any slide or any sentence or a slide, then you can just ask me to. Cool? Let's get started. Also, just a reminder that you all be just true to yourself. And this is a very safe space. So if you want to if you want to share some experience, or because this workshop tends to be a bit personal to your experiences. So it's feel free to be emotional about it and feel free to write down the truest version of yourself. Because if you don't stand up for yourself, nobody else ever will. Okay? And be focused here, be present and just have fun along the way. Cool? So, how many of you feel that you are an expert at something? Anything, it can be any topic in life. How many of you feel that you are an expert at something? Google developer experts are labeled experts. But yeah, anybody, like in the entire crowd, do you feel you are expert at something? Very, very few people are raising their hands. But tell me this, in life, have you have accomplished a lot of things. Say, you have got your amazing internship.
you got into an engineering college, there was a lot of competition. You got into, say, little things. You got a washing machine with your first salary for your family. These little accomplishments are also important. So, say, you have knowledge about, say, some particular field of tech, or say some particular knowledge about any kind of, say, a framework. You started your college journey with learning Git. Git, सबको आता है Git. Basic GitHub पे push करना आता है, pull लेना आता है. Would you be able to teach that to a first year का kid? अगर उस चीज पे आप लोगों ने काम करा हुआ है और बार बार करा हुआ है, तो you can teach that to somebody, right? हम लोग बहुत सारे बार ये करते हैं कि खुद के लिए ही बार इतना एक्सपेक्टेशन का ऊपर रख लेते हैं कि एक्सपर्ट मतलब उनको एक पेडेस्टल पे बिठा देते हैं कि उन्होंने कुछ तो बहुत अच्छा अलग से करा होगा, या उनके एक्स्ट्रा सीइंग होंगे, या ऐसा कुछ कि वो एक्सपर्ट है. हम लोग खुद को बहुत कम समझते हैं कि हमने तो कुछ नहीं करा लाइफ में, जबकि करा होता है. ऐसा नहीं है कि हमने नहीं करा है. तो लेट्स ट्राई एंड रीफ्रेम दैट नैरेटिव कि हाउ कैन यू ओवरकम दैट बायस एंड इम्पोस्टर सिंड्रोम. तो बेसिकली imposter syndrome. Anybody here knows what an imposter syndrome is, or what you like think is an imposter syndrome? Can we have a mic here? Hello, ma'am. I am Aditya Chandel, and I would like to tell what is imposter syndrome. Because actually, I think whenever someone feels incompetent enough, when they don't have belief in their capabilities, and they think that if they would show it to the world, basically someone who will get pointed is themselves. So that's what they feel. They feel less than they what actually are. Can we have some merch for him? That was very rightly said. Anybody else would like to say a bit about what you know about imposter syndrome? Yes, please. Can you bring the mic to him? Should I? Yeah. Actually, by imposter syndrome, it's like you're pretending to be someone else. Like you're not actually showing what you are, and you are showing that. You're not actually that person, you feel like that. So for example, developers actually sometimes feel that they're not good enough to be in that position. So they feel like they don't know anything, but still they are given that opportunity to develop applications or write code. So that they feel that they're not good enough for that job. They're pretending to be someone else. Fair enough. Both the call-outs are fair enough. So imposter syndrome is the basic definition of feeling I am not worthy enough. Diminishing my own language, feeling like I have not accomplished anything, I am not good enough, I just got lucky at doing something. Owning your accomplishment nahi ho pata hai, basically. Jaise, I shouldn't be here, or I just got lucky with my job interview. मुझे तो आता ही नहीं था, लेकिन उनने ले लिया मुझे. आता होगा तभी लिया है ना सामने वाले ने. सामने वाले को आपकी कैपेबिलिटी दिखी होगी, इसीलिए उन्होंने लिया है. I am speaking here at stage because I felt कि I am confident to deliver a session, and because मुझे जनता लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है पहले. But I also started somewhere. Say, being convinced that you are a fraud, कि I am not good enough, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता. So at any point of your career, जैसे हर किसी को कभी ना कभी लगता है ये. Say, how many of you are in your final year of college? A lot of you, right? How many of you are placed, have a job offer in hand? How many of you are yet to get placed? Quite a few of you. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं इंटरव्यूज तो दे रहे हो, लेकिन मेरा हो नहीं रहा सिलेक्शन कहीं पे भी. कई बार ऐसा बहुत सारा लो फीलिंग आता है कि
व्हाट इफ आई एम नॉट गुड इनफ, व्हाट इफ आई डू नॉट गेट प्लेस्ड, मेरे साथ के सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगी, समथिंग लाइक दैट. ऐसा आता है फीलिंग? नॉट जस्ट गेटिंग प्लेस्ड और लाइक बिगर अकॉम्प्लिशमेंट्स, छोटी छोटी चीजें में भी ऐसा लगता है. तो जैसे यू आर कंसिडरिंग कि सक्सेस क्या होती है, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? सक्सेस कैन बी एज लिटिल एज being able to wake up every day, can be something as catching your college bus on time every day, or maybe passing all of your semester exams without getting an ATKT. That is also an achievement. हर किसी का पास नहीं होता, बहुत लोगों को बैक लगती है. Do you agree? So feeling like this कि छोटी छोटी achievements life में matter करती है, and that is what we ought to feel that today. We ought to start bringing that narrative in mind कि क्या important है, हर छोटी सी चीज को appreciate करना सीखना है. So all of this, does it sound familiar to you? कभी बोलते समय ऐसा कि I was just fixing something, or I just got this opportunity because I was at the right place, right time. Something like that. Anybody would like to recall their experience ऐसे पहले का कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ है? Anybody would like to say anything about it? कि मतलब it might have been something that you have achieved in life, but you set yourself back कि हो गया, मैं बस I was there in the right place, right time. Anybody? Or maybe something like I should have done better, I could have done better. Hello. Hi everyone, my name is Yashar Manloi. So currently I am working with Consulted. So जब हमारा second round था, like first technical था, तो उधर पे उन लोगों ने मेरे से एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा, एंड कोइंसिडेंटली मैंने सुबह वहाँ पे ऑफर के लिए जाने से पहले ही वो क्वेश्चन सॉल्व करके गया था. तो एट दैट टाइम आई फेल्ट लाइक कि यार ये तो अभी सुबह ही करा था और वापस से आ गया, मतलब ये तो निकल जाएगा. तो दैट टाइम आई फेल्ट लकी. तो आपने अगर वो एग्जाम के पहले करा था तो भी आप ही ने करा था ना? हाँ. तो उसमें ऐसा क्यों फीलिंग आया कि आई वॉज लकी टू गेट दैट बिफोर? पहले भी आपकी कैपेबिलिटी थी, तो पहले अगर आपने कर लिया तो सेशन में बैठ के भी कर सकते थे ना? या बट द थिंग इज कि वही क्वेश्चन जो सुबह करा था वो वापस आ गया, तो दैट्स व्हाई आई फेल्ट लकी. फेयर इनफ, फीलिंग लकी इज गुड, लेकिन फीलिंग कि मैं नहीं कर पाती लेकिन मेरे को बस हो गया, आई वॉज मतलब लकी क्योंकि मुझे लक ने पास करवा दिया, बट यू आर अंडरमाइनिंग योर ओन कैपेबिलिटी एंड योर एबिलिटी कि आप खुद भी कर सकते थे. मतलब पूरा की पूरा भगवान को नहीं दे देना चाहिए कि आप ही ने सब करवाया है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, राइट? तो दैट थिंग. सो इंट्रोड्यूसिंग यू टू द विशियस साइकिल ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम. से जॉब ऑफर या किसी इंटरव्यू में बैठने के लिए कंपनी के, एवरीबडी ऑफ लाइक यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, किसी भी चीज का इंटरव्यू नहीं दिया, जॉब इंटरव्यू नहीं, लाइफ में कभी इंटरव्यू नहीं दिया? वेरी लेस, ठीक है. सब लोगों ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंटरव्यू दिया है. इंटरव्यू में जाने के पहले की एंजाइटी सबको होती है. मैं स्टेज पे आ रही थी, उसके पहले मुझे एंजाइटी हो रही थी कि व्हाट इफ मैं सेशन डिलीवर नहीं करूँ अच्छे से, व्हाट इफ पीपल स्टार्ट लाफिंग एट मी, व्हाट इफ माई कॉन्टेंट इज नॉट गुड इनफ. से स्पीकिंग अबाउट द इम्पोस्टर साइकिल का एक विशियस साइकिल जो है बेसिकली कि नया अपॉर्चुनिटी मिला, I am super excited to get that opportunity. I am super excited to appear for that interview. I have prepared hard enough. I have done everything that I could. ठीक है, हमें अगर कोई चीज चाहिए तो हम पूरा प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए, राइट? पीपल करते हैं. हमने पूरी मेहनत करी, हमने सारी एफर्ट डाल के उसके लिए प्रिपरेशन करी, तो हमारी कैपेबिलिटी तो बिल्ड हुई है. अब इंटरव्यू के पहले की एंजाइटी, क्या होगा, कैसे होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. इंटरव्यू दे दिया. अब कई बार ये भी होता है कि जैसे आपको कहीं पे टॉक लेना है या कोई असाइनमेंट सबमिट करना है, क्यों हम लोग 12th आवर पे असाइनमेंट सबमिट करते हैं या 11th आवर पे असाइनमेंट बनाते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन कि यार बहुत मेहनत लगेगी, नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, किसी का आएगा तो उनसे कॉपी कर लेंगे, काइंड ऑफ अ सिनेरियो. तो हम लोग लास्ट मिनट वो चीज करते हैं, तो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं. फाइनली वो हो जाती है तो यस, सक्सेस, जीत गए. फिर याद आता है टाइपो लिखा था बग में,
ये वाला लॉजिक तो बेटर कर सकते थे, इसका ऑप्टिमाइजेशन तो और अच्छा कर डाल सकते थे, तो फिर वापस से हम लोग वो सोचने लग जाएंगे कि यार नहीं हुआ, बेटर नहीं हुआ, इससे बेटर कर सकते थे. एंड देन यू कम बैक एंड से कि छोटी छोटी चीजें जो गलत करी थी, फिर वापस से कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. तो दिस इज द एंटायर विशियस साइकिल ऑफ फीलिंग एज एन इम्पोस्टर, फीलिंग लाइक अ फ्रॉड, कि किसी को पता चल गया कि आई एम अ जीरो एट समथिंग, तो क्या होगा. एक्चुअली जीरो होते नहीं हो, हम बस खुद को ऐसा सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं आता. तो किसी को जो आता होगा उनको बहुत कुछ आता होगा, पर उनको भी मेहनत करके थोड़ा सीख के आ गया, तो हम भी वो मेहनत करके सीख के आ सकता है हमें भी. माया एंजेलो करके एक बहुत फेमस राइटर ऑथर है, उनको भी लाइफ में यही लगता था पहले कि ये फीलिंग है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे को मिल गया बस करने को. And why does this feeling matter, or why does this thinking good about yourself matter? क्योंकि टेक इज कम्युनल. आप लोगों के साथ में अगर एवरीबडी यूजेस स्टैक ओवरफ्लो, कोई है जिसने नहीं यूज करा आज तक, क्या सुना ही नहीं है स्टैक ओवरफ्लो के बारे में? इफ नॉट तो ऑडियंस गलत है मतलब. तो से व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? अगर people are not placing their voices forward, you wouldn't be having this conference here. If I am not speaking here, if all of these prominent people are not taking their time out and coming to speak for the betterment of the community, if they are not placing their voices and opinions here, आप लोग कैसे सीखोगे? ऐसा लगता है ना कि मैं अकेला ही हूं, मेरा वॉइस मैटर नहीं करता. बट ऐसा हर इंसान सोचे तो how would the community grow? How would the tech ecosystem build up? That is why it is important. मतलब वो सेम एनालॉजी उसमें काम करती है. मैं वोट नहीं दूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, पर पूरा इंडिया का 1.5 बिलियन पॉपुलेशन बोले मैं वोट नहीं दूंगी तो क्या इलेक्शन कैसे होंगे? How would the entire community run? Right? So what should we do about it? How do we overcome this feeling of being an imposter? Sorry. So I'm going to take you through the next couple of slides to give you a bit of a strategy to how to feel a bit better about yourself, how to feel a bit more confident about not being an imposter. तो first तो है कि either you can just acknowledge it and move forward. करना है assignment, करना पड़ेगा तो अभी कर लो. Or you can go with fake it till you make it. हो सकता है कि मतलब I am putting up a smiley face, even if I am like super sad, I am putting up a smiling face and moving forward. And वही चीज सोचो तो वो हो भी जाती है. If you are confident enough to speak at an interview, you can even tell to the interviewer कि नहीं आता पर मैं सीखने के लिए ready हूँ. That mindset also can get you a job. Not every time कि आपको syntax आना चाहिए, क्योंकि syntax search कर सकते हैं. सब लोग syntax search कर करके ही बनाते हैं कोड. किसी को खुद से पूरा syntax याद नहीं होता है. Right? Would you agree, everybody? Either this, or you can do something like this. कि you reframe the conversation in a way कि you understand कि thought leadership क्या है, कि you are proving yourself कि capability है, understanding है, मैंने effort डाला है. तो you can put your own narrative in a way कि I can do it, I will do it. And when you are sharing your voice out there, think of it as a gift that you are giving to the world. Because your voices matter. So, I have a small activity for you. So, for the next 2 minutes, I want all of you to write down as many accomplishments of yourself you can write down on a paper. Cool? Your accomplishments can be as enormous as I started my own company. It can be
as little as, say, again, I bought something for my family with my first earnings. It can be, I got the interview, I got the job offer, I cleared all the semester exams, or say anything that you feel proud about. I learned how to play guitar. That is also an accomplishment. बहुत लोगों को बहुत चीजें करनी होती है, लोग बोलते रह जाते हैं हमने एफर्ट डाल के वो चीज सीखी, हमने एफर्ट डाल के वो चीज करी. Write down as many accomplishments for yourself that you can write down. You don't have to like show it to anybody or share it to anybody. Just write it down for yourself. And we do have follow-up exercises for it, so I would expect everybody to write it down. And also, your language should not be a diminishing language. Ki, I just did this. I just got lucky. Not lucky, but lucky. Like owning your own accomplishments. Your language should not be saying ki, ho gaya mujhse, ya mere pe ho gaya. Your language should be somewhere around, I did this, I had capability, and I accomplished this. This activity would be called as collecting the data, because you can't fix what you can't measure. And unless you measure, you won't be able to speak that out aloud. Everybody, have you written down? Do you need more time? Folks, everybody alive? Everybody alive? Okay. So, I want all of you to hold your notepad in your left hand. Everybody hold your notepad in the left hand. You know what you have written, right? ऐसे जैसे अपन लोग कॉलेज के सेशंस में या कॉलेज के क्लासेस में म्यूट रह के बकर अलग से करता है ना. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे म्यूट. आई वॉन्ट यू टू रिपीट योर अकॉम्प्लिशमेंट्स, से टॉप 3 अकॉम्प्लिशमेंट्स. आवाज नहीं निकालनी है, ऐसे बस लिपसिंग करके बोलना है. ट्राई डूइंग दैट. ट्राई रीडिंग आउट योर accomplishments aloud without voice, because we can't do that with 1,000 people. Try saying out your accomplishments aloud. How did that feel? How did that feel? Anybody? In general, just speak up from your place. How did that feel, speaking it out aloud? Nice? Gratitude? Okay-ish, okay. Take your right hand and pat yourself on the back for writing down your accomplishments. Pat yourself on the back. You did a good thing. Now let's take it a step further. Okay? Write down 5 things that you feel in tech you can teach. कुछ भी सिखा सकते हो. For loop बनाना भी किसी को सिखाना आता हो तो that is also something that you can write down. Write down 5 things that you can teach somebody. Silently भी लिख सकते हैं मतलब. Have you written it down? ठीक है. Let's take it a step further. Crafting credibility. Now, if you ask me कि क्या होता है credibility? किसी को credibility कैसे मिलती है? Why is somebody else considered worthy enough? Because 3 factors हो सकते हैं. ठीक है? Why is somebody credible? 3 factors. एक, उनके पास ढेर सारा knowledge है, which they can showcase. तो knowledge एक हो गया, उनके पास में experience है. 8-10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कुछ तो सीखा ही होगा. तो क्रेडिबिलिटी एक्सपीरियंस से आती है, नॉलेज से आती है. और एक होता है शाइनी बॉबल. हाउ फैंसी दे कैन एग्जिबिट देयर नॉलेज. शाइनी बॉबल, आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट स्लाइड. कि
if you are able, matlab, what are the things that you need to know about that person to be able to trust that person? If somebody is giving a lecture, you all are hearing what I have to say. Why are you hearing that? Because at some point I have proven ki I am trustworthy enough. I am credible enough ki you are able to hear to me. I am speaking at this stage, तो कुछ check किया होगा background, credibility होती होगी. तो these three things are important कि credibility उससे measure होती है. What is a shiny bauble? If you ask or if you were like curious, write down the things कि आपकी street credibility कैसे बनती है. The results that you might have created, आपका GitHub contribution कैसा है, आपके awards है, honors है, certifications है, degree है, education qualifications है, experiences है, कोई बहुत ही fancy colleges से पढ़े हो, और से some education background, ये सारी चीजों से आपकी एक credibility, shiny bauble, fancy tech labels होते हैं जो आपके नाम के आगे आप लगा सकते हो. Founder and CEO of an organization, woman tech makers ambassador, जो भी आपके labels है, they give you a, मतलब they give others a good impression of something that you have achieved before, right? So for the next part of this workshop, I would invite my fellow ambassadors, Shachita and Priyal, to take it forward from here. Hey everybody, so as you can see the topic is writing your bio. Like everyone is familiar with the word bio, like description. So before writing a bio, you should know why writing a bio is important. Like किसी को करने से पहले किसी की वैल्यू बताना बहुत जरूरी है. Like bio जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी हमारा DevFest हुआ तो आप लोग आए तो आपने स्पीकर्स का बायो देखा तो आप इवेंट में आए. Like विदाउट सीइंग द बायो आप पूछते हैं कि स्पीकर का डेजिग्नेशन क्या है, उसका नाम क्या है, वो क्या करता है, हम क्या टॉपिक से आए. सो डेफिनेटली हम उसका बायो देते हैं, फिर आप पढ़ते हैं और फिर आप आते हैं. सो बायो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लाइक आप अपने बायोज लिखते हैं लाइक ट्विटर में, लिंक्डइन में एंड वेबसाइट, पोर्टफोलियोज, एवरीवेयर. सो हम ये जानेंगे कि इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है राइटिंग अ प्रोफेशनल बायो. या थैंक यू. So I am sure like how as many students and professionals are there. So आप लोगों में से बहुत लोग ने अपने प्रोफेशनल्स बायो इन द लास्ट 6 months में अपडेट किए ही होंगे. आई होप, मैं मान लेती हूँ किए ही होंगे. रिज्यूम्स के लिए किए होंगे, प्लेसमेंट्स के लिए किए होंगे. अपने रिज्यूम्स में अपना बायो डालते हो, लोगों को बताते हो. सो बायो में सबसे इंक्लूड करने का क्या की पॉइंट्स होते हैं? लाइक your roles, your skills, your strengths, your experiences and your values. Like roles, like what role I am having. Like मैं अपने ऊपर एक सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर का रोल लगाती हूँ, आपके ऊपर लाइक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टूडेंट्स, या आपके रोल्स आप डिफाइन होते हो. लाइक आपकी स्किल्स होती है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती है, आपकी हार्ड स्किल होती है. लाइक आप एक गुड टीम वर्कर होते हो, आप एक अच्छे कोऑर्डिनेटर होते हो, या आपकी स्किल्स होती है जो आप बताते हो. लाइक आपकी स्ट्रेंथ्स, आपका क्या एक्सपीरियंस है उस काम में, उस टेक स्टैक में. देन है वैल्यूज, लाइक कि आप क्या वैल्यू होल्ड करके रखते हो. सो अभी तक हमने देखा कि बायो को लिखने के लिए क्या क्या हम की पॉइंट्स यूज करते हैं. नाउ अपन एक एक्टिविटी करते हैं, स्मॉल एक्टिविटी. लाइक एज सेवी कंडक्टेड वन शॉट एक्टिविटी. आप लोगों के पास नोटपैड और पेन थे, तो हम एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको लिखना है कि आपके रोल क्या है. जस्ट टेक 1 minute एंड पुट इट डाउन इन नोटपैड एंड पेन. व्हाट इज योर रोल? लाइक योर टीम लीड, योर लीडरशिप, इट कैन बी एनीथिंग. जस्ट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट रिटन डाउन ऑन अ नोटपैड. एंड इफ यू डोंट वांट इट, लाइक योर फोन पे नोट्स पे भी लिख सकते हो. सो ये चीज आपको रिमाइंड करती है कि आपका रोल क्या है, राइट? Everybody is listening? So roles लिख लिए सबने? Everybody noted down? Okay. Did someone interested to say something about role? Any role? Anybody? Yeah, leadership.
can be considered as a role. So now the next is skills. Like कि आप सब एक दूसरे को बताते हो like कि हमारा tech stack क्या होता है, like what languages you have used, frameworks, tools. So HTML, CSS, Django, Angular, ये सब skills होती है जिन पर हम काम करते हैं, जो हम हमारे roles में भी ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा experience उस tech stack से belong करता है. तो हम पहले अपनी skills लिखते हैं, उसके बाद हम हमारा experience ऐड करते हैं. So I would request you all कि आप roles के बाद skills को भी as a notepad पे written down कर ले, so that आपका वो key features के साथ examine हो जाए. Then है आपकी strength. So आपकी strength, it can be anything. Like suppose in this given example, like leadership, as someone said, like it can be any skills like management and like alignment, like communication. So it can be any skills that you can include into your bio. So you can also take 1 minute and you can write on your notepad about the skills, right? So has everyone written down? Everyone know what is skill? What is your main skill? Everyone knows? Like about your experiences. So I am taking this into a bit fast because I hope that everyone will know about what do you mean by roles, skill and experiences. So the experience will consist like job, internships. It can be anything, like you have passed from the schools, how many projects you have done so far. So you can include all such things into your bio. And the most important thing is values. Like what value you are adding to writing into your bio. And I would request you all, you can think about 5 values and note it down on your notepad. What value you can add into your bio. I am showing the list of the values. Like it can be anything like challenge, community, compassion, fairness, integrity, self-knowledge, justice. You can add any 5 values to written down into your bio that signifies your bio like with this objectives. Everyone can see this, right? At the end, you can take the like a picture as well. Like you can think at your home as well. Like so take 1 minute and written down. So like as we all know, like we have concluded like roles, strengths, skills, experience. So after that we will do like a short activity. You have to like choose anything to make the world, like as developer designer, what we should do more of, like something I can teach and why it is useful. As important lesson, what I have learned into my career, like I can think any of these phrases and given the answer. Like for example, what do you know now and that you didn't know a year ago. Like आज मुझे पता है तो 1 साल पहले क्या नहीं पता था. A personal quality that has made me successful into my career. Like it can be anything, your passion, your hard work. Just think about it and written nicely. For example, मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने अपना important lesson career में क्या learn किया था. आप जाते हैं, बहुत सारी opportunities देखते हैं, तो हम भी जाते हैं, ask करते हैं, उनको लेते हैं, grab करते हैं. That is done. Yeah. So anybody has written like some phrases or threads, like what you are most proud of, like in your life. You did everything, like your hard work, your roles, your skills, experiences. सबने सब किया है, hard work भी किया है. So आपको क्या लगता है कि आपने अपनी life में क्या किया जिससे आप बहुत proud हो, like just think about it and written it. And I hope that any one of you like are writing and thinking about the same. Everyone, has anyone written anything? I am assuming that you all know about roles, skills क्या होते हैं, and आप क्या proud करते हैं, ये सब अपने roles bio में लिखते ही हैं.
सो बायो में क्या लिखना इम्पोर्टेंट है? लाइक हम सबको ये बोलते हैं कि आई एम वेरी क्रिएटिव, बट क्रिएटिव बोलना इज नॉट द थिंग. लाइक यू शुड शोकेस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. लाइक हम हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह सब लिस्ट डाउन करते हैं अपने बायो में. क्यों करते हैं? लाइक किसी को कुछ आइडिया? मैं तो सिर्फ नाम भी लिख सकती हूँ कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स करे. क्यों हम अपने बायो में लिंक्स भी डालते हैं प्रोजेक्ट्स की? क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी? क्यों बताना ज़रूरी होता है अपने रिज्यूम्स में, सीवी में, पोर्टफोलियोज में कि हमने ये प्रोजेक्ट्स करे, हमने इतना सारा काम किया? शोकेस करना, लोगों को बताना. मैं तो सिर्फ डायरेक्ट 5 नाम ऐसे ही डाल देती हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट्स हो गए. यस, या कैन समवन प्लीज गिव मर्ज टू हिम? I would request volunteer to please give it to him. Who said credibility? Yeah, there. There. So now I would like to invite Sachita to continue further on the same. Thank you, Priya. So how many of you are actually writing what we are saying? कितनों ने लिखा है? ठीक है, ठीक है. अभी स्टेज पे बुलाया जाएगा इसलिए पूछ रही हूँ. ओके, ठीक है. So the next thing that we have with us is you need to rephrase your strengths. Whatever strengths you have, instead of writing the basic words ki I'm very good at coding, you could have written some better words, and those better words will be the adjectives that you will be using. These are some descriptive adjectives that you can use. You can click a picture of this and use it in your bio. Keep writing, because at the end we'll be calling 2 people to be reading their bio, and it will actually help you on various social media platforms to get a job, to get ahead in your life. And also you need to have something that will sell yourself, to sell yourself. There should be a USP of everybody, and that is how we are doing it. These are some descriptive adjectives that we have. So final tips are that you could use some of the tools that are available online. You could actually quantify your data, show it with the statistical data. Like I have done 5 projects, so you need to make sure that you mention all those 5 projects over there. Then you need to give credit to the personal experiences that you have. So I would say, whatever, suppose you have started something, a new venture that you have started, but it did not go well. You started a startup, but it did not go well. You did not get any funding, but still you took an effort to start it. So that should be included in your bio, because that is something which shows what you want to do ahead in your life. So it is something that will help you. So finally, it's time. This is your bio. This is what you could use in your bio. There are short drafts that we have over here. You can click a picture. You can start writing it. You all have got like 2 minutes. Once I finish, I'll be calling 2 people to tell about their bio. These are again some descriptive adjectives that we have. Finally, now how many of you have written a bio? अभी तो सबने हाथ उठाया था. अब क्या हुआ? How many of you have written a bio? अभी how come everybody was raising their hands कि when I asked that everybody is writing or not? It is an activity. Make it an interactive one. Anybody who has written their bio, this is the stage for you to come and actually present yourself. How many have written their bio? No one. Audience में लिख रहे हैं. You need 1 minute. We can give you 1 minute. You have written, come up on the stage. We have someone with us. Come fast, come fast.
What is your name? Okay, we have Vivek Raj Gupta with us. He has written his bio. He'll just read it out what it is. No issues. Just read whatever you have. Okay. In roles, recently I'm in GDSC, IPS Academy, social media handler, designer also. Skills, I have Canva, which I use for designing. I know Python, C, C++, like Docker also, for maintaining the apps. Experience, I have done many projects like school projects, for clients, freelancing. Thank you, Vivek. So this is a good one, but I would still suggest to write a whole paragraph with it and make sure to use some adjectives that we have mentioned over here. That way it will become really nice for the front person to like read it and know more about you. Okay. Thank you, Vivek. Give it up for Vivek Raj. Wrapping up, I would like to call upon my co-WTM ambassadors from Indore. Acha, we have one more person who has written his bio. Come up on the stage. Hi, hi Shachita. So hi everyone, this is me Tejas Bansal. So basically, I have built a lot of startups in the past, of course, and also worked with GDG, in the past. So I have written down my, bio. So basically, I'm 21 years old. So I have just written down there that I'm 21 years old. Also, I'm a consultant, basically working as a consultant with a lot of companies. I'm helping them to hire people. So also I have written that hiring people, send resumes. And also I'm a space host. Basically, I host a lot of spaces on Twitter. So I also have written that. And also I have worked with MP Police in the cyber security cell. So I've also mentioned that in my bio. And also I'm building Dastan Live. So that is my startup. Basically, we are, artist management platform. So yeah, that's it. Thank you so Tejas. much. I would request someone from the team to give ahead. Priyal, kindly give ahead the swags. Vivek, we would like to give you the swags as well. Where is he? No, two. First two. Vivek. Give it up for Tejas. तो मैं क्या बोलूं? Already एक sticker दे दो यार. खत्म. Okay, you can come and back. share your experience about writing your bio. नहीं. Swags देने हैं ना. Already दे दिया है हमने. अच्छा दे दिया. Actually, मिल गया. ठीक है. We have already given him the swags. Congratulations, Vivek. You are not getting two swags. Okay, so I would like to call my co-host around, Priyal and Savi. How was the experience for you folks? कुछ लगा ऐसा कुछ मतलब थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप टाइप्स? अरे बोल तो लो इंदौर की जनता. How was the experience for you? गंदा भी रहा तो बोल सकते हो, कोई लोड नहीं है, बोलो बस. अच्छा ठीक है, लेट्स डू अ छोटा सा थिंग. आई वांट टू क्लिक अ सेल्फी विद ऑल ऑफ यू. तो जस्ट गिव अ पोज. एक सेकंड. जस्ट लेट्स क्लिक अ सेल्फी. आ जाओ आप दोनों भी आ जाओ. Everybody just give a victory sign or something. ठीक है. Thank you everybody. Mradula and Anurag, Thank you, kindly take everyone. over. तो कैसा लग रहा है इंदौर की जनता को अभी? ठीक है. Everyone is enjoying so far. तो एक बार हम थोड़ा शाउट आउट ले लेते हैं. हमने पहले जो सेशंस देखे थे, वी हैड मेनी फ्लटर एंथुसियास्ट, फिर एमएल एंथुसियास्ट थे. तो एक बार फ्लटर वाले हाथ उठाएं. कम ऑन जल्दी.
एक शाउट आउट ले ले. सो फ्लटर वाले, शो योर एनर्जी. ओके, तो मतलब बाकी जो थे वो एमएल वाले होंगे. सो कैन वी हैव अ चीयर फ्रॉम द एमएल क्राउड? ओके, तो एमएल वालों को ज्यादा एनर्जी है अभी. सो वी आर गोइंग टू बिगिन आवर नेक्स्ट सेशन. वी हैव आवर स्पीकर मिस्टर भाविक मकवाना, बट उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए हम अनदर स्पीकर को बुलाएंगे. सो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर आयुष शेखर. ऐसे ऑडियंस किसी की भी हो, स्टेज किसी का भी हो, पहुंच हम जाते हैं पता नहीं कैसे. कल कितने लोग आए थे? आप लोगों ने मेरा सेशन अटेंड किया था? तो फिर आप लोगों के चीयर्स और तालियां किसने चुरा ली भाई? बताओ, सेशन कैसा लगा था? कूल. तो देखो, जहां जाते हैं फ्लटर पहन के चलते हैं अपना. वो अक्षय कुमार का ऐड है ना, अपना लेग पहन के चलो, वैसे अपना फ्लटर पहन के चलो. ठीक है, एक टी शर्ट मिली है बहुत मुश्किल से, वो पहन के चलते हैं. अब अगला स्पीकर इतना स्पेशल क्यों है? ऐसे तो हम सभी स्पेशल हैं. दिस इज आई थिंक द फर्स्ट टाइम दैट एक इवेंट में, एक लाइनअप में, एक ही दिन में अपन 4 फ्लटर के जीडीएस प्रेजेंट हैं, राइट? तो सभी बहुत खास हैं, राइट? पर भाविक का इंट्रो देने के लिए हमने स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि ऑर्गेनाइजर्स, या प्लीज इनका इंट्रो मुझे देने दो, ठीक है? बिकॉज एक अलग टाइप का कमिटमेंट चाहिए होता है बंदे में कि 9 दिसंबर को उसकी शादी हो और 4 दिसंबर को वो यहाँ पर टॉक देने के लिए इंदौर आया हुआ है. आप सोच के देखो कि मतलब हम तो अगर सोचेंगे भी ना ऐसा, तो मेरे दिमाग में ऐसा आएगा कि घर वाले पहले बाहर निकाल देंगे, ठीक है? पर भाई आए हैं और अपना टॉक अभी देंगे, आपको डिलीवर करेंगे, राइट? एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इनवैल्यूएबल थिंग्स दैट यू कैन टेक फ्रॉम हियर इज दैट जो सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? और इतनी ज्यादा डेडिकेशन मांगती है कि आपको पता है ये उनका इस साल का कितनावा डेवफेस्ट है? दिस इज द 6th डेवफेस्ट दैट ही इज स्पीकिंग एट, ठीक है? और वो फिर भी आए आज, राइट? तो आज सुबह आप लोग सब सुबह से ही हो, ठीक है? तो सुबह एक मैक्सिकन क्लैप कराया था धनंजय सर ने. तो वैसे ही मैक्सिकन वेव होता है, पर वो स्टेडियम्स में होता है, ठीक है? यहाँ करेंगे तो कोई गिरा पड़ा मिलेगा अभी यहाँ पर. तो अभी क्या करेंगे, सब शांत हो जाए एकदम. क्या यार, बच्चे हो गया, ठीक है? तो शांत हो जाओ, बिल्कुल एकदम शांत, ठीक है? अरे कल भी तुम लोगों ने ऐसा ही किया था मेरे साथ. ऐसा मत करो फिर से, ठीक है? एकदम शांत हो जाओ. फिर क्या करते हैं, आई विल स्लोली मूव माई हैंड अराउंड यहाँ से, और वहां से चीयर करते हुए स्टार्ट करेंगे और वहां पे खत्म करेंगे, ठीक है? लास्ट टाइम टीम सी जीत गई थी, ठीक है? तो टीम सी से ही स्टार्ट करेंगे, पर टीम बी टीम ए वालों बता देना है कि हम भी कुछ कम नहीं है, ठीक है? ठीक है, चलो स्टार्ट करना है, ठीक है? 3, 2, 1. इसी तरीके से चिल्लाते हुए, तालियां बजाते हुए, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज योर नेक्स्ट स्पीकर भाविक मकवाना. So, मेरा YouTube चैनल है कोडीफाई, पवन कुमार चलाता है, तो आप प्लीज उसे ना सब्सक्राइब कर दीजिए. Okay, yeah. Thank you so much, Ayush, for the really wonderful introduction. It was a surprise for me as well. So thank you so much. And yeah, I'll be speaking about Flutter again. Yeah, so we had 4 speakers. Will be we talked about Flutter. Pawan will be speaking on Flutter as well. So yeah, let's get started. You will be seeing Flutter everywhere, for the web as well, mobile, desktop, wherever you want. Okay, yeah. So yeah, we will be seeing Flutter everywhere. Talking about me as well, you'll be seeing me at many DevFest as well. Talking about Flutter. Okay, doesn't work. Cool.
Before talking about Flutter, I'm a Gujarati. Okay. So first of all, like Kem Cho. Okay. So sorry, I started speaking in Gujarati. Okay, so I yesterday went to the Sarafa Bazaar and 56, like everyone recommended it. So there is a one place called Manek Chowk as well, which is again exactly similar thing as a Sarafa Bazaar. So that's where I'm kind of belong from. So I was kind of really fascinated by the Sarafa Bazaar as well. It's this exactly same concept. In a daylight, it's a jewelry shops, and as soon as it's turned dark, it will be a food chalk, Manik chalk we call it. So it was like, okay, it's not working again. Okay, yeah. So this is what Sarafa Bazaar exactly similar. So I really love the vibe over here and the food. As I'm Gujarati, I'm foodie. And yeah, so this is me, Bhavik Makwana. Might be possible you might be know him through a social media. This guy in a photo. So many people actually gets confused. Like I was in a Kolkata talking about Flutter. Some random guy come to me and introduce, like he asked me like I'm a Bharat Makwana or not. So we share the same initials for the first name, and the surname is exactly similar. So people often confuse like, okay, I'm a Bharat Makwana, or he's rather a Bhavik Makwana. So don't get confused. And to get it clear, okay, clicker is not working. Yeah, come forward. Okay. Okay, yeah, I'll stay here only. Okay, so to get the confusion clear, you can just click scan this link. It will open a link tree where you can follow me on LinkedIn, Twitter. You can post pictures about my talk, and you can connect with me everywhere over here. The handle is iBhavik Makwana everywhere. So just you can scan it and you can post a picture about DevFest or anything else. You can message me as well. So yeah, next thing is, yeah, let's come to the main topic of my talk. I'll be speaking about Flutter and alongside how we can actually implement computer vision using a Google ML kit. So we'll be going to talk about that thing. So how many of you actually kind of remember recognize what is this thing? Kevlar. Good. Easier, right? Very like world famous. What's this? Dokla or command? Many actually, like I actually didn't, expected it, but many actually are saying it's common, which is right. It's not Dokla. And if you are, saying it a Dokla, I might get, offended. Like it's actually not Dokla, it's really a different thing. But how you can, identify it? You are not from Gujarat. You are, suppose if something similar is, kind of food is also available over here as well. How you'll be able to, identify it? If it is looking exactly similar, the textures are kind of different, but look like it's actually exactly a similar thing. So how you, identify stuff over there? So at that, this kind of places, actually ML can help you a lot. Identifying food items or many more things. So using a Google ML kit, we'll be doing OCR, QR code scanning, barcode scanning, then text places recognition or image labeling. Or you can also use your custom modeling. You can just add custom models in your Flutter application as an asset, and you can use that custom model in your Flutter application using a Google ML kit. And the biggest example of some of the emulator stuff is done by Snapchat as well. There are many more applications, but if you talk about like the Gen Z people, like folks are mainly using Snapchat a lot and mainly because of the Snapchat filters, right? So that's what we are kind of going to talk about using a Google ML kit. So we'll be trying to identify faces using a Google ML kit, and we'll integrate that particular thing in a Flutter. So you can do it exactly similar thing in a Flutter.
So let's get started. I'll be showing a demo how it actually works. Okay. Yeah, I got the one application which I've created. It contains a camera view. So when I going to zoom in to a particular person, it should recognize the faces. It is also giving me a like it has like I'm currently focusing on iOS, so it is giving me like, okay, yeah, it has iOS has a 2 eyes and nose and like a mouth as well, right? So that things you can identify. On top of that, like if I'm opening a mouth, then Snapchat what does, like they are putting a filter up on that. So suppose if I want to speak something, if try the mouth actually that dot will kind of expand. Okay, so using that you can that data you are going to get using a Google ML kit, and then you can actually put on some filter on top of that. Now this is also a live stream kind of stuff. Like I'm actually getting the exactly all the data live in a particular camera preview, right? So that thing you have to keep in mind. Like also Snapchat does that as well, right? You have to, like, suppose I'm clicking a picture, it is going to get the live feed of a particular camera. So you have to do some stuff over there on live, right? So I'm currently passing the live feed over here of the camera. Let's jump onto the session again. Okay, so we have the idea what we are going to build. Obviously, we'll need some things to get started with the Google ML Kit and Flutter. So Flutter, I'll not be talking about how Flutter works and how you can add a packages or anything else. You already might have an idea about it. So I'll be talking about how you can integrate the Google ML Kit within a Flutter application. So first thing you need is a camera. As I was showing, I was picking up a live preview of the camera. And second thing, obviously, Google ML Kit from the Google. I'm adding it in a PubSpec YAML file. It's a PubSpec YAML file. I'm adding it in a dependency module. Then we are going to do a face detection first. So I was identifying the face of the audience, like in particular iOS, let's say. So I have to process that image. So I'm getting an image. I'm passing that image to one method called process image. It can be any method, like you can name it anything. So I'm passing it to the method called process image. Sorry. Yeah, there is a one face detector method. You can get it from the Google ML Kit, which is from the Google ML Kit. You don't have to do anything else. You have to pass some options within your Google ML, this face detector constructor. It contains a face detector options. So it contains a facial features, like I was drawing some facial features on top of the iOS face as well. So that is there. It contains a landmarks like eye, nose, and many more things. And enabling tracking if iOS is like the face is particularly moving or not, and many more things like that. If you want to go for accuracy of that face detection as well, you can go for lower accuracy as well, medium and higher accurate, I mean. Then enabling classifications, if I'm smiling or not, if I'm sad or not, or I'm neutral, that kind of state as well you can identify. Then like Snapchat does so as well, like a smile to put on some particular filter. So that's what can be done by using this kind of enabling this kind of booleans. So it's just a simple stuff. You don't have to do anything extra. So if you don't know much of ML, which is in my case, like you can kind of use Google ML Kit over here. So this comes in handy. You don't have to do anything extra. Then we got the face detector. We are going to use that face detector, and face detector contains one method called a process image. We are going to pass a particular image, which like I was scanning the entire audience, and like I'm passing that image to that particular this method process image. So I'm passing that image data over here. Then I was drawing something on top of it, right?
So using a face detector painter, you can use your custom one as well. You can draw anything as you want. So I was passing that data to a face detector painter. So it contains the faces. So if you've seen the demo, it was identifying the multiple faces in a square rectangle, but it was only identifying a particular face, which was kind of a bug. But a particular face, like for drawing a dots on top of a face. So you can do many stuff like that using a face detector painter. I was passing a size of like image data, image size as well to identify the coordination of the particular face, and also image rotation. If you want to rotate the image, like rotate your custom painter like that dots in a particular degrees, like 90 degree or 180 degree or 45 degree. You can do that stuff over here as well. So I'm passing the dynamic data over here at the moment. Then I'm initializing one custom painter object with that custom painter, and painter is my face detector painter, which I have earlier used to pass data. And to refresh a state, I'm kind of calling a set state method. You can use any state management technique if you want, and then you can just simply use that. Set state going to refresh the UI, and using that it was actually drawing something on top of the camera preview. So that's where I was using a set state. Now, how I was actually getting that particular image. How I was actually getting the like live preview of the audience, like all the faces. So let's talk about that. So for that, if you remember, I have added two packages in a PubSpec YAML file. One was a Google ML kit. The second one was a camera, which was the first one. So camera will be using to get the live, camera preview. We are first going to define a camera controller, using which we can control all the things like to getting a preview, when to dispose it, and many more things. So we're going to define camera controller over here as a controller. We are going to create one method called init camera. Over there, we are going to get the available cameras. So our mobile devices has many cameras nowadays. Mostly there are two cameras, front and back. So we can get if you are running this application in a mobile device, you will be getting two cameras. Like it will be an array, and you will be getting a 0 and 1 value. If you are attaching a webcam as well, like you will be getting a 3 camera, and so on. So like that, you can actually get the available cameras. Then you have to pass the camera that whatever camera you want to use, you have to pass it to the camera controller. Like I'm passing a camera 0. Camera 0 means my back camera, which is my like a primary camera. I'm statically passing it, but you can kind of switch it as well. Like if you want to go for a front camera, back camera, you just have to change this index from 0 to 1 or 1 to 0, and you'll be able to change the camera as well. Then I'll be calling this method in a init state method from the state class, which is going to help me to initialize the cameras. Now there is one method called controller.initialize. It is actually going to initialize and get the camera, initialize the back camera for me, and going to get some data from that method. Like I was getting a live preview, right? And then I'm calling if it is mounted, like if actually the UI is actually like the camera preview is actually available, then only call a set state to update the preview. Like if it might get some time to get the exit number of camera or exit number of camera preview, like it might take a millisecond of time to get the data from the camera. So that's why I'm calling if mounted, then only do a set state to update the UI. So that is there. Then I'm passing that controller, then value dot is initialized. I'm using that value. If the camera is actually initialized, it is not null, then I'm passing that value over here in a widget. It can be any other widget. For me, it is a camera preview widget. So I'm going to use controller.buildPreview from the camera plugin itself, and going to use that to build the preview. I'm not going to do anything else
Just write one line controller dot build preview, and you are good to go. You don't have to do anything else. Okay, so like you'll be getting something like this, like okay, it's kind of a live feed. I didn't had any faces on in front of me, so I had to go for search for Avengers. Uh, so that's what I do. I'm a big Marvel fan as well, so anything related to Marvel, if you want to talk about, we can definitely. Then processing that image, we got the image, we got the live feed. Now how to process that image, how to get that image. If you remember, I was live previewing all the camera feed. So how to get that? So controller also provides one method called start image stream. Stream means it is going to continuously pass the data until you dispose it, or until you kind of close the application, or any other by any other means it gets closed. So until that time it is going to pass some data as a stream format, and you can process, and it is going to give you a image data. You can process this image in one method which I have created. I have named it as a process camera image over here. So what we can do in that particular image is like that. I'm passing that camera image over here as a parameter, and I'm getting some data from that image, like it's a image size, image rotation, what is the format of that particular image, PNG, JPG, GIF, or anything else, and plain data. Plain data means like how much light is kind of reflecting. I might be wrong. I don't know this plain data much, but how much light is kind of actually reflecting from the particular surface, and like how much actually getting it in particular camera preview, and then you have to process it to draw some things on properly and identify the faces properly. So which is kind of required. Then I'm going to use that image image input data in a input image dot from bytes. So machine can't actually understand what is image data. We have to convert it into a bytes, and I'm going to convert it into bytes, that image data, and pass it. I'm also going to pass the input image data over here. Then at the end there is one more method called process image. There are so many methods, I know, but there is one more method called process image, where we are going to do a final stuff, kind of an end game. I'm passing an input image as a byte, and when I does so, it's just going to get me that thing, whatever I've kind of shown over here. So this is how simple it is. You don't have to write any custom models to identify the faces for the Google ML kit. You can do much more stuff like that using so it's a few line of code, and then you're good to go. Yeah, that's it from my end. Any questions? Yep. Okay, so we have some questions. Hi. Hi, sir. Good afternoon. I just have this one question. You showed a function called, it was an async function called process image. Yeah. Right? And I just want to ask, do you execute that function like every single frame, or what? Because currently, yeah, it is. So it is being executed at every frame. So all of the code that you showed executes every single frame? Yes. Okay, that was my question. That's all I wanted to clear. Okay. Okay, cool. Anyone else? Yeah, over there. I better be over here only. हेलो सर, माय क्वेश्चन इज कि इसमें जैसे कि अभी इमेज डिटेक्शन हो रहा है, फेस डिटेक्शन हो रहा है, तो कुछ ऐसा एमएल किट्स में ऐसा भी है कि जिसमें इमेज को स्केलिंग हो सकती है, जिसके अंदर सॉरी इमेज स्केलिंग यस सर, एमएल किट में ऐसा कुछ है जैसे फ्लटर के अंदर कि जिसमें इमेज स्केलिंग हो सकती है? Image scaling is kind of a different thing, I think. It's not related to ML, right? Or I might be wrong. Maybe Sayak want to answer it? लाइक किसी छोटी इमेज को बड़ा करना, लाइक यस. Okay, yeah, it can be done. Resizing means. Oh, okay. Yes sir. Okay sir, thank you. Thanks, Sayak. That way.
So, what is the difference between React Native and Flutter? Like, it's totally a different thing, as we mentioned. So, like, Flutter is kind of big by Google, and like Both for develop for mobile, na? Mobile Sorry? application. Sorry? Both are developed for mobile application, na? Can you come again? Sorry. Means both are developed for the mobile application, na? I'm really not getting it. Yeah, it is. It is being used for the like mobile development. So React Native is highly used in mobile development as well. It's not going anywhere else. Like there is actually no competition. If I say frankly, like people are making it like that, and people are feeling it like that. It's kind of a competition, but it's not. Like it's totally a different thing. Flutter works really different. Flutter has its pros and cons. React Native does has its pros and cons. How you choose it, like what fits you best, is what I'll call, what you should go for. Okay, so anybody has any more questions? Oh, there are two questions. We have two people. Hello, sir. My name is Tanujan. My question is that what is the reason that the TF-Lite Flutter plugin, which was previously used for the ML toolkit, is now deprecated and is replaced by ML toolkit? What are its advantages? I really don't have idea about it. Sorry for that. I might have to dig it up a bit, then I can maybe answer. But it was earlier a part of a Firebase ML kit, as far as I know, and TensorFlow Lite. Then they have moved it to completely to Google ML Kit as a separate kind of a product, you can say. And sir, one more question. If I have trained a model using Teachable Machine and I want to use it in the Flutter app, so does Google ML Kit provide that facility? You mean custom modeling? Yes. Yeah, it does provide. So you have to put the, like, if in your Flutter application, have you include like images in your Flutter application, like from the assets. The same way you can actually put on the assets in your assets folder or directory. You can put your custom models, and then you can use that custom model. Like you just have to give a path, and then you can do stuff. Thank you, sir. Yeah. Okay, last question maybe. So thank you for the amazing explanation. My question is about, as we are using custom models, can we use the API or we are used to the TF-Lite model for the particular, or shall we use the ML toolkit? Means how can we increase the performance of the Flutter application? I'm not getting it. Like if you want to use the APIs, like we have built a custom model and deployed to an API. Mhm. So will it give the better performance or by using the ML toolkit? It depends. Like suppose in our case, like it was I wanted actually a live preview, and I wanted to perform some filter on top of the using a face detection. So it's better to be, have use a Google ML kit over here. The reason is like I want the result as soon as possible, instantly, right? So that like Snapchat does, so that they do have like kind of, I'm not sure what they are using, but they must be using some packages or some custom their own library to perform the face recognition within a application and in your system, like mobile device alone. So it depends upon a use case. Suppose it requires a really heavy task, and maybe TensorFlow Lite or any other model, any other thing, like the light version of ML libraries can't afford it. You have to do it, stuff in a backend, then you have to call the API to get the data, and then you have to do stuff like that. Okay, thank you, sir. Okay, yeah, thanks. Okay, yeah, thanks it guys. Thank you so much for having me over here. One last thing, please scan this QR code. You'll be getting one application. Like you can rate this session over there, and I can see it live. It is kind of built using Flutter and Firebase. The idea is kind of inspired from the next session as well, from the Pawan session. So you can definitely give it a round. Oh, sorry, QR code. Yeah, definitely. Here.
Yeah, let's see if you guys are actually answering it or not. See, like I'm not seeing the response over here. It should be filled. Like I'm not actually scrolling over here. Okay, now I'm getting the data. Good. Wow, thank you so much, guys. This is me, Bhavik Mukwana, signing off. Thank you so much, Bhavik sir, for the live demonstration and this wonderful session. Now we would like to express our gratitude, and I would welcome Mr. Amit and Nivesh for presenting a token of gratitude to Mr. Bhavik. Can we have a round of applause? Before moving on to the next session, हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी कराने वाले हैं. Yeah, this will be last activity, and just to know that some energy. Yeah. You have to stand up. Everyone stand up, please, fast. Okay. Yeah, and you know this, right? You know, so you have to just do the same thing, okay, repetitively until we stop you, okay, like this, and you have to shout, okay, so start. Everyone, I can't see from that side. Guys, एक दूसरे को मारना नहीं है इसके बदले में. Yeah, don't slap, you know, you're beside one. Keep it up. Once more. वापस से. Keep doing it. That group is not doing. Yeah, you, please. I can see that you are injured, but your one hand is there, right? So big cheers for him. Woo! Woo! Okay, nice. Great. I think जितने भी थोड़े लेजी हो गए होंगे, वैसे सेशन बहुत अच्छा था, तो किसी को नींद तो आई नहीं होगी. But now we have the most awaited speaker for the day. And the most awaited speaker इसलिए because when I was in the crowd, तो मैं सुन रही थी that पवन सर का सेशन कब होने वाला है. They want their कोटपुर का सुपर हीरो here. But before that, वैसे इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, पर मैं दे देती हूँ. So we have our next speaker, Mr. Pavan Kumar, who is Head of Engineering at Frontier and also GDE at Flutter and Firebase. And one more thing about our speaker is, he is the first person in India to have many followers on GitHub. So Instagram नहीं, GitHub. पता चल रहा है open source का power यहाँ पे. So please, we have a big round of applause for our Kodpur ka superhero, Mr. Pavan Kumar. Woo! Once more. Woo! Thank you. Thank you. Hi everyone, how are you all? Good? Where are the other guys from here? किधर गए लोग भाई? So I have some swags, so बुला सकते हो if you want to call your friends. They would not want to miss this, probably. Okay, we have limited time, so let's start. And you have to make some noise whenever you feel like you should do, so that other people can also come. चलो एक बार हो जाए. Make some noise. Cool. All right, so what we are going to talk about today. Okay, cool. So we are going to talk about Flutter in the Web3 space. But before that, did you miss me? How many of you were there in 2018 DevFest? No one? कोई नहीं था? Oh, there was that guy was there. Anyone else who was there in 2018 DevFest? वहाँ पे भी है. Cool. So introduction तो मेरा हो ही गया है.
skip करते. I have some swags. But for that, you have to answer this. Okay, I have one swag only, but ये question है. If someone can answer quickly. That guy on the back. नहीं फ्लटर तो ठीक है, वो तो बहुत ऑब्वियस है. टाइटल क्या था पूरा? What was the title? Flutter? हाँ? Flutter in? ना. Introduction to Flutter. सब तुक्का मार रहे हैं. You are very much near to that, but वो टाइटल नहीं था. What is Flutter? नहीं. Any more guesses? Flutter for noob? नहीं. चलो भाई इसको स्वैग मिलना चाहिए इस बात के लिए, कम से कम टॉक तो याद है. So I'll get you the swag. Swag यहीं कहीं है, अभी हमारे पास है. ठीक है. Okay, so I read this particular quote someday. So what it says is, once a new technology rolls over you, if you are not the part of steamroller, you are part of the road. So why I'm saying this? Because every time a new technology comes ना, मेरे को ऐसा feeling होता है. And I think a lot of people might be feeling the same way, right? And so today, like in 2018 when I came here, I talked about Flutter and nobody knew what is Flutter, right? अभी कितने लोगों को पता है what is Flutter? 4-5 टॉक हो चुकी है, I guess. मतलब ये चौथी है, पांचवी है, सही कुछ है ना? So I'm expecting कि सबको पता होगा. So I am like very much keen in learning new tech, whatever comes into the market. So I started doing this. How many of you have worked on Django? Django पता है लोगों को at least, चलो. So Django I used to do in college. Then I moved to Kotlin. Kotlin पता है? How many of you know Kotlin? That time Kotlin was in early beta. And I knew that this is gonna be something good. And then Flutter. And then in 2019, I had this thing in mind. You can click pictures by the way, but yes, please stay focused because अभी बहुत कुछ आने वाला है. ये तो शुरुआत हुई है. So, जब मैंने इस Web3 का नाम लिया उस टाइम पे, when I used to tell people कि I am doing something in the Web3 world. So लोगों का मतलब मेरे साथ हमेशा ही होता है, ठीक है? In last many years, I have been doing this कि I am pushing some new technology and everyone was like this only कि क्या करते रहते हो भाई, ठीक है? So we are gonna talk about Web3. ये तो सबको पता चल गया है. With Flutter, I will tell you what is the perception of people when it comes to Web3. So this is what is happening, but I have a very different opinion. So before I show you more stuff, you know what kind of stuff I am showing. So what you will learn today. So it's gonna be very easy. Basically, we will talk about Web 2 plus Web 3. Not Web 3, not Web 2, but Web 2 plus Web 3. Okay, let's start. But before that, let's do something. So I like feedbacks, okay. So what you have to do, I created this app, DevAdda. This is for all the conferences to get feedbacks and to get your emotions out. And also to connect with each of you, or you can connect with me. So you have to just scan this QR and you will know the process. So we have like 2 minutes. Scan karo, login karo, and you will find something as DevFest Indore. Let me know once you log in. Anyone? Google login करना है. Login हो गया? Can you see DevFest Indore? हाँ? घूम रहा है? Okay, good. That is supposed to happen. किसी का हुआ login? How many of you could log in? No? अच्छा जनता आ रही है, थोड़े से मीम्स और लगाने पड़ेंगे मुझे. Good, good. हो गया? Okay. So can you see DevFest Indore? You can click there and you know what to do with that now.
So I have like intentionally removed the chat feature for obvious reasons, right? I know people in Indore are nice, but Delhi में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? So उसमें और बहुत सारे features हैं. So there is a React button. You can use that whenever you like a meme or something. You can do something like that. And it's a Web2 app, by the way. Just saying. So moving further, we will talk about Web2 plus Web3, but this will be a little bit different. This will be Flutter plus Web3 because I'll solve so many queries of you which you might be having when it comes to Web3. So generally, what is the perception of Web3 for people? I'll show you. This. Right? And everywhere I go, whatever event it is, people are always like this. I'll show you. Which is, I think, a very bad example of showing someone Web3. So what I say is this. I told you there is a lot of memes, right? So let's talk about what's Web3 then. So if you'll go to Wikipedia, you will find this, that Web3 is an idea for the new generation, new iteration of web, and blah, 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 right? Again, no explanations, right? What is Web3 exactly? So we will talk a little bit more about it. So this was Web 1.0, which I called read-only, right? How many of you have used probably Orkut? Anyone? So I think Orkut was the start of Web 2.0, right? Before that, people used to just read articles online. So basically it was read-only content. Then a new generation of web came, which we call Web 2.0, where you saw Facebook, Instagram, Twitter, where you could read also and write also if you have seen, right? Whatever you are doing. That's where the concept of NFTs, smart contracts, everything came into the picture. If I want to show you in terms of examples, then you can see this example basically, right? Web 1.0, basic web pages, HTML, e-commerce and all. Web 2.0, you can see social media, mobile access, high quality camera, video, and all that stuff. And then Web 3.0, where you will see dApps, NFTs, Metaverse, and all these things. Okay, right? सही है? कुछ noise वॉइस हो जाए यार? Cool. अच्छा. Let's move further. I want you to tell me what this cloud is about. Okay, anyone can answer what this is? Blockchain? Crypto? What else? Smart contract or? Okay, is it Web3? No. This is a very small part of Web3, which people get confused with. The real part I would show you. This is the real part of Web3, which you can do. Can you read something here? Is it different than the previous slide? Right. So my reason of using Web3 is this, not that one, right? So I'm here just to change that perception of people that Web3 is all about cryptocurrency and tokens and all. Web3 is much more than that, right? Where I talk about healthcare, I talk about banking, I talk about women's safety, I talk about privacy, I talk about identity, right? All of these areas are something where there are so many use cases which you can solve using blockchain. So again, why I am here? I am a Flutter guy, right? People know me for Flutter. But before that, I just wanted to give some idea that
what we are going to do. What do you think? How many people think that this will happen? You can raise your hand. And how many people think that it's not going to happen? Okay, both of you are wrong. वैसे मेरे से कोई पूछेगा तो मैं वैसे उसको यही बोलता हूँ, अभी स्क्रीन ही बंद हो गई है, ये मेरे साथ होता रहता है. That's okay. Okay. आ गए हम वापस, I guess. Okay. This is what I say. I'll tell you the reason that why I think that Web3 is not here to replace Web2. It's similarly, I used to get a question that will Flutter replace Android? Right? So that's the same case here. Can someone tell me what this entire screen is about? Whatever you can see. Communication. What else? Network. What else? Evolution. Information. Or innovation. So first picture here is a newspaper, right? How many people still read newspaper? But this news is available online, right? Online people can consume news, right? But still, why you use newspaper? Huh? Good for eyes. What a genuine answer. What else? Traditional method, right? Another one is telephone. How many people have this telephone at house, like at their homes? Many people, right? But we have the option of mobile phones, right? This letter, which you can see, that's another thing which is still in existence, right? So that these things, probably you can relate the newspaper as Web 1.0, right? This telephone as Web 2.0. But did something come and replace them entirely? That's your answer, basically, right? How many of you meet each other and close your eyes when you talk with each other? But you do the same thing on video calls, right? Like you disable the video mode. That happens, right? So that means that technology is not about that. Whatever functionalities you have, you are always gonna use that, right? Or you are always gonna be going that way. It's always been like the mixture of things. That means that everything can coexist in this particular world. And that's what I wanted to say by this particular slide. Okay, long enough, right? We have done the introduction of Web3. I guess you are a little bit convinced. So smart contract, how many of you know what is smart contract? Okay, few people, right? I'll show you what is smart contract. So they are basically simple programs stored on a blockchain, right? So basically whatever you do on Web3, that goes through a smart contract. So whatever algorithm you are writing, that's a smart contract. If you are doing some sort of, you are making a program which does something around NFTs, that's a smart contract. So smart contract is nothing but a program, the normal program which you write. So now we will go inside how Flutter and Web3 connects with each other. Web3 plus Flutter, okay, the process, how we can connect them. So I'll give you a very simple example. So what we will do, I'm not going to explain each and everything, but this will be the process. That first of all, we will set up the development environment. Second is, we will create a truffle project. How many of you have used NPM? NPM Node Package Manager, probably you might be knowing, right? So there is something called Truffle, which is another framework by which you can create blockchain apps, basically, or you can create smart contracts locally on your machine. Then we will write our first smart contract. Then we will migrate them, compile them. Then we will test them. And then we will link it with Flutter. How? I'll show you.
And then you can create your UI and interact with those decentralized apps. I see some faces behind. So some people are excited over there. Some people don't care at all. These people are nice, a mixed audience. Anyway, so let's see this example where it's an election kind of app because it's for Delhi government. Okay. I mean, I'm going to push it because they feel that there is some problem with the election voting system. So we can create something like this, right? So basically, it's nothing but you can take votes from people and this will be decentralized. How you will create this kind of stuff? So it's very simple. You can write a smart contract like this. Again, you don't have to. How many people understand this code? Excuse me. Yahi aaye ho na aaj? What's interesting happening over there? Cool. So, how many of you can understand this? It's a smart contract basically. उधर वाले लोगों का कुछ अलग रिएक्शन है. They are like कि भाई तुम्हारे लिए रखा था मैंने, मुझे पता था कुछ लोग मुझे मिलेंगे ऐसे. Anyway, so this is a normal smart contract. This is nothing but like it's very much similar to JavaScript only, right? We are using Solidity over here, and we are using, let's say, Truffle. Okay, Truffle is again a framework which you can use with Node.js, and you can create all these kind of things. So moving further, I think we lost the screen again. Okay, and then we have something called Ganache, which is a local environment to set, like test your blockchain, right? So you have to do all this setup if you want to be a smart contract developer, and that's all you have to do. Then we will move to the Flutter part. So how many of you write Flutter apps today? You guys don't do anything? Have you written any apps in college? Print out to karate hoge? So writing apps is very much similar when it comes to Flutter. Okay, so I'll tell you how you can write your Flutter apps which works for Web3. So there are these three libraries which I'll tell you. Libraries, or you can say packages or whatever, but the main objective is to work on 3 dimensions. One is Web3 Dart, which is very much similar to Web3 library in JavaScript. That's basically a port of it. Then there is something called Trust Wallet Core. Trust is a company, basically Trust Wallet, which has developed so many core specific stuff when it comes to wallets. And third is Wallet Connect. So now we will go one by one. Login and sign up, how many of you have seen in the apps? तुमने कुछ नहीं देखा, मैं समझ आ रहा है. तुम मजे काटने आए हो सारे उधर वाले. So login pages, how they are usually like, if we talk about Web 1.0, this is how it used to look like. Can you see the difference between them? Right. Web 2.0, it was Google sign in, Facebook sign in with Twitter. And when it comes to Web 3, there is something called connect your wallet. So basically, when we talk about Web 3, everyone has a unique identity. That is your address, like your normal home address. You have an address, and you have to connect your wallet with any particular social media. For example, if there is a Facebook's alternative in Web 3, you don't have to do Google sign in. Actually, you can do it as of today, but you don't have to always. If you want it to be purely decentralized, you will connect your wallet. And it's very easy. There is something called Web3 Auth, which is again a new kind of introduction where you can use Google sign-in also. It will be sort of decentralized, not exactly, but yeah, that's an option. So Connect Wallet, how that works. So I'll talk about Wallet Connect from here. I mean, until unless you are interested into this, obviously you will never use this. But if you are a little bit interested in Web3, you can definitely use it. So how Wallet Connect works, there is a specific library, Wallet Connect. You can add it to your pubspec.yaml. And
there is basically one instance of the WC client which you will have, which will give you on connect, on disconnect, on failure, and all those kind of things. How this works? So basically, whatever website you opens, for example, you opens Facebook, and when you click on a login button or wallet connect, it shows you a QR code, right? And you have to scan that QR code. For example, I showed you one screen where I asked you to log in, right? That's the similar kind of QR code you get. And once you click on it, it asks you on the phone that do you want to connect your wallet? And then you get all these callbacks. It's as simple as that. And then there's some peer information where you can specify what is the name of your wallet, URL description, icons, whatever you want to do. And there is one method which is connect new session, by which you can connect a new session. That's all you have to do to connect your wallet. So you are done with the login part, basically. People at that side. I'm watching you. So, see, I knew there will be always some people for which this slide will make sense. I'll give you another chance. Next time I'll show it for these people. Okay, cool. Okay. So, next is wallets and wallet core. So, whenever you have a wallet, right, there is some specific things which you want to do. I told you there will be an address associated to you. How you will create that address, right? So, and the real Web3. So, how many of you have used WazirX by any chance? सबने यूज किया है और तुम्हें वैसे Web3 पता नहीं कुछ. So WazirX यूज किया है. CoinDCX maybe more people. Okay. और मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहे. CoinSwitch, FTX, तुम बड़ा दर्द हुआ होगा अभी कुछ दिन पहले है ना. All right. So the point is that these wallets are like the wallets which you have used or the apps which you are used are custodial wallets, which means that they are not decentralized or exactly decentralized, right? They are still centralized. Because WazirX mein, how do you sign in? Google probably, huh? Username, password, right? But I just showed you that that's not how it works, right? So that means you are giving your information to WazirX and they are handling all your assets. So all these companies are handling your assets. So tomorrow, if something happens to those companies, you will lose everything, right? So that does not mean. So that means that decentralization was never meant for that, right? You cannot lose something because at the end, the whole concept was that nobody will have access to your stuff. It's your identity, your wallet, your assets. So how does it work in real life when it comes to decentralization? It works like this. So you have a mnemonic. It can be of 12 words or 24 words. So basically this is your key. If you lose it, you lose everything. So what is mnemonic? Again, these are collection of 2048 words. And these are predefined. And these are generated based on an algorithm based on the current time. And then these are always supposed to be unique. So whenever you create your wallet, you get this mnemonic and you have to keep it safe somewhere. It can be a ledger, which is a hardware device. It can be a simple paper at your house, right? So, and then you use wallet core, the library which I talked about, to create your wallet with this mnemonic. So you will enter a mnemonic. You can import your wallet. And you have just a method create wallet which will create this mnemonic for you. So right now if you see hdwallet.create with mnemonic, so it will create a wallet with this mnemonic or import it if it is already like created before. So that's how the creation of wallet works. Now next, as you can see, this wallet has so many things. So you can get this mnemonic on the top. And how many of you know Ethereum? Ethereum has a coin. Do you know which coin? Ether, right? Similarly, there are so many other chains. Polygon, Matic, right? Kava, suna hai? Binance,
BNB, right? So all these basically chains have their specific coins. How you will access them? You can get address of each these coins, right? Or each these chains. So they can have different address. So there is something called Ethereum based chains, right? Or EVM based chains. So what is like Ethereum and Polygon, if you'll see, the Polygon is Ethereum based chain. What does that mean is that the address of both will always be the same, right? So that's the concept. Another thing is public key. How many of you have read about cryptography and all? A little bit at least, right? So you know about public key and private key, I'm sure, right? It's the same thing, nothing different at all. It's the same thing. And then you have a private key which is with you. There is a public key. You will have the access of private key. If you lose it, you lose that particular wallet. Then you have a key store, which is nothing but it's a way that you can store your information inside your device. For example, if you are using iOS, right? There is something called keychain. How many of you have heard about it? Keychain. Keychain, no one? So keychain is the place where this key store gets saved. If you are using Android, there is something called scoped storage, right? Which is very much specific to your application. That's where this key store gets saved. These people, I have something for you as well, yeah, don't mind. So this crowd is very good. तो मैं दिखाऊंगा कुछ अभी रुको. So next thing is transactions, okay. So one part we did was wallet. We understood what is smart contract, right? How you can write a smart contract. Then there was a login part where you saw something about Wallet Connect. That's how the login part works. Then wallets, which is your identity, like your address, your coins, your assets, your NFTs, whatever. Everything will be in wallet. But now how the communication will happen? For example, you want to send me something, how you will do it, right? So everything happens through this transaction. And there is something called gas fee. How many of you have heard about it? Gas fee, right? So every transaction is associated with a gas fee. So for example, if I am doing something for you, there should be there will be a particular system somewhere which will be doing that stuff, right? If I am sending some, how many of you have used torrent? How many of you actually do piracy? You can be honest, Sabo. So basically, torrent works very much similarly. It's again peer-to-peer stuff. So you know that there is something called leeching and seeding. Anyone? Right? So that means someone is there who is using their internet connection so that you can download a particular movie as fast as possible. Right? So that is how gas mechanism works. So there is someone who is the miner, and he is actually using his system to help you with your transaction. So he needs a fees for that, and that's what we call gas fees. So how transaction works actually? So basically you have this coin. So for example, we take the example of Bitcoin. How many of you know Bitcoin? Right? So for example, if this is a Bitcoin, there will be a to address, there will be a change address, there will be a private key which is with you, and then you will sign the input, like what amount you want to send, what is the to address, what is the coin type, a basic information. And that's how you sign your transaction, and then you just send it. So you broadcast it, right? Broadcasting is like sending to the node server, right? तुम्हारे लिए मैंने बोला था ना एक और है मेरे पास. Next one. Web3 Dart. Okay, now let's come back to that. So we made a smart contract like that election app, right? अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, right? Voting app. So smart contract we can create. We can use Ganache to use the local sort of RPC server, let's say. How we will use it with Flutter. So you can use Web3 Dart
This is a library. How it works is basically you will import this Web3 Dart. You will have the local URL. It can be some, like if you have deployed it somewhere, that URL can be there. For example, if you are using Infura or something. Then you have a client and Web3 client and your credentials. And that's how you will just connect with that. And it will give you the balance and all that stuff. Similarly, for sending the transaction, so there is something called ABI, which will be generated by that smart contract, which will be a JSON file. It's nothing but, it's just that we call it abstract binary interface, which is nothing but some code which says that what kind of methods are there in that smart contract. What are the variables, what are the methods, and you can direct import it in your Flutter app. It's a JSON file. How many of you have used JSON in Flutter? Some people, right? So it's a very simple concept. That's how you use it. And then we have, for example, get contract function, where you can just load that particular file. You can access the contract ABI, ETH address, contract, whatever you want, right? So that's how it works. I know it's a little bit difficult in first call. Then we see you can get the keys from there. You can get the contract. You can send the transaction. And that's what I like in the previous transaction part. That was the similar thing which was happening. But this time it is happening with your smart contract which you have created. And then when you will go back to Ganache, you will see all these transactions happening. And that's how the entire Web3 ecosystem works. किसी को समझ आया? किसी को? नहीं? इधर? इधर? तुम्हें तो आएगा भी नहीं. इधर वाले सही है. All right. So Web3 is nothing but it's just that Web3 applications are made using Web2 only, right? So at the end, it's just about going with the technology. If you have a use case, you can use your existing knowledge. You don't have to do anything different. You can just use a library, let's say Web3 Dart, and you can get the job done. That's all you have to do. So for example, I work in a company called Frontier, if you have already heard about it, right? So we at Frontier love Flutter, right? So when I went there, before that, only mobile apps which used to be made for Web3 was being done using React Native, right? How many of you know React Native? What's the reason? Reason is because most of these libraries are available only for JavaScript, right? So when it comes to JavaScript, I guess there was a talk on JavaScript also, so you know how big JavaScript is and how big the community is, right? So everything starts from web. Then now it's a big challenge for us as mobile developers to do something on the mobile side of things. So now people like you, people like me, came together to create good stuff, which can be a good learning for you as well. That's why I'm showing you all this. So for example, our app is made using Flutter. So you can see all those functionalities which I have there. For example, it has a wallet. It has different blockchains which it supports. So all of these things can be there. So if you have any question, you can ask. Anyone? उधर तो होगा भी नहीं. Any questions? Yes. Hello, sir. I'm Rishabh. Yeah. My question is, what are some more new features in Web3 which may expect in future? See, feature-wise, there is nothing like a specific feature which just comes. It's just a tech, and you are the one who will create all these features. For example, people came with a lot of communities, right? People started creating a lot of DAOs, right? Yes. Then NFT came into the picture, which is another smart contract, right? It's just a different protocol. So people write these protocols. There are a lot of swapping mechanism which comes into the picture. Both, like,
it's like how our traditional system works, right? When we talk about Web 2, how many people talk about stock market? Yes. Not everyone, right? Because stock market and trading is just a part of Web 2, right? It's not entirely that. But there is banking, there is a lot of other stuff, right? Similarly, in Web 3, it's just the name is confusing enough for people to create that hype. Otherwise, it's just the same thing, right? Yes. It has the way of doing trading and all those things which you can do with Web 2, you can do with Web 3, right? So basically, there is not a specific feature which has been created. It's all that you can create whatever you want to create. Okay, thank you, sir. Welcome. Anyone else? Hey. So you have questions? Pakka? We'll come back to you. So my question is something related to security perspective actually. So I guess आप लोगों को मालूम होगा recently like थोड़ा time पहले Instagram में एक bug निकला था that if you open a story like it will crash your Instagram. If you guys know about that. Yeah, Instagram makes story like if you click on that. So what that guy developed is he basically expanded the pixel length. That somehow crashed the Instagram app. Similarly, let's say for Web3, अगर मान लो हम कुछ भी बनाते हैं, let's say एक wallet create करते हैं, जिसमें जैसे कि specific like just like Paytm wallet, कि this much amount only can be stored. So वो जो length है of that parameter, if can be tampered. Length cannot be tampered, but the thing is that there can be use cases, right? No. Where it is not properly like similarly to Instagram, right? They didn't thought about that particular use case probably that people can do something like that. नहीं, like what I'm asking is, for example, from security perspective, let's say कि हम लोगों ने जो भी आपका ऐप है, इसमें 6 वॉलेट्स हैं हमारे पास. हर वॉलेट की कुछ ना कुछ क्वालिटीज होंगी या कुछ होगा. लेट्स से कि इसमें इतने से इतना बैलेंस आ सकता है, इसमें इस टाइम से इतना हो सकता है. ऐसी फंक्शनैलिटीज बेस्ड पैरामीटर्स होंगे. वो पैरामीटर लेट्स से टाइम AM PM अमाउंट 2000 to 5000 क्या वो टेम्पर हो सकते हैं? No, that cannot be tempered. Okay, and other than that, other than tampering, security perspective से how much it is secure? Next thing, how? कितना secure है? Okay. So basically, see again, it's like that. There are a lot of things which happens with these smart contracts on regular basis, right? The security is totally an individual's choice, right? If you are creating a very big project, for example, there are very good projects. For example, Ethereum. Let's take it as a project, right? So for whatever project, for the success of it, they have to make sure that there is enough security. Nobody can breach that project, right, by any means. So basically, most of the time, they don't breach the security part of it, right? Most of the time, you will see that there is some third party, right, who actually uses that network or uses that smart contract to do something for the people. For example, if there is a XYZ exchange, right, so they will basically talk to that network, right, or blockchain or smart contract, let's say, and they will do something which will actually create the issue for the user, right? So ideally, if you say something is growing big, so they make sure there are audits and everything happens in Web3 also, right? So the security never becomes a concern for the end party, right? Because they do all of those things. But when something like this happens, for example, if you have heard, there are a lot of meme coins which got created, right? And they clearly know that they are exploiting people, right? And that's where the breach happens most of the time. For example, there was a Netflix series, Squid Game, right? Have you watched it? Most of you might have, right? So someone used that opportunity to create a coin for that, right? Squid coin. So people fell for it because they thought that it's a trending thing. So, we should also invest because the prices were going very high like this, right? And then that's where these people exploit, right? Because now they see that it has jumped to a certain extent, they can pull everything. So those kind of security flaws are there. But in general, if you see that as the root of things, it's very much secure. Okay. Hello. Sir, I do have one question. Yeah. That is a general. Like, what's the one use case of Web3 which has attracted you to get deep dive into Web3 space? Okay. So I'll tell you. So initially when I started, right, I was very much interested into the web part of it, like the wallet part of it probably. But
if you'll ask me currently, so I'll tell you that some of the specific things are related to healthcare, which attracts me a lot about Web3. So I don't know how many of you knew, but there was cancer study being done recently, right? Where they wanted to collect users' data, but users were not willing to do it because of the privacy and other parts of it, right? So that's where blockchain enters into the picture, right? Another thing I'll tell you, there is another project which I am working on, and like it's still in a very early stage. But in India, there's a big issue that people don't have their medical history, right? Which is not a problem in US, if you know. But there is another problem with that, that the hospitals have control over it, right? That they have their own monopoly, that they share their data with like 10 hospitals, for example, right? But India does not have. Do you guys know that your parents might be going through a lot of blood tests and all, but do they have medical history? No, right? Most of the time you just have those reports, right? By like maybe for last 1 year or 2 years, right? So that's a problem statement which I think can be fixed with blockchain. So there is some project which I am working on, right? If you want to know more, you can come to me. I'll definitely tell you more about it. So healthcare is one of the things which I am personally a big fan of, like where I think blockchain can be a big impactful thing to do. यार उधर से क्वेश्चन लेना है मेरे को, ठीक है? The last question. Hi sir, my name is Shashank. So recently one of my teachers from college said that Flutter बकवास है, Flutter सिर्फ hackathon के लिए use होता है. So how can I explain to him that Flutter is far better than other options available like React Native and etc. My question is कि तुम्हें explain करना क्यों है? अब तो सर से discussion होते रहता है मतलब उसी पे. See, I'll tell you one thing. Like she might have a different opinion. That's totally fine. But at the end, जिसने use नहीं किया, I won't take their advice at all. He has used it, both React Native and Flutter. He has used both. She has used both? He. So, okay. अब मैं क्या बोल सकता हूँ? Maybe you can give him my number. We can have a private conversation. Sure. उसके बाद हम तुम्हें बता देंगे क्या conclusion निकला. Sure, sir. But I think, see, the point is that, again, I am not a fan of any technology until it is solving any problem for me. See, it can be React Native, it can be Flutter. The use case is very important what you are creating. For example, I showed you one app in the beginning, right? जिसको मैंने बोला था scan करो and voting करो या whatever you want to do, right? उसकी मैं बोलूँगा लोगों को app install करने के लिए तो उसका क्या sense है? Why people will do it, right? इतना time किसके पास है? And why people will install an app for just that specific thing? So वहाँ पर तो app का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है? So similarly, अगर आपके पास ऐसा use case, for example, as of today, if someone asks me कि मुझे augmented reality पे एक project बनाना है, तो I probably won't recommend them using Flutter. I am telling you here itself, because at the end, if you are writing code twice for Android and for iOS natively, then what's the point of using cross-platform? So it's all about use cases. तुम्हारे टीचर ने कुछ बनाया होगा, फंस गए होंगे, नहीं हुआ होगा solution. So it's okay to have personal opinions, but again हम बात कर लेंगे बाद में, ठीक है? Sure, sir. All right, guys. I think we'll take questions later. ठीक है? एक और है मेरे पास. And this is very important. When it comes to college, I definitely show this message to people. The technology is good, but don't let it affect your health. So with this, thank you. You can scan this QR if you want to connect with me. And thanks for the organizer for inviting me here. And thanks for coming here on Sunday. Thank you. Thank you so much, sir. अच्छा मुझे भी. So audience, मजा आया? थोड़ा जोर से और जोर से. तो हम मान लेते हैं कि थोड़ी ऑडियंस थक गई है.
इधर कैपेसिटी अभी भी है क्योंकि हम लाए हैं बहुत सारे स्वैग्स, बट उससे पहले वी वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अक्षय मालवीय फॉर प्रेजेंटिंग अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड टू आवर स्पीकर मिस्टर पवन कुमार. थोड़ी तालियां हो जाए. Cheer up, guys. Woo! So it's time for swags. Okay, but for swags, someone has already, done something, so they will get, the reward for that, and hence comes for the social media engagement. Okay, so as promised earlier, that we will give swags to the most active, whatever tweets, post, likes, and comments. Okay, so for that, we have 3 categories: LinkedIn, Twitter, and Instagram. Okay, so yeah. अच्छा, मैं जस्ट बता देती हूँ पहले. सो डेवफेस्ट आज हुआ है, बट पूरी टीम प्रिपरेशन 1 महीने पहले से कर रही है, एंड वी हैव बीन इन्वॉल्विंग पीपल ऑन सोशल मीडिया. ओके, 3 महीने पहले से कर रही है पूरी टीम प्रिपरेशन. तो हम लोग सोशल मीडिया पे लोगों को एंगेज कर रहे हैं कब से, और जो एक्टिव वॉलंटियर्स थे जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, सो वी आर प्रेजेंटिंग स्वैग्स टू देम. सो नाउ आई एम कॉलिंग अपॉन आवर टीम to distribute the swags. Okay, so for LinkedIn, we have first winner, Nandini Chachad. followed by Nandini. Please come. Nandini Chachad, where is she? Where are you? Gai? Gai. Not in problem. Okay, next we have Tanay Patil. Tanay Patil. वो भी गया. Okay, they are active in social media, but not in, Prerita Bhokantar. Prerita Bhokardankar. वो भी गई क्या? Next we have Instagram. So for this, we have our winners. Shivang Mishra. क्यों ये कल वाले? Okay, next we have विशाल परमार. कोई तो आ जाओ. Okay, we have Vishal Parmar. Give a huge round of applause for him. Finally, 1 out of 5. He's Insta guy. Next is Aviral Jain. Aviral Jain. Aviral Jain, please come on the stage. नहीं है. Okay. Then we have Twitter. And the names are? Anshul Soni. Yash Sehgal. हर्षित खंडेलवाल. वहाँ पे. Ooh. Fan following. Yash Sehgal. Okay, okay. नहीं है. यश सहगल और हर्षित खंडेलवाल. Okay, so we have Yash Shegal. Huge round of applause for him. Woo! हर्षित. Yash, please stay you. Yeah, and next is Harshit Khandelwal. Once more. Okay, so these 3 were the guys who are active in social media as well as in what I can say in person. Okay, so yeah, please come. एक ग्रुप फोटो हो जाए पहले हमारा. आ जाओ सबको. Center, please. So you for everywhere that we had this turn and I knew it. But I've been ready every day. You know everything's alright. Are we gonna pray? Are you gonna pray?
them. Woo! अच्छा people, अभी इवेंट खत्म नहीं हुआ है. So we have a very designated guest and our GDG team lead, Mr. Tushar Pal, who is the co-founder of Protons Hub, and we are inviting him to give the keynote ending towards this DevFest event. So उसके पहले एक बार cheer हो जाए. Woo! Give a huge round of applause for Tushar sir. Once more. हेलो इंदौर. आवाज नहीं आ रही यार, मजा नहीं आ रहा. स्वेग चाहिए. अब फिर से हेलो इंदौर. इससे होगा ना. हेलो इंदौर. सबसे पहले I will not take it too much of time because we are already close to event. So मैं ये नहीं बताऊंगा कि GDG क्या है, DevFest क्या है, कम्युनिटी क्या है, क्योंकि वो ऑलरेडी सभी लोग बता चुके हैं इसके बारे में. So इम्पोर्टेंट बात करते हैं. So सबसे पहले I want to know real feedback of DevFest. So सबसे पहले इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि सभी लोग अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाएं. अब DevFest को रेटिंग करने का एक तरीका है, सिंपल सा. जितनी जोर से आप क्लैप करोगे उतना मुझे फीडबैक मिलेगा कि हाँ इस लेवल पे DevFest हुआ. स्पीकर्स कैसे थे, स्पॉन्सर्स कैसे थे, कैसा रहा इवेंट. Come on! Nice, nice, nice. Thank you so much. Thank you so much. It's really great for us कि आप लोगों को ये इवेंट बहुत अच्छा लगा. And इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है. ये इवेंट को कराने के लिए मतलब ये जो DevFest है ये हमारे दिल से जुड़ा हुआ इवेंट है. इस इवेंट को हमको ऑर्गेनाइज कराने के लिए हम साल भर से पूरा वेट कर रहे होते हैं कि यार अब नेक्स्ट ईयर आएगा, DevFest आएगा. अभी जब DevFest का लास्ट का टाइम चल रहा था तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्या यही एंड है क्या, मतलब खत्म हो गया. मतलब ऐसा लग रहा था कि यार चलना चाहिए कंटिन्यूस, ये इवेंट चलता रहे चलता रहे. सो सारे जितने भी ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, सभी लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया था इस इवेंट के लिए. एंड आई रियली अप्रिशिएट. एंड स्पेशली क्योंकि बहुत हमने बड़े लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया, तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज बाय आवरसेल्फ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है. तो यहाँ पे कुछ स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी हमको. तो मैं सारे स्पॉन्सर्स को अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज जो इस लेवल पे हमने हमारा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, ये सपोर्ट उनका बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया. सो मैं चाहूँगा कि सब लोग उनके लिए क्लैप भी करें. So these are some pictures that we click out in the meetups and everything. These are our team. And यहाँ पे देखो कम्युनिटीज बहुत सारी होती है. टेक कम्युनिटीज होती हैं, दूसरी टाइप की कम्युनिटीज होती हैं, पर मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे इंदौर के अंदर एक ही कम्युनिटी है जो एग्जिस्ट करती है, जो दिल से कनेक्ट करती है, और वो हम लोग हैं. So, sorry. So feedback form आप लोगों को मिल जाएगा उसके अंदर. Basically, we will basically give you the email and we will mention about the feedback forms.
सो उसको ऑफिशियली तरीके से भी भर देना. आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्लैप करके ऑलरेडी फीडबैक दे दिया है, बट वी ऑल्सो नीड ऑफलाइन फीडबैक. सो वो आप एक बार मुझे उसमें फॉर्म को फिल करके दे देना. दे आर द वे. एक्चुअली दे आर मेनी पीपल्स जो बोल रहे थे कि यार कैसे ज्वाइन करना है, कम्युनिटीज को किस तरीके से ज्वाइन करें, कैसे करें. सो दे आर सम हैंडल्स दैट वी आर हैविंग. इसको आप स्कैन कर लीजिए, आप कनेक्ट करें हमारे साथ में. और जीडीजे को ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप एक्टिव रहो कम्युनिटी में. जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे अटेंड करो, अपना पार्टिसिपेशन दो, अपना सजेशन दो. और इस इवेंट्स को, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको आप बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने सजेशंस लेके आओ, अपने इनपुट दो. सो दैट वुड बी ए बेटर सॉल्यूशन टू ज्वाइन कम्युनिटी. एंड ठीक है, अब काम की बात हो गई सारी की सारी. ठीक है, अब फन की बारी आती है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारे के सारे ऑर्गेनाइजर्स, वॉलेंटियर्स, पूरी टीम को मैं बुलाना चाहूंगा तहे दिल से. सारे के सारे लोग कम ऑन, जल्दी आइए, सभी लोग आओ, कम ऑन. देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं दिख रहे होंगे स्टेज पे, बट वो रॉक स्टार है. एक्चुअल में वो यही लोग हैं. आप देख लो यहाँ पे ध्यान से. देवेश अब एक बार मैं चाहूंगा कि सब लोग दिल से अपने दिल से तालियां बजाओ, जोर से, बहुत जोर से. Oh man, you need some headphones, bro. अब एक सेल्फी लेते हैं, आ जाओ. सभी लोग एक लाइन से आ जाओ. थैंक यू सो मच एवरीवन. सारे स्पॉन्सर, सारे ऑर्गेनाइजर, सारे वॉलेंटियर, सारे स्पीकर, स्पेशली क्योंकि वो सारे लोग बहुत दूर दूर सिटी से ट्रैवल करके आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि वो आपको नॉलेज दे सके. ठीक है, एक एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग चिल्लाएंगे यहाँ से डेव फेस्ट. आप लोगों को चिल्लाना है इंदौर, ठीक है? और ये कंपटीशन है, ठीक है? हम लोग चिल्ला रहे हैं ज्यादा तेज कि आप लोग चिल्लाएंगे. हमारे पास माइक भी है. तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? डेव फेस्ट, डेव फेस्ट, डेव फेस्ट, डेव फेस्ट, इंदौर, इंदौर. हमने पार्टी चेंज कर दी. थैंक यू सो मच, थैंक यू. सभी लोग फीडबैक फॉर्म को आप देख लो. और अभी बाहर मत जाइए कोई. जस्ट 2 मिनट. ओके, देयर आर 4 GDs, so they want to make video of you all. So I want to take a one selfie with the crowd. सभी लोग आगे आ जाएं, सभी लोग. तो वो वीडियो बनाएंगे ना यहाँ पे आके आगे, है ना? हम भी आ रहे हैं. सब कोई आगे शिफ्ट हो जाओ.
अरे मैं गिर रहा हूँ. Come on. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Hip hip. अब क्या करना है? क्या बोलना है? अब क्या करना है? GDs को क्या करना है? सुनो सुनो सुनो, जाओ मत जाओ मत जाओ मत, 1 मिनट रुक जाओ. 2 दिन रुक गए, 30 सेकंड तो रुक ही सकते हो. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. देखो डेफेस्ट इंदौर फ्लटर के लिए बहुत स्पेशल था. 4 फ्लटर टॉक थे 2 दिन में, राइट. तो अब क्या है कि अब अगर यहाँ से बिना वीडियो बनाए चले गए तो बाहर जाके लोगों को दिखाएंगे क्या? तो दिखाना होगा ना कि फ्लटर इतना बड़ा इवेंट हुआ था फ्लटर के लिए. सब लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, सब लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ. नहीं स्टेज पे बताओ, आगे आ जाओ, सामने आ जाओ. ठीक है, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, जल्दी जितना सामने आ सकते हो आ जाओ फटाफट. चारों बना लेते हैं वीडियो. आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ. आगे, अरे निकल जाना, आगे आ जाओ. चलो ठीक है, वीडियो बनानी है, ठीक है. और जब 3, 2, 1 बोलेंगे तो सबको क्या चिल्लाना है? फ्लटर. ठीक है, क्या चिल्लाना है? क्या चिल्लाना है? बस अब 3, 2, 1 बोलेगा, वेट कर लेना. ये लो पकड़ो, वीडियो बना लो. आ जाओ आ जाओ. रेडी रेडी 3, 2, 1. अच्छा था यार, एक ही हम लोग तो आए नहीं यहाँ पे. थैंक यू सो मच. एक बार फिर से 3, 2, 1. थैंक यू, थैंक यू.